Believe. It's in your DNA. This is our legacy to you. Come on, you Blues. Come on, Jeffs. Is it time, guys? Is it time? भाई हो सकता है just we get back that glory this year और ये start हो रहा है FA Cup. हम सब जानते हैं FA Cup for people, especially the ultras will know that FA Cup and Chelsea have a very और तीन चार very डाल दो very special एक relation है between FA Cup and Chelsea. For people who do not know, भाई all those years ago जब हम people used to say when we were shit, when we were shit in the mid 90s to the early 90s, and then the trophy which actually got us back in the big जो बोलते हैं ना big league जो बोलते हैं ना, that was actually FA Cup for people who do not know. लेकिन भाई जनता जनार्दन, how are you all? Ghanta gang, what's up almighty fam? Let's smash those likes for sure. It's the first blue watch along of this new year and hopefully you guys back us no matter what. लेकिन हम और भी जल्दी आए आज because there are a lot of transfer news, not just Chelsea, वो तब डिस्कस करेंगे ही, but end to end we have to discuss not just EPL clubs but generally a lot of clubs. So hopefully we'll have everyone in. How is your weekend going? I hope मेरा weekend बिगाड़े नहीं Chelsea, because let's be real, as much as it's Preston North End, it's still FA Cup, or romantics of the FA Cup will remember that we have had one of those results. मुझे लगता है we have beaten most of the championship sides in recent past, लेकिन एक मुझे याद आता है 2015 वाला सीजन में शायद, if I'm not wrong, 2015 में था क्या? हाँ 2014-15 में, if I remember right, under Jose Mourinho we had lost to Bradford City. That was some result. लेकिन hopefully it will be a good match, लेकिन in favor of Chelsea. But we have to discuss a lot of transfers, so let's get in everyone by hitting those or rather smashing those like buttons, as well as basically hitting bell. अभी तक नहीं आपने दबाया तो Subhan in the house, what's up, क्या हाल है? Lord Puni Superstar in the house as well. Agrem, क्या हाल है? Forza Barca, what's up? A lot of news floating around from Barca as well. कहीं ना कहीं वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन of course all the EPL clubs transfer news. The problem with FA Cup is that in this competition Pep भी full mood में आ जाता है जीतने का. By to be very honest, all due respect to Man City, लेकिन let's be real, मतलब FA Cup के actual, मतलब if I'm being very honest, FA Cup का चेल्सी और आर्सेनल का एक स्पेशल रिलेशन है, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द क्लब्स, स्पेशली द मैनचेस्टर क्लब्स, लेकिन चेल्सी और आर्सेनल हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप विद FA Cup, एंड फॉर रीजन फॉर समवन हु वाज काइंड ऑफ वॉच्ड व्हेन वी वर शिट, एंड नाउ आई एम टेलिंग इट फॉर अ फैक्ट मेरे भाइयों. लेकिन भाई प्रमोदनी इन द हाउस एज वेल. भाई ब्रेकिंग न्यूज क्या है हम डिस्कस करेंगे लाइनअप इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स जब आउट हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली गाइज मेरा तो पता नहीं, मतलब कहीं ना पैरों तले जमीन खिसक गई वाला मोमेंट था क्या फॉर चेल्सी फैंस स्पेशली. और आप लोग बोलोगे कम ऑन टीमो वर्नर, भाई कहीं ना कहीं आप बोलोगे इन द एंड ही वाज अ चेल्सी रिजेक्ट एज मच एज ही डिड ग्रेट फॉर चेल्सी इन टर्म्स ऑफ विनिंग द चैंपियंस लीग. टॉक अबाउट FA Cup, भाई टीमो वर्नर इन कप कॉम्पिटिशन जनरली वाज अ स्टैंड आउट. मुझे याद है इवन व्हेन वी साइन टीमो वर्नर लैम्पार्ड का फर्स्ट स्टिंट के अंडर, एंड वहां पर आई रिमेंबर स्पर्स के साथ आयरॉनिकली मैच था. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल रिमेंबर. टीमो वर्नर बेसिकली 1-1 था और आई थिंक टीमो वर्नर ने स्कोर किया था अपने फर्स्ट लीग कप अपीयरेंस में अगेंस्ट स्पर्स इन एन अर्ली राउंड इन लैम्पार्ड फर्स्ट स्टिंट एरा, और आयरॉनिकली वही स्पर्स पे जा रहा है. ऑल स्पर्स डिड एलिमिनेट अस ऑन दैट नाइट, आई रिमेंबर दैट. बट guys, matlab, how do you feel about Timo Werner going to Spurs? Firstly, does he fit Spurs? Matlab, obviously someone who plays like a striker, leftish striker, thoda sa widest striker hai. He does not play as a center forward per se, or he gets in behind Postecoglou जो करता है एंज बॉल, कहीं ना कहीं दैट फॉरवर्ड को एक लाइसेंस है टू काइंड ऑफ रोम अराउंड, बिकॉज आपके विंगर्स, विंग बैक्स और अदर फुल बैक्स और मिडफील्डर्स भी काइंड ऑफ बॉम ऑन करते हैं, तो एक एक्स्ट्रा लाइसेंस मिलता है. और रिमेंबर हैरी केन जाने के बाद स्पर्स ने नहीं साइन किया एक प्रॉपर बिग नेम स्ट्राइकर. I know it's just on loan, it's just a 6-month loan as things stand Spurs का, और कहीं ना कहीं वो ईयरवी को होने वाला है any moment, I believe so. It is very positive. Doesn't feel good as a Chelsea fan, I'll be very honest, it doesn't feel great. मैं झूठ नहीं बोलूंगा. Obviously we've had, भाई can anyone tell who are the people who played for Chelsea and Spurs? Anyone in the chat, भाई कितने लोग नाम दे सकते हो आप लोग, बोलिए. Again, एक कुछ खट्टा सा in the mouth it ends up with whenever a Chelsea player ends up at Spurs. Arsenal फिर भी there have been a lot of players, but Chelsea में कहीं ना कहीं एक, हाँ खाली कार्लो कुडिचिनी का नहीं बोलूंगा, वहां पर it didn't go very salty. It's okay, मतलब कार्लो कुडिचिनी he was a great goalkeeper for people who do not know early 2000s and mid 2000s में, but
he was not getting game time जब Petr Cech sign किया गया था, then that's why we moved him on and Spurs came और लंदन क्लब है तो काइंड ऑफ ही वेंट देयर. लेकिन अपार्ट फ्रॉम कार्लो कुडचिनी आई थिंक मुझे याद है विलियम गालस यार, दैट वाजंट अ हैप्पी वाला मोमेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट. और चेल्सी फैंस कहीं ना कहीं बैड टेस्ट इन द माउथ होता है, बट इट्स ऑन लोन तो मतलब वी हैव टू क्वेश्चन दैट ईदर वेज. मतलब विल ही बी अ सक्सेस और मतलब विल ही लीव चेल्सी फैंस इन बैड टेस्ट इन द माउथ, क्योंकि सपोजिटली ही फॉट फॉर द क्लब बिग टाइम. चेल्सी के लिए हमेशा वो गिव इज 100%. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम मैन? मतलब आई एम लिटिल बिट, झूठ नहीं बोलूंगा, अगेन आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट दिस, क्योंकि अगर निकोलस जैक्सन भी जा रहा है, स्पर्स को क्यों चाहिए वो बात करेंगे एक सेकंड में, लेकिन निकोलस जैक्सन भी जा रहा है एफकॉन के लिए एंड एज इट इज वी स्ट्रगल टू स्कोर गोल्स. नॉट दैट इज अ ग्रेट गोल स्कोरर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, टीम विनर, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पोस्टेकोग्लू खिला सकता है तो भाई पॉच बॉल में भी ये फिट हो सकता था. जस्ट सेइंग, for 6 months, why not? Deepdas in the house, क्या हाल है भाई? Yes, Chelsea and Arsenal used to own this competition. Absolutely, bro. I must admit that Arsenal and Chelsea दोनों. अंकित भाई प्लीज बारसा के रूमर्स के ऊपर विश्वास मत करो, ये सारे स्पेनिश जर्नलिस्ट हमारे काट रहे हैं. नहीं, फेयर इनफ, लेकिन कहीं ना कहीं बारसा को अगर मौका मिले तो एक जन अभी साइन करना चाहेंगे, उसके लिए देयर इज सम मनी नीड एंड वहां पर दैट इज व्हाई द स्टोरीज आर कमिंग. देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर प्रमोदनी, लेकिन मैं ईयर करता हूं एब्सोल्युटली. अगेन हम डिस्कस करेंगे, वी वोंट कम टू कंक्लूजंस येट. Warner will be on the bench. Richa, once Sonny is back, I think Timo will light up the Spurs attack even more. He's gonna be great under Ange's play style. Okay, Warner will bench Richarlison. Okay, that's what you mean, Pranav. Balab, Warner will bench Richarlison. Not too sure about that, to be very honest. As much as Richarlison ka पिछला calendar year wasn't great, he has ended the year on a good run and as well as started the year not too bad. तो I will be surprised if Richarlison is benched, especially being a full-time striker at Spurs. तो मुझे लगता है Richarlison will definitely play, but for people who do not know, by AFC Asian Cup is also there and that is where Son will be going. पर प्लस उनके सोलोमन और पेरिसिच के बारे में एंज ने बोला है, कल उनका ऑलरेडी मैच हो गया और दे हैव बीटन बर्नली 1-0 माइंड यू, लेकिन हाँ पेरिसिच के बारे में बोला है दैट ही मे नॉट प्ले फॉर स्पर्स अगेन. दैट्स अ रियलिटी गाइस. तो ही हैज अ लॉन्ग टर्म इंजरी, तो कहीं ना कहीं लेफ्ट साइडेड फॉरवर्ड्स उनके पास इतने सारे अवेलेबल नहीं है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. लेकिन मैं अग्री करता हूं दैट इन मंथ ऑफ जनवरी ही माइट गेट अ लॉट ऑफ गेम टाइम, दैट इज वर्नर. लेकिन कितने गेम्स है भाई जनवरी में, ये बोलिए सब लोग. आई डोंट थिंक देयर आर मेनी गेम्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट. वो जो बिजी पीरियड था एकदम हो गया है, टू बी ऑनेस्ट इस वीक तक ही था, और आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू प्ले यस्टरडेज मैच जो खत्म हो गया स्पर्स के लिए. दैट्स नॉट पॉसिबल. सो प्रीटी श्योर यहां पर आई एम सीइंग हिम बीइंग ऑन द बेंच वंस say February comes in, because I think mid Feb तक I think even Son should be back if I'm not wrong. ये चेल्सी स्पर्स में कुछ लिंक तो है, हर दूसरा चेल्सी बंदा स्पर्स जाता है और वाइस वर्सा. नॉट रियली प्रमोदनी, नॉट रियली. आई डोंट नो व्हाट यू आर रेफरिंग टू, बट हाँ रूमर्स काफी आते हैं. मॉड्रिच का जो हुआ था सागा, फॉर पीपल डू नॉट नो, चेल्सी डायरेक्टली डू नॉट वांट टू डू बिजनेस विद स्पर्स. दैट इज व्हाट रोमन एरा में 20 सालों तक था, फॉर योर इंफॉर्मेशन. मतलब फॉर लास्ट 10-12 years एटलीस्ट 100% हमारा एक फंडा था कि भाई मॉड्रिच का जब वो move did not happen, we decided not to do business with Spurs under Roman era. वो it's a fact. But anyway, want to see Werner in Chelsea again. चंदू बोल रहे, या तो टीमो वर्नर का रिचार्लिसन के साथ खिला सकते हैं with an asshole striker like Richarlison. He will fit properly. He fits Spurs, unfortunately. That's true, but अगर वो स्पर्स को फिट करता है तो व्हाई नॉट चेल्सी? दैट्स माय होल क्वेश्चन. मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड की बातें चल रही थी. मैनचेस्टर फैंस आपके ट्रांसफर न्यूज में भी आएंगे, लेकिन आप लोग भी बोलिए दैट इज इट अ मिस फॉर यू ऑल? मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड में आई डोंट थिंक इट्स अ ह्यूज मिस, क्योंकि कहीं ना कहीं रैशफोर्ड इज कमिंग बैक टू फॉर्म एंड गर्नाचो इज ऑलरेडी देयर. आपको एक सेंट्रल फॉरवर्ड चाहिए टू कम्पीट विद और अदर give competition to Martial, लेकिन Martial को extend किया जा रहा है. I don't know why. Play in place of Solomon, considering he'll be back in March or April. Absolutely. भाई Gilchrist starting looks like it. चलो भाई देख लेते हैं. मैं एक सेकंड दीजिए मुझे. अगेन जो भी लोग आए, big up to everyone. 18 in the house. What's up? Richarlison and Werner both can play wing, absolutely, and so can Brennan Johnson. तीनों ही kind of similar players है, striker slash winger kind of players है. Son as well, to be honest. जैन में गिन के 1-2 गेम्स है बिल्कुल. इन द प्रीमियर लीग there are not many games in January. That's what my point is. Again, Manchester United fan with Devesh in the house. What's up, Devesh? Nice to see you as always. Timo is bench player in Red Bull Leipzig. Yeah, that's the reason why he's wanting to move. लेकिन वही है, चेल्सी में आ सकता था. My recommendation considering इनको भी injury prone है. But ठीक है भाई, एक सेकंड दीजिए मुझे. I'm just looking at the
lineup again, guys. Remember, I'm not going to ask much, but let's have the likes in. Target for the stream एक बार मैं कर देता हूँ screen पर, so that you guys are aware. This is the target, guys. Again, याद रखिए, always a fan channel for all to see. We are discussing all transfers. इसीलिए 1 घंटा पहले एकदम टाइम से आए आज. We'll be discussing each and every transfer story, क्योंकि 2 दिन हो गए और 48 hours में बहुत चीज होता है in the transfer window, and that is what we are here for sure. So guys, Petrovic, Gilchrist, Disasi, Colville, Gusto. So looks like it, in my personal opinion, Gusto might play left back and Gilchrist might play right back, as much as Colville might play left back or Gilchrist might play centre back. भी option है. लेकिन knowing Poch or playing people out of position is the मतलब surety of with Poch. लेकिन Caicedo, Enzo's chart, Gallagher अपना कचरा शुरू नहीं करता भाई. लेकिन स्टर्लिंग, पामर, मुड्रिक विद ब्रोजा. नाइस टू सी एंजो स्टार्टिंग भाई. इट्स बीन अ व्हाइल दैट एंजो हैज नॉट स्टार्टेड. अगेन मैं स्क्रीन पर डालने वाला हूं गाइस, गिव मी अ सेकंड. लेकिन व्हाइल वी पुट इट अप, आप लोग भी अपना बोलिएगा व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, एंड विल कम बैक टू द ट्रांसफर न्यूज ऑफ एवरी क्लब. यहां पर एक सेकंड दीजिए. आई एम जस्ट ट्राइंग टू, बिफोर आई हाईलाइट कमेंट्स और आई एम कमिंग टू द ट्रांसफर न्यूज एंड रिएक्टिंग इन टर्म्स ऑफ द टैक्टिक्स. मैं एक सेकंड में स्क्रीन पर बेटर वे में डाल देता हूं, तो आई जस्ट गेट रेडी फॉर इट. 1 सेकंड गाइस. अगेन भाई, जो भी लोग यहाँ पर है who not like the stream as well as the community post, do consider doing that. Not going to ask much, लेकिन हाँ, community में भी share किया है मैंने. Everyone, it helps the algorithm, simple as that. Again, happy new year to people who have not come on Almighty Sports this new year. But यहाँ पर भी शायद हमने ट्रांसफर शीट तो किया था, but ठीक है. Anyway, कैप्टन कौन है भाई आज का? Guys, who's the captain? That's the big question for me. Captain, considering that there is no Thiago Silva also, एंजो रहेगा भाई कैप्टन. आई फील नहीं, कॉलविल के एंजो. who's going to be captain? That's going to be interesting. Yeah, Sterling. Wow. आज interesting will be the captain, man, for me. Let's see. एक second, मैं I'm just trying to get ready to make sure that एक better format में आपको स्क्रीन में दिखे 11, so that you know I can basically see you guys. एक second दीजिए मुझे. तो भाई एक second. Again, मैं कमेंट्स पा रहा हूँ. चलो कमेंट्स में आते पहले. एंकुंकू स्टार्टिंग नहीं, एंकुंकू पता ही था यार मेरे भाई. लाइक आई हैड पुट इन द कम्युनिटी पोस्ट एज वेल कि एंकुंकू वाज स्लाइटली इंजर्ड, तो ही वाज सपोज्ड टू बी इन द बेंच, एंड दैट इज व्हाट इट इज आई बिलीव. लेकिन कोई नहीं, मतलब वी आर हैविंग पीपल आज, तो ऐसे नहीं कि देयर आर लेस पीपल टू स्कोर. इट्स ब्रोजा के लिए अपॉर्चुनिटी है, इज व्हाट ही हैज टू थिंक अबाउट इट. लेकिन अगेन हैप्पी अबाउट एल्फी गिलक्रिस्ट गेटिंग हिज फर्स्ट स्टार्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फॉर चेल्सी in a competitive fixture. Let me know if I'm wrong there. लेकिन हाँ, एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड. ये क्या हो गया? I'm just trying to put the lineup in a better format. हाँ चलो, I'm kind of ready now almost, so that you guys are not going to. चलो ठीक है. अगेन बेंच पर है गाइज. पता नहीं क्यों गोलकीपर्स को हमेशा बेंच पर रखता है. पॉच, ही ऑलवेज पुट्स दैट, एंड ही वाज आस्क्ड दैट क्वेश्चन एंड ही डिडंट हैव अ प्रॉपर आंसर कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में. बट थियागो सिल्वा है बेंच पर इफ नीड बी. मार्टसन इज देयर ऑन द बेंच. अगेन ही इज गोइंग टू डॉर्टमंड, लुक्स लाइक इट. नहीं तो 100% शुरू करता है मैच. ही शुड हैव स्टार्टेड, ही डिजर्व टू स्टार्ट मोर इन माय ओपिनियन, बट एनीवेज इट इज व्हाट इट इज. गैलेगर है बेंच पर अपना कचरा. मडुवेके और वॉशिंगटन इन ऑन द बेंच. भाई इंकुंकू इज नॉट ऑन द बेंच. दैट्स इंटरेस्टिंग. अगर चेल्सी का फॉरवर्ड नॉट एबल टू स्कोर टुनाइट, देयर विल बी सम कंसर्न गाइस, देयर विल बी सम कंसर्न पॉसिबली. लेकिन क्या बोलती जनता यहाँ पर? एक सेकंड देखते. इन माय ओपिनियन चेल्सी डोंट नीड प्लेयर्स, दे नीड कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन. इंटरेस्टिंग दैट. सूरज, बिग अप गाइस, बिग अप सूरज. हो जाए इन द चैट एवरीवन. मेंबर फॉर 5 months अपने भाई. अगेन कमिंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड ट्रांसफर न्यूज इज वेल. लेकिन एंथनी मार्शल के पास ग्लेजर्स की प्राइवेट वीडियो है. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग. सैंटोस को हाफ सीजन लोन पे दे दो, आप तो खिला दें. अरे भाई प्रमोदनी, मैं आपको दिखाने वाला हूँ. सी देखिए, आज भी एंकुंकू नहीं खेल रहा. आई नो एंकुंकू द स्ट्राइकर वर्सेस सैंटोस अ मिडफील्डर, ठीक है, आई गेट दैट. लेकिन द फैक्ट इज इतने सारे लोग नहीं खेल रहे भाई. उगो चुक्कू है, कार्नी चुकुमेका है, आपके मतलब अ लॉट ऑफ पीपल आर इंजर्ड ब्रो, अपार्ट फ्रॉम मतलब द ऑब्वियस वंस, ठीक है, अपने चिलवेल ऑफ द लाइक्स एंड कुकरे ऑफ द लाइक्स. तो काफी लोग आउट है भाई. अगेन मैं आपको दिखा सकता हूँ, the number of people are out are at least close to 11. लेकिन हाँ, this is the bench guys for people who are wondering. On the screen एंकुंकू फिर से इंजर्ड हो गया यार, बिल्कुल. लेकिन precaution is what Poch said. लेकिन surprise that he's not also on the bench. कहीं ना कहीं couple of youngsters on the bench, but at the same time let's see if David Washington gets some time. I think कहीं ना कहीं मुझे लगता है that David Atro Fofana going to Sevilla is an indication कि कहीं ना कहीं David Washington को हम देखते हैं, he's not ready to go out on loan, or
Poch wants him to be around the first team and train with the first team and get that odd minute out there. लेकिन मुझे लगता है that we should be, if possible, just hijack the Timo Werner transfer. होने नहीं वाला, और just keep David Datro Fofana in Chelsea, क्योंकि मुझे लगता है that एक सवा महीना हो सकता है by the time Nicholas Jackson is back into the 11 of Chelsea, because Senegal is a very good team. Remember, वो लोग कहीं ना कहीं they are defending the crown in the AFCON, तो you never know there. अगर लंबा चलता है तो भाई, और अगर Nkunku का injuries worse than what we anticipate, then maybe we need a striker. David Washington is ready, आज पता लगेगा लगता है. Do you think Werner considering Spurs instead of United because of buy option clause? Not sure about that. I think it's a simple case of him getting more starts at Spurs and he knows London. Although being someone जो Chelsea के साथ Champions League जीता है, and of course supposedly he fought for the badge. मैं थोड़ा surprised हूँ that he opted for Spurs, if I'm being very honest there. लेकिन even Willian, people like him have selected, so why not? Matters कब तक Willian, by the way, Arsenal की बात कर रहा हूँ, not Spurs. Gilchrist is a defender, a very young defender at Chelsea, who's captain Chelsea के academy at almost every level. और he has come on as sub recent matches में. आप लोग अगर watch along देखो तो we did cover that a couple of times. लेकिन हाँ, he has looked impressive. Someone who plays for the badge, और cup game है तो कहीं ना कहीं एक academy prospect को Stamford Bridge में chance देना था. तो today it is Gilchrist, but even Broja, remember भाई, it's starting 11 में there are people like Gilchrist, Colwill, and Broja, who are like proper academy guys. Yeah, they're proper Chelsea academy guys. And on the bench there is of course Gallagher out there, absolutely. तो भूलिएगा मत. I think Williams है on the bench. There is Beckstrom on the bench. Golding है on the bench. There are a lot of youngsters here on the pitch. आज proper academy prospect. Again, remember, Preston is right now 14th in the championship, so we should be beating them no matter what. लेकिन FA Cup अगर draw जाता है, it will go to a replay. Although coaches बोल रहे हैं कि replay नहीं होना चाहिए. Love to see Alfie Gilchrist. Adam Gilchrist नहीं मेरे भाई. Damn, I wish Midway was playing right wing is telling us false 9. But again, to be very honest, I am happy about this. सच में बोलूं तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है that Armando Broja का एक मतलब कहीं ना कहीं टेस्ट है, लिटमस टेस्ट जो बोलते हैं ना, अर्मांडो ब्रोजा के लिए एक लिटमस टेस्ट वाला गेम है जहां he has to prove it here. And if in case say these two cup games, next game है by the way, याद रखें ट्यूसडे नाइट को फर्स्ट सेमीफाइनल है अपना अवे टू मिडलसब्रो इन द कैराबाओ कप, ठीक है, इन अ 2 लेग सेमीफाइनल. तो वहां पर also looks like it Broja may get the start, क्योंकि Nkunku remember आज बेंच पर भी नहीं है, तो वहां पर शायद Nkunku बेंच पर हो. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है these two games are essential Broja के लिए. अगर Broja कन्विंस नहीं करता एकदम भी in say by mid Jan, then just maybe we might go for a striker जो बहुत लिंक हो रहे हैं. Let's see what happens. Golden Boy will be captain, but a lot of superstar. Shania बोल रहे हैं, if Chelsea somehow able to purchase Florian Wirtz, I want to see a double cam pair with Nkunku alongside double pivot of Enzo and Caicedo. I don't think that will be possible though. मतलब basically आप बोल रहे हो almost a 4-2-2-2 is what you are suggesting. Do I see Poch play like that? नहीं, क्योंकि Poch does not believe in squares, he believes in more triangles. और at the same time Poch believes in pressing और अपना switch off play, उसके लिए triangle formation is what I assume. So I'll be really surprised अगर वो खेलेगा. Again, has he played that in pre-season even? No, he's not played that way. शनाया, तो मुझे नहीं लगता वो आने वाला है, क्योंकि let's be clear about it, कार्नी चुकुमेका भी आने वाला है अभी back. He's still not 100% fit. Him, Badiashil or Romeo Lavia as well as Ugo Chukwu might come after a couple of weeks. लेकिन अभी भी यार and Chilwell as well. So let's see. अभी भी there is time. तो but having said that, meanwhile there is Cole Palmer. तो I don't think यहाँ पर जरूरत है for a number 10 if I'm being very honest. हमें चाहिए एक experienced player who could just put the ball in the back of the net. Again, a lot of news floating आज कि यार what about I don't know, Roberto Firmino, bhai, Bobby Firmino. Liverpool fans in the house, what do you think? What do you all think? सुनने में आ रहा है that there is a possibility that Bobby Firmino might be open to a Premier League move on a loan. याद रखिए वो एक पास किया था Premier League managers and coaches ने that you can get people on loan. So Newcastle can get up to 3 to 4 players on loan. लेकिन even other clubs can get them on loan. So where will Bobby Firmino fit? मतलब a lot of Chelsea fan base यहाँ पर बोल रही है Bobby Firmino अगर by chance Chelsea जाती है on loan, I don't think it's an answer to goals, क्योंकि Bobby Firmino brilliant in terms of link up play, in terms of ball retention or doing the dirty work. लेकिन is he a goals वाला बंदा? मतलब
लेकिन फिर भी is far better finisher than Jackson. Let's be real about it. Even now, Bayern are dreaming an impossible dream. Araujo will never join them, and all these baseless rumors spread by the German media is now getting embarrassing. अच्छा, यहाँ पर coming back to the transfer news, and we are coming back to the tactics and FA Cup guys, लेकिन and Chelsea news as well. लेकिन यहाँ पर क्यों अपने भाई फोर्सा बारसा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कमेंट दे रहे हैं, और पता नहीं, अब अगेन इट्स अ स्पेकुलेशन बोल दो, लेकिन द फैक्ट इज अगर कोई अगर कोई बार्सिलोना को देता है 70 ऑड मिलियन यूरोस, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, अब ये पेपर टॉक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि होने वाला है, लेकिन पेपर टॉक है और कपल ऑफ लिंक्स आर देयर एब्सोल्युटली। तो एक अराहो टू बायन, एक एरिक डायर टू बायन तो होने वाला है, क्योंकि चालोबा टू बायन इज नॉट हैपनिंग फॉर व्हाटएवर रीजन, आई डोंट नो व्हाई। Tuchel, who knows Chalobah, is rather going for Eric Dyer, a Tottenham player, और Tottenham पर जा रहा है एक्स-चेल्सी मैन टीमो वर्नर। कलयुग आ गया भाई, घोर कलयुग, लेकिन क्या करे, एरिक डायर काइंड ऑफ इज अ बेटर मिडफील्डर बैकअप compared to Chalobah, and he's a more experienced center back, so I can get that, और worst case can play right back as well, तो I get that। लेकिन अगर बायर्न म्यूनिख जा रही है राहो के लिए भी, रिमेंबर किम मिन-जाए इज नॉट देयर फॉर जनवरी, एंड माजराओ इज नॉट देयर फॉर जनवरी, और रिसेंटली दे हैव लॉस्ट अ ब्लिंड एज वेल, ठीक है, तो यहाँ पर देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर पॉसिबली मिसिंग, और डिलिक्ट का भी इंजरी रिटर्न नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, ठीक है, तो वहां पर देयर इज अ स्टोरी अबाउट राहो टू बाइंग येट अगेन, ऑल्दो पेपर टॉक है 70 ऑड मिलियन यूरोस, लेकिन सुनिएगा, इट इज अबाउट द अदर साइड, वो 70 मिलियन यूरोस मिलकर what Barca can do is they can invest that money, 20 million euros in Rafael Varane, who might be available from Manchester United, remember जो बायर्न के साथ भी लिंक हुआ था, तो Rafael Varane to Barcelona, I know he's an ex Real Madrid player, आप सोचोगे भी नहीं he's a youngster from Real Madrid, वो नहीं होने वाला absolutely, लेकिन भाई worst things have happened in football, तो Rafael Varane 20 million euros to Barcelona, ठीक है, अगर आप देखते हो कुंडे एंड क्रिस्टियनसन बीइंग स्टार्टिंग सेंटर बैक पेयरिंग, और Rafael Varane can be a good backup, just saying, with Inigo Martinez, then there is a possibility to buy a midfielder as well. Tempting तो है, I know Araujo is a proper Barca guy, और Varane was a proper Real Madrid guy, लेकिन फिर भी tempting तो है, if I'm being very honest as a neutral, लेकिन realistic है, no, probably not. I agree with फुर्सा बारसा कहीं ना कहीं। भाई डिबाला के लिए भी बहुत बड़े बड़े न्यूज आ रहे हैं भाई, यहाँ पर चेल्सी पता नहीं क्यों जाने दे रहे पीपल लाइक टीमो वर्नर टू स्पर्स, एंड डिबाला का 12 मिलियन रिलीज क्लॉज है भाई, लेकिन 15 जनवरी से पहले ट्रिगर करना है। 12 मिलियन रिलीज क्लॉज फॉर एन इंजरी प्रोन डिबाला इज डेफिनेटली वर्थ इट, डेफिनेटली भाई, any club which plays with a second striker needs to consider Dybala in my opinion. लेकिन he can play on the right hand side, but is he ideal right winger? No. So Manchester United तो मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ऐसी Bruno Fernandes playing in behind the striker, if I'm very honest. नोसिंग इन द हाउस, क्या हाल है, व्हाट्सअप, ये लंदन क्लब्स की राइवलरी मेरी समझ से बाहर है, सब प्लेयर एक्सचेंज करते रहते हैं भाई, टू बी ऑनेस्ट इतना सारा नहीं होता था, इट्स जस्ट अ मॉडर्न डे थिंग्स हैव चेंज्ड, दैट्स द रियलिटी, कलयुग आ गया भाई, क्या करे। स्टर्लिंग एज कैप्टन कंसीडरिंग एन एक्सपीरियंस बोल रहे हैं यहाँ पर लॉर्ड पुनी सुपरस्टार, टॉकिंग अबाउट लॉर्ड्स, अपने गोट उत्कर्ष इन द हाउस, क्या हाल है। Jamie Vardy, a good experienced striker for Chelsea. I'm not sure about right now. Maybe a couple of years back, जब link हुआ था काफी with Arsenal and Chelsea, that time मुझे लगा था that would have been a nice move for him as well as the club, but not right now. Again, do Chelsea play that style? Probably not. इसलिए शायद वर्नर के लिए हमने नहीं गया, because कहीं ना कहीं वर्नर plays well जब एक opposition is not on a low block, जब opposition is on a say a high line, तब Werner is the best, to be honest. If Broja flops today and further, should we loan him off? I would say loan. I would say one last loan before we kind of sell him. But in the end, I don't see him being a Chelsea man, if I'm being really honest. I wish I'm wrong. ये बोलना चाहूंगा Chelsea fans. लेवेंडोव्स्की से ज्यादा एक्सपीरियंस स्ट्राइकर नहीं है यूरोप में, साइन इन परमानेंट 50 मिलियन। अरे भाई 2021 याद रखिए, चैंपियंस लीग फाइनल की बात हो रही है यहाँ पर, जब चेल्सी जीती थी, एंड उसके बाद में मुझे याद है आई स्टार्टेड स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग उसके बाद में जस्ट, एंड आई रिमेंबर हैविंग दिस कन्वर्सेशन इन दैट समर कि लेवेंडोव्स्की मैं लेता उस समय, क्योंकि उस समय वाज द राइट टाइम फॉर चेल्सी टू गेट हिम, नॉट राइट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। I really don't want to sell Araujo leave, but we won't reject an offer of over 100 million, तो नहीं मिलेगा यार। I think around 70-75 million की बात हो रही है, 75 million euros. Imagine 20-25 million euros में आप राफेल वारान को लेते हो, I know ex Real Madrid guy, but just saying, plus a midfielder जो आप बहुत दिनों से चाहते हो, आप लोग पता ही है।
Sign Wadi for United or even Chelsea? No, I don't think so right now. I hope Chalobah gets sold to an English club, as that will generate a higher fee. Fair point. Absolutely, I agree with that. अगर करना ही है तो करिए, नहीं तो use करिए. मतलब why are we going for a centre back, Chetan? That's the whole point. Why don't we use Chalobah? I know that things were almost through Bayern in the summer, और वो it fell through. लेकिन come on, भाई Chalobah still is a blue boy यार. Who would Barca replace Araujo with? मतलब जैसे मैंने बोला, it's a very left field option, लेकिन paper talk है. That's what I'm saying. Why will Varane come to Barca? He's the next Real Madrid player. Absolute zero chance, and he can't stay fit for more than 2 games. Fair point. इसलिए मैंने भी नकार दिया वो. लेकिन paper talk है, so I just mentioned that. Timo deal done as per Ornstein. अरे भाई. Varane will be available on a free. These are his last 6 months of contract. Okay, I think it's he should be available even for basically peanuts यार. मतलब कहीं ना कहीं सर जॉर्जिनो गया था from Chelsea to Arsenal, वो वाला सीन है जो बोल रहे हैं नवजोत. Thanks for confirming that. If there was a chance to get Benzema on loan, then just go for it. Chelsea must go on after Diego Costa. Chelsea desperately need a long-term striker, but Benzema can fix it short-term. लेकिन Benzema के stories नहीं आ रहे. I don't think he's moving is what the news is. क्योंकि Newcastle could have taken him otherwise. Give Conor Gallagher to Barca. Send. Arre bhai, come on. No way Barca selling around mid-season. Varane and Barcelona in the same sentence. That's yeah, absolutely. He's not leaving. You already told. Fair enough. Chalo. It was mentioned by a couple of so-called tier 2. तो मैं सोचा कि डिस्कस करते जस्ट फॉर सेक ऑफ इट. आई नो, आई एग्री विद यू. डिलिक्ट टू चेल्सी भाई, ये वाला समर में हो जाता तो अच्छा होता ना. लास्ट समर, आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर. रिमेंबर टूकल वाज अ फैन ऑफ डिलिक्ट इवन देन. मतलब डिलिक्ट बाय द वे आर्सेनल आर स्टिल इंटरेस्टेड, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मूव होने वाला है. रिमेंबर ही इज आल्सो हैड अ लॉन्ग टर्म इंजरी, सो आई डोंट सी हिम कमिंग बैक टू प्रीमियर लीग एंड काइंड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. लेकिन मुझे ये भी लगता है दैट कहीं ना कहीं इन द लॉन्ग रन आई सी हिम मूविंग. अगर टूकल रहता है इन द समर, I think by summer he might move. That's for sure. फीफा में साइन करा रहा हूँ को बोल रहे. चलो भाई थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हैं टू अदर क्लब्स एज वेल एज कमिंग बैक टू दिस. वर्नर का हो गया भाई. हियर वी गो. क्या ही तो बोले यार, क्या ही तो बोले. Seriously, and this is like heartbreaking, man. I'll be honest. Just a lone player, kind of technically a reject at Chelsea, but come on, he's a Champions League winner. I'll be honest. यहाँ पर I know a lot of Chelsea fans बोलते हैं भाई good riddance था Havertz to Arsenal, Mount to Man United, and Werner to अभी बोलेंगे Spurs. I don't think so, man. I disagree, man. I disagree कहीं ना कहीं because I bleed blue. I don't know about you, but of course club more important than the player. But pretty sure यहाँ पर I didn't expect that yeah, he'll go to basically yeah, Tottenham, and that's happened, guys, as Shikhar has confirmed यहाँ पर. Again, guys, जो भी लोग यहाँ पर आए, remember the membership schemes are on, and for people, a couple of members have asked me about the prediction league. Definitely, my word is there. Absolutely, there's a prize for the prediction league winner at the end of the season. Absolutely same for the FPL winner. दोनों contests are on. क्यों मैंने प्रेडिक्शन लीग का नहीं डाला है ओनली फ्रॉम अ वीक एंड हाफ? व्हाई? बिकॉज सब लीग साथ में वापस से शुरू नहीं हुआ आफ्टर द विंटर ब्रेक. सो वंस वी गेट दैट, वी रीस्टार्ट दैट एवरी वीकेंड. बट गाइज, एज एक्सपेक्टेड, दिस इज डन गाइज, दिस इज डन. बहुत लोग बोल रहे हैं बेंजेमा को लाना चाहिए, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स हैपनिंग. दैट्स अ रियलिटी. अभिषेक इन द हाउस, क्या हाल है भाई अभिषेक? व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? सेस्को, बेंजामिन सेस्को, वी हैव बीन स्काउटिंग फॉर गॉड नोज व्हेन. लेकिन समर में आएगा वो भी, अगर मूव करेगा. इट सीम्स लाइक इट, बिकॉज नाउ दैट वर्नर हैज मूव्ड, बेंजामिन सेस्को को भी जाने नहीं देंगे वो लोग. ऑल दिस अराउंड रूमर्स आर कमिंग फ्रॉम जर्मन मीडिया. दे जस्ट वांट टू गेट अंडर आवर स्किन फॉर द किमिक सागा. दैट्स ऑल दे आर डूइंग. इट्स प्रीटी एम्बैरसिंग. Fair point. Havertz is a good signing. I agree with that. I know a lot of Chelsea fans disagree, but I have to agree. I cannot tell lies. But he's not a world beater. Same like Werner. लेकिन there are days जब वो sudden से वो, there are days when they really perform well. I'll not be lying यहाँ पर. अगर हाईलाइन के साथ खेलना है आपको वर्नर के साथ, he's really effective, bro. He's really effective in cup games, especially जहाँ पर teams will go for it. Yep, absolutely. Little bit disappointed with Werner, I'll be very honest. लेकिन can we blame him? No. अगर Chelsea भी आती और try hijack करती तो definitely Werner would have been tempted to come here, considering Nicholas Jackson भी बाहर है for a month or so. But anyway, it is what it is. Morata was not bad for Chelsea. नहीं यार, Morata का भी यही था. There are times when he was absolutely shit. मोराटा वर्नर काइंड ऑफ इन अ सिमिलर ब्रैकेट में डालूंगा. टॉरेस को मैं रेट करता हूं बेटर देन दोस टू, टू बी ऑनेस्ट. स्टिंट टॉरेस का क्यों इतना बड़ा हो गया कि इज अ फ्लॉप? बिकॉज ऑफ द प्राइस टैग ड्यूरिंग दोस टाइम्स. 50 million
10 years ago was huge, ठीक है. लेकिन मोराटा का भी पैसे बहुत थे यार, और वर्नर का भी बहुत थे, और वर्नर एटलीस्ट वन द चैंपियंस लीग. मैं इफ आई हैव टू से दैट वर्नर, मैं डालूंगा टॉरेस को द मोस्ट सक्सेसफुल अमंग द थ्री. मैं डालूंगा टॉरेस को, देन मैं डालूंगा वर्नर को, देन मोराटा को. मोराटा वाज इन माय ओपिनियन क्वाइट डिसअपॉइंटिंग एट टाइम्स यार, डायरेक्टली मैं बोलता हूं. इवन नाउ आई नो गोल्स काफी करता है, बट देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू रियली थिंक दैट इज ही रियली अ टॉप लेवल फुटबॉलर. वो सोचने पर मजबूर हो जाता बंदा with Morata and with Werner. But again, both have those sensational games at times. वो भी है. विटर ओके भाई, क्वाइट एनर्जेटिक लगा, बहुत एनर्जेटिक लगा इनफैक्ट. लेकिन वो ये लास्ट में आई थिंक एक सिटर चांस मिस किया यार. वो थोड़ा सा एक हो जाता ना, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होता फॉर एनी यंगस्टर, स्पेशली इन बार्सिलोना coming on for his first game. It would have been a huge say, लेकिन it's still early days. अभी remember you still have Lewandowski. ऐसा नहीं कि वो जा रहा है कहीं भी. Yep, Krunic भाई जा रहा है. I get that Rahul, लेकिन I believe we are signing one more player. Is it a right back? For Calabria we are signing a competition, I believe, if I'm not wrong. Correct me if I'm wrong, Rahul. लेकिन हाँ, Krunic looks like it is going. Krunic wasn't in the scheme of things अभी as things stand, but also we are having AC Milan की बात हो रही है यहाँ पर. Of course, Benacer coming back hopefully very soon, fully fit. भाई टू बी ऑनेस्ट, पेपर टॉक तो ये बोल रहा था दैट आप वरान और किमिक को अफोर्ड कर सकते हो विद अराहो गोइंग, बट वो रियलिस्टिक नहीं है. वो फीफा मूव लग रहा है. दैट्स फेयर. या मतलब आई एम नॉट श्योर अभिषेक, थोड़े बहुत फैंस तो करेंगे, बट आई अग्री दैट वर्नर की गलती नहीं है टोटली, क्योंकि डिड चेल्सी गो फॉर हिम अगेन? नो. डिड चेल्सी गिव हिम द, मतलब एक चीज मैं अभी भी नाखुश अभिषेक, वर्नर का डिड ही हैव इनफ गेम टाइम विद लुकाकू? दोनों, लुकाकू स्पेशली, यू ऑल नो, आई नेवर वांट हिम बैक एट चेल्सी, नेवर, ठीक है. लेकिन खाली एक थोड़ा सा रिग्रेट है मेरा, व्हेन दोस टू वर एट द क्लब, did those two play enough games together? मुझे याद है एक गेम, एंड आयरोनिकली वो था आई थिंक कप गेम ही था, लूटन टाउन के अगेंस्ट 3-2. दैट वाज द नाइट आई बिलीव व्हेन द न्यूज केम आउट दैट चेल्सी इज अंडर सैंक्शंस एंड रोमन इज लीविंग द क्लब, और वर्नर एंड लुकाकू एक्चुअली प्लेड, इफ आई रिमेंबर राइट. और उस गेम में एक्चुअली दे वर इफेक्टिव विद लॉफ्टस-चीक प्लेइंग एज सेंटर बैक, डीप लाइंग स्वीपर, इफ यू रिमेंबर दैट अभिषेक. Warner out, Richarlison, Warner or Richarlison, हाँ, मतलब वही है, दो स्ट्राइकर्स इन Ange ball would actually work in my opinion. लेकिन again, after Son coming back, I don't think he'll get much game time. I'll be very honest वहाँ पर, ठीक है. और plus Solomon भी बुरा नहीं है guys, remember that. Morata is in good form, absolutely. लेकिन वो हमेशा था भाई. Hello to RVSR, Quick Foot Talks मेरे भाई, big up to you as well. लीविंग नहीं है अराओ का, इट्स जस्ट दैट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लॉन्ग टर्म में उनको एक मिडफील्डर चाहिए, कंसिडरिंग दैट गावी इज हैविंग अ लॉन्ग टर्म इंजरी, ओरियल रोमेरो हैज नॉट कट इट, एज वेल एज गुंडोगन इज नॉट द यंगेस्ट ऑफ देम, राइट. और क्रिस्टियनसन को फॉर व्हाटएवर रीजन इट डज नॉट यूज एज अ बैकअप सीडीएम एज वेल. तो कहीं ना कहीं दैट इज अ स्टोरी दैट दे नीड टू रेज फंड फॉर दैट, एंड दैट इज व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट, पेपर टॉक बोल रहे हैं अराहो, डियोंग, वापस वो सब बोल रहे हैं दैट यू नीड अ प्रॉपर डीएम, बट होने नहीं वाला एब्सोल्युटली. चलो भाई, signing these like make sure Spurs will not get trophies. This was the moment they should have gone for a player like Santiago Jimenez and back the manager. मतलब again याद रखिए, there's a reason why अभी लोन पर कर रहे. Maybe in the end they might go back and buy him for all we know if he's a success. That's the saddest part being a Chelsea fan. Endrick is proper left foot left shooter. I hope he can improve his right one. He has a bright future. Fair point. चलो भाई, यहाँ पर काई इन द हाउस टॉक अबाउट वर्नर एंड काई हैवर्ट्स. लेकिन क्विकली अगर मैं, और आई नो आई एम कमिंग बैक टू द टैक्टिक्स एंड द लाइनअप्स, जो यहाँ पर पीपल वंडरिंग, आज हम लोग खेल रहे सिमिलर लाइनअप और अदर सिमिलर फॉर्मेशन के साथ. इट विल बी मोर लाइक अ 4-2-3-1 और 4-3-3. अब ये देखना पड़ेगा, विल गुस्तो प्ले लेफ्ट बैक एंड गिलक्रिस्ट राइट बैक, और विल वी हैव कॉलविल प्ले लेफ्ट बैक एंड गुस्तो प्ले राइट बैक? मतलब either ways one guy will be out of position rather. लेकिन ये भी हो सकता है कि कॉलविल लेफ्ट बैक खेले और गुस्तो राइट बैक खेले और गिलक्रिस्ट डिसासी सेंटर हाफ खेले. लेकिन कंसिडरिंग प्रेस्टन इज अ चैंपियनशिप टीम, ऑल्दो 14th है, और उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है लॉन्ग बॉल्स, तो मुझे नहीं लगता गिलक्रिस्ट को सेंटर बैक खेलने का मतलब बॉल्स है पॉजिटिव को. आई एम जस्ट सेइंग, जस्ट एक प्रेडिक्शन, गंदी वाली फीलिंग आ रही है दैट गिलक्रिस्ट माइट बी अ राइट बैक एंड गुस्तो माइट बी लेफ्ट बैक. लेकिन गुड पार्ट बीइंग दैट कॉलविल एंड दिसासी विल बी सेंटर बैक. आई एम जस्ट, मुझे गंदी वाली फीलिंग आ रही है. आई माइट बी रॉन्ग दो. एंड
जनरल आप बोलोगे गुस्तो शुड प्ले राइट बैक एंड कॉलवेल विल प्ले लेफ्ट बैक. अब देखते क्या होता है विद एंजो एंड काइसेडो इन द मिडल और पामर जस्ट इन फ्रंट विद स्टर्लिंग एंड मुड्रिक ऑन द विंग्स विद ब्रोजा ऑन टॉप. तो दैट इज व्हाट इट इज. स्टर्लिंग राइट या लेफ्ट? आई थिंक राइट ही होगा. ब्रोजा खेल रहा है तो ब्रोजा ऑब्वियसली टेक द लेफ्ट विंग naturally. Question, I know tactics, just why busy win. Hopefully हाँ हाफ टाइम पे डेफिनेटली टैक्टिक्स की बात करनी पड़ी थोड़ी बहुत तो फॉर श्योर. कुछ भी गिलक्रिस्ट प्ले विकेट कीपर इफ यू नो यू नो. चलो अभिषेक बोल रहा है आई एम कन्विंस्ड दैट वर्नर विल बी गुड अंडर एंज. आई अग्री एज वेल 100%. लेकिन वही है हाई लाइन वर्सेस लो ब्लॉक. अब देखते हैं इफ टीम्स अंडरस्टैंड नोइंग दैट वर्नर खेला इन द प्रीमियर लीग इन द पास्ट. लेकिन प्रीमियर लीग में आई स्टिल हैव माय डाउट बट जनरली स्पीकिंग ही विल बी इफेक्टिव मतलब ऑफ द बेंच. डैनियल लीवी के पास अगर क्या एम्बापे टू स्पर्स नहीं यार कम ऑन ऐसे दिन नहीं आया यार इतना भी कलयू नहीं है. चलो कोई नहीं. हाँ राइट विंग बैक इन वेरोना खिलाता है एब्सोल्युटली. बट भाई टॉक अबाउट वेरोना भाई इंटर का देखा राहुल? किसी ने देखा इसका मैच भाई? व्हाट वाज दैट लास्ट 2 minutes guys? Anyone watched Serie A fans in the house? Anyone? What was the last 2 minutes guys? They got a winner. Inter and Inter are definitely winning Serie A as much as I hate to say it. The fact is उनको विनर मिल गया. मैं सोचा आज तो ड्रॉप करो भाई पॉइंट्स यूवेंटस के लिए और मिलान के लिए अच्छा होता बट भाई सम गेम दैट फॉर श्योर. इट वाज अ Serie A गेम ओनली नो. एक सेकंड मैच तो देख रहा था मैं. हाँ Serie A था. एंड इन द एंड अर्नाउटोविच ऑलमोस्ट सेव्ड अ गोल भाई. अर्नाउटोविच कलयुग नहीं वापस से फ्लैशबैक भी आ रहा है वापस से. ओनाना इज फ्रॉम ला मासिया. बिल्कुल आई नो दैट 100%. चेल्सी टू स्मोक प्रेस्टन बोल रहे हैं यहाँ पर लोग. चलो कोई नहीं. क्रेजी मैच था एब्सोल्युटली. भाई थोड़ा सा ट्रांसफर न्यूज पर और बातें करने हैं मुझे. अगेन इयन मार्टिन is on the bench guys because let's be real he's going to Dortmund. David Fofana is being called back from Sevilla to Chelsea but he's going to some club rather he's been called back from Union Berlin and going to Sevilla. Looks like it. लोन है ना शायद दाविद फफाना का. ऑल्दो 2-3 ट्वीट्स किया भाई फेब्रिशियो भाई साहब ने लेकिन एक में भी क्लियरली बोला नहीं है तो आई थिंक इट्स अ लोन इज व्हाट आई एम अस्यूमिंग. अगेन Alex Matos from Chelsea, attacking midfielder, has gone to Huddersfield, जहां पर कॉलविल गया था for people to know. Andres Santos has come back to Chelsea. A lot of Barca fans are asking for Andres Santos. As much as वो fit करता है Barca का playing style, in my opinion, absolutely. लेकिन मुझे नहीं लगता he'll get starting minutes वहां पर और he needs a lot of minutes. Chelsea में भी शायद रहे तो he'll get some minutes of the bench. लेकिन maybe we are looking at him to go out on loan again. Hopefully इस बार गारंटी के साथ. ट्रेवर चालोबा अभी के लिए चेल्सी में ही है. नॉट गोइंग टू बायर्न बिकॉज एरिक डायर जा रहा है बायर्न म्यूनिक एंड दे आर स्टिल वांटिंग अ फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक. देखते whether they really go for or just paper talk. If in case बारसा को एक सस्ता मिलता है सेंटर हाफ which I don't think will happen. कॉनर गैलेगर टू स्पर्स मतलब उसने नकार दिया थिंग्स स्टैंड बट you never know. He's on the bench today so मतलब although बहुत खेला है अपना कचरा we love him to bits. But the reality is that there is some amount of talk going on. अब अभी के लिए मना कर रहा है but you never know if they might come back considering अगर हॉयबर्ग जाता है यूवेंटस को. ऑल्दो यूवेंटस ने मना किया है हॉयबर्ग के साथ कुछ टॉक शुरू नहीं हुआ है तो हॉयबर्ग शायद नहीं जा रहा है थिंग्स स्टैंड टू यूवेंटस. तो अगर नहीं जाता है तब कॉनर गैलेगर माइट जस्ट स्टिक अराउंड चेल्सी एंड ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि वो चेल्सी में रहे नो मैटर व्हाट. और बेंटनकर बाय द वे वाज कैप्टन लास्ट नाइट इन द विन अगेंस्ट बर्नली इन द एफए कप और बेंटनकर इज बैक सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कॉनर गैलेगर जबरदस्ती नहीं जाएगा वहां unless he's been guaranteed starting minutes. जो मैडिसन anyway will start after he comes back. Let's be real about that. हकीम जियाश अभी के लिए he's still there in Galatasaray, is not coming back. वो रूमर्स थे. लेकिन स्ट्राइकर पर आते थे गाइड. यहाँ पर हम टीमो वर्नर की बात कर रहे थे. जनरली स्ट्राइकर्स की बात करें रोबर्टो फर्मिनो का मुझे लगता है दैट इट्स अ पॉसिबिलिटी दैट ही डेफिनेटली कम टू द प्रीमियर लीग बट व्हिच club does Roberto Firmino fit best in right now as in terms of the fitment बोलेगा सोनी लिव पर आएगा. हाँ एवरीवन सोनी लिव पर आएगा यार एब्सोल्युटली. लाइनअप पसंद है यार. ज्यादा रेज करने का आज मौका नहीं मिला तो दैट्स गुड टू हैव समटाइम्स लेकिन हाँ टॉक अबाउट स्ट्राइकर देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक अभी भी दैट चेल्सी नहीं कर रही इन्वेस्ट इस बार. They're not in a hurry to sign a young striker who's unproven in the Premier League or generally any player for that matter. और इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि can Victor Osimhen commit to Chelsea beforehand for the summer जो किया था एंकुंकू ने लास्ट ईयर. मतलब इज इट पॉसिबल? बेस्ट केस सिनेरियो होगा यस बट उसके लिए भी चेल्सी को कम से कम टॉप 6 पोजीशन देखना पड़ेगा
if not top 7, or win the FA Cup to get to Europa League. Victor Osimhen ideally wants Champions League and he'll get that in any club. I mean, many clubs rather. लेकिन 130 million euros बहुत clubs नहीं देना चाहेंगे for Victor Osimhen, as much as he's done great in France as well as in Italy. But the reality is that he's not done great in the Premier League or La Liga. तो अभी भी अगर एम्बापे टू रियल मैड्रिड इन द समर माइट बी पॉसिबल, राइट नाउ नो. अगर उनको लग रहा है कि यार मोर एम्बापे पर जा रहे हैं, देन दे माइट वेट फॉर एम्बापे इन द समर, रियल मैड्रिड दैट इज. अभी के लिए तो एनीवे विल नॉट मूव जस्ट लाइक विक्टर ओसिमन. तब हो सकता है दैट समर में विक्टर ओसिमन माइट बी अवेलेबल, जस्ट सेइंग. ऑल्दो एम्बापे टू लिवरपूल भी टॉक्स हो रहे हैं, बट वो टॉक्स ही है, नहीं होने वाला. बट टॉक अबाउट लिवरपूल गाइज, एक बड़ा ट्रांसफर स्टोरी है. समवन वाज लिंक्ड टू चेल्सी एज वेल इन द पास्ट, और रिसेंटली हमने बात किया था अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड. Michael Olise, guys, all of a sudden last 48 hours में आ रहा है, there are 4 clubs fighting for Michael Olise. Chelsea interested in more to get Michael Olise in the summer, not right now, depending upon कैसा Gabriel का improvement होता है over the next couple of months, is what Chelsea का take है. Plus Madueke, does he prove to the next level, although recent couple of matches में अच्छा किया है. तो based on Madueke और Gabriel का progression in the next couple of months, Chelsea might go back for Olise in the summer अगर वो available हो. Release clause है 60 million euros guys, 60 million pounds if I'm not wrong. लेकिन हाँ, there is Liverpool interested, there is Arsenal interested, there is Manchester United interested. Where will Michael Olise go? That is a big question, guys. Let me know Michael Olise का fitment, guys. Michael Olise is injured again, yes, लेकिन कहीं ना कहीं जाएगा, in my opinion. I don't think he's going to stick to Crystal Palace. The whole point is, अगर वो injured है ना, तो even if there is a release clause, there is a possibility of negotiation there. Gaurav, that's the whole point. And yeah, there is no smoke without fire. There are 4 clubs going for Michael Olise, guys. Right now, Manchester United, Liverpool, Arsenal, and summer के लिए Chelsea. There are 4 proper clubs going for Michael Olise. Where will he fit best? Remember, 60 million pound है. Pudin in the house, big up मेरे भाई. Again हमने कम से कम 20-25 मिनट उसके बारे में बात किया मेरे भाई. Pudin, आप लेट ज्वाइन कियो, आप चेक कर सकते हो वापस. लेकिन coming to other transfer stories and back to the lineup in few minutes. Again ये भी मैं बात कर लिया हूँ. गौरव, big up to you as well. क्या हाल है? Harsha as well. Nice. Yes, absolutely good. Victor Osimhen to Chelsea, 0% chance in January, little possibility in summer. January मैं बोल भी नहीं रहा, मैं summer की बात कर रहा हूँ. That it's a pre-agreement is what we are talking. That's the story. That इसलिए Chelsea शायद are not going to spend big on, say, we are probably going to wait on a Victor Osimhen or a Benjamin Sesko for the summer, and we are okay right now with David Washington being a backup striker to a Nkunku/Broja/Jackson is what the talk of the town is. Or we might not go for Victor Gyökeres or Santiago Jimenez is what the talk of the town is. I know a lot of people want Girassi, like Girassi has been linked with Newcastle and Manchester United as well. Gaurav, I like Olise, but injury prone है. We already have so many injury prone players. मडवे के सेकंड हाफ में सब करना जरूरत है, उसको गेम टाइम मिलने से फिर से निकलेगा, फायर निकलेगा. ओके, एंटनी रिप्लेसमेंट Olise. I think Olise makes sense in either of the clubs. Liverpool, again, remember, Salah definitely is your मतलब legend bro, next level as much as the next Chelsea man भी. लेकिन the reality is that Salah कभी ना कभी आपको move on करना पड़ेगा, आपको succession planning करनी पड़ेगी. Johan Bakayoko probably is at the right age अभी right now to kind of get him in and bed him in Liverpool. Him on Harvey Elliott जो भी kind of rise up to the occasion, maybe वो करते. लेकिन in terms of quality, even as much as हमने खुद scout किया था last summer में Johan Bakayoko को for Chelsea, although आया नहीं, I would still say Olise is a better prospect despite being injury prone, in my personal opinion. सच में बोलूं, Olise right now, even though he's injury prone, is better than Anthony, he's better than Madueke, he's better than Johan Bakayoko. I'll be very honest वहां पर, honestly speaking. Olise is definitely very, very good when he plays, and he's been he's still 22, or he's been in a crazy run of form. नीलेश यहाँ पर बोल रहे we should sell Broja और Jackson in summer and go for Victor Osimhen. Again, हम कोशिश तो करेंगे. Maybe Broja might be option, maybe for Napoli. Who knows that Broja अच्छा करता है in the next few months, and then we want to cash him on him, because let's be real, वो starter तो नहीं होगा Chelsea में, as much as we would love it in the future. भाई सेजार कैसे रहे? या मतलब bowling तो नहीं बोलूंगा. Again, people know it. OGs of the channel know that I personally know a couple of Leicester ultras, and I believe so. Leicester के fans were having mixed opinion about Cassidy because अभी भी बहुत raw है. लेकिन हाँ, he just got a good assist and a goal, I believe. लेकिन having said that, I think
Pretty sure वो आने नहीं वाला. We are not going to recall him right now because we want him to get game time and is finally getting game time at Leicester. So I would definitely see that he's one for the future. लेकिन Gallagher का replacement के लिए ready है come the summer. I'm not too sure about that. Pudin. सुमित या पूछ रहे why always signing Bundesliga players? भाई to be honest, प्रीमियर लीग प्लेयर्स आते हैं तो प्रीमियम यार, पैसों की वांदे यार, इसलिए बुंडेसलीगा एक्सेट्रा फिर भी अवेलेबल रहते हैं यार. और बुंडेसलीगा कहीं ना कहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सुमित, कहीं ना कहीं वो एक पेस ऑफ द बुंडेसलीगा इज एक्चुअली देयर, नॉट द स्ट्रेंथ और द फिजिकलिटी बट द पेस ऑफ द बुंडेसलीगा इज एक्चुअली नॉट बैड. तो आई डोंट थिंक इट्स अ मिसफिट एट ऑल, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई थिंक फ्रेंच लीग वेरी सरप्राइजिंगली आपको लगेगा, लेकिन ला लीगा और सेरिया से कंपेयर टू in terms of the football, no, I would say thoda bahut, not same, lekin thoda bahut there is a linkness to a Liga or Bundesliga in my opinion. Liga लाता है आपका physicality और Bundesliga आपके लाता है pace of the game. Salah free में नहीं जाएगा. Liverpool will get minimum 100 to 200 from Saudi. They might go for someone like Rodrigo, who knows. भाई लेकिन I think Liverpool will eventually cash in on Salah. Maybe not next season, लेकिन next to next season. By the end of next season मैं देखता हूँ. They can talk about Saudi यार, Rafinha भी यार. Barca fans, I think there's a strong interest from Al Hilal, wanting Rafinha. और Dumfries यार, इंटर मिलान has signed a Canadian right wing back, guys, for people who not know. If I'm not wrong, वो था क्या वर्ल्ड कप में पता नहीं, but basically this guy has been signed by Inter Milan and उनके पास already एक young right back है, remember, plus एक Darmian भी if need be. तो I think Dumfries का availability is a possibility. Guys, Chelsea fans, यहाँ पर हम coming back to transfers and we're coming back to the lineup and other things, लेकिन Chelsea fans especially आप लोग बोलिए, और generally Premier League fans यार, if a person like Denzel Dumfries is available, I know Jeremy Frimpong के news आ रहे थे with Chelsea and Aston Villa, लेकिन वो होने नहीं वाला because Leverkusen are in a title race. Inter भी है title race में, लेकिन I know that वहाँ पर Cuadrado injured है, इसलिए वो लोग sign किए, but अभी भी उनके पास enough options है. तो Dumfries अगर move होता है, so why not? I think people, even Spurs will be I think interested in Kyle Walker-Peters. या news आ रहा था, who could play on either side of the डिफेंस, मतलब राइट फुल बैक या लेफ्ट फुल बैक खेल सकता है, और अच्छा कर रहा है अभी साउथहैम्पटन के चैंपियनशिप में. तो मतलब डम्फ्रीज और काइल वॉकर पीटर्स आर एक्चुअली पॉसिबल प्रीमियर लीग स्टार्टर्स यार, मतलब दे आर दैट गुड इन माय ओपिनियन. मतलब ऐसे नहीं बोल रहा, दे वर्ल्ड बीटर्स, लेकिन दे पोटेंशियल स्टार्टर्स, मतलब नॉट टू बैड ऑप्शंस, और ज्यादा महंगा नहीं होगा. इंटर मिलान हैज गॉट अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम अस इन द पास्ट, जस्ट सेइंग. राहुल यहाँ पर बोल रहे गो फॉर लोन फॉर दिस पार्ट ऑफ कैंपेन फॉर अ स्ट्राइकर एटलीस्ट फॉर AFCON टाइम इज व्हाट ही इज रेकमेंडिंग Chelsea, I believe. बिल्कुल भाई नीलेश, व्हाई नॉट योर थॉट्स ऑन टीम ओनर. मैंने ऑलरेडी जस्ट शेयर कर दिया मेरे भाई, लाइक आई सेड 20 to 25 minutes. I'm unhappy. Simply put, बार बार पूछ रहे मेरे भाई पुतिन, being a member and OG of the channel, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. लेकिन guys, hit that bell icon. Let us not repeat the same thing again and again, because people who are watching from minute one, it's disrespect to them. लेकिन the reality also being that I'm not happy about Timo Werner joining Spurs, क्योंकि मुझे लगता है Ange ball में he might ball, लेकिन for his sake as well, it's not good. First month के लिए अच्छा है, for 1 month he'll get a lot of game time, लेकिन come mid-Feb he'll be on the bench, simple as that. लेकिन वो एक महीने में अगर झंडे गाड़ दिया ना, तब तो भाई you never know. It's bad for a Chelsea fan, honestly speaking. Dumfries is not crazy good, I would say, but I think attacking wise में, 5 at the back system, teams like them can actually utilize him very well. He could play जो हम डच फुटबॉल में देखते हैं काफी, मतलब डच नेशनल टीम के लिए. मतलब परम आज लग रहा है दैट मेरा गट फील है दैट आज कॉलविल खेलेगा सेंटर बैक, लेकिन मेरी गंदी वाली फीलिंग है गुस्तो खेलेगा लेफ्ट बैक. गुस्तो इज नॉट टू बैड एज लेफ्ट बैक, लेकिन why would he play left back when he can play right back better is my question. If I was Poch, I would have had the guts to play Disasi Gilchrist in center, despite long ball of Preston जो होता है in the championship, और गुस्तो और कॉलविल एज फुल बैक्स में खेलता आज. ऑनेस्टली नॉट दैट कॉलविल इज ग्रेट एज लेफ्ट बैक, लेकिन प्ले एवरीवन इन देयर प्रॉपर पोजीशंस मैं बोलूंगा. Rafinha to Al Hilal might take place, I would say 70 to 80 million, and he can pack his bags and go to Saudi. हाँ, I believe so. ये अभी के लिए नहीं है, लेकिन ये प्री अग्रीमेंट होगा एंड समर के लिए होगा, इज व्हाट आई एम अस्यूमिंग. यूनाइटेड लिंक है डम्फ्रीज के साथ. यूनाइटेड के थोड़ा यूनाइटेड पर और आ जाते हैं भाई. हमने बात किया था स्ट्राइकर गिरासी और जोशुआ जर्गजी टू मैन यूनाइटेड. अगेन दीज आर टू प्लेयर्स हु हैव बीन डूइंग वेल दिस सीजन, लेकिन
are they having that level of experience? Probably not in terms of numbers का consistency. Michael Olise हम already discuss कर लिया है, लेकिन Oscar Zambrano जो हम बोल रहे थे, unfortunately I think there is another club coming in for Oscar Zambrano और वहां पर उसको शुरू स्टार्ट मिलेंगे बोर्नमथ if I'm not wrong. तो वहां पर आई थिंक इट प्रॉब्ली गोइंग देयर एंड मैन यूनाइटेड मिस आउट ऑन अनदर इक्वेडोरियन सेंट्रल मिडफील्डर, ऑल्दो उनको मिडफील्डर की इतनी मतलब बर्निंग नीड नहीं है अभी के लिए. लॉन्ग टर्म के लिए उनको चाहिए कैसेमिरो को रिप्लेसमेंट फॉर श्योर अभी भी, क्योंकि अमराबाद इज ऑन लोन. लेकिन आई थिंक यूसुफ फफाना इज वन दैट गेट टारगेटिंग इन द लॉन्ग रन, क्योंकि ही माइट बी दैट वन experienced midfielder who might come in by next season. Let's see. Pre-agreement हो सकता है उसके साथ, is what the talk of the town is. लेकिन guys, talk about Chelsea and Manchester United. मार्क गेही यार, मतलब बिकॉज यहाँ पर ये भी न्यूज आ रही है that Chelsea ownership are interested in more Premier League proven players. There is again a rumor from last 24 hours कि यार मार्क गेही to Chelsea is also possibility. अगर मार्क गेही to Chelsea होता है then जॉन क्लेयर टोडीबो to Manchester United हो जाएगा, और अगर जॉन क्लेयर टोडीबो to Chelsea होता है then मार्क गेही to Manchester United हो जाएगा, और अगर राफेल वरान जाता है elsewhere only then. Although I don't see it happening because it's a lot of money to be very honest. और अभी के लिए मुझे लगता है maybe they are looking at Manchester United more to kind of sustain. ठीक है, I don't think they're buying many players, लेकिन मुझे अभी भी लगता है they need a striker 100%. लेकिन एक और rumor आया है Ferland Mendy to Manchester United, guys. अब again they've just let go Reguilon back to Spurs, तो शायद I don't see that happening यार. Reguilon is not bad enough for a third choice left back. Come on. Dumfries might go to Real Madrid. They need Carvajal replacement. नहीं, I don't see him at that level. To be very honest. Again, मैं खुद चेल्सी के लिए बोल रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ रियल मैड्रिड के लिए हाँ नहीं. लेकिन the fact is Real Madrid expect to win titles every season, and I know that is Chelsea level. अभी के लिए चेल्सी नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ nothing against Chelsea man. I love my club to bits, but I'll just being real. यहाँ पर Real Madrid basically will wait for the recovery of Reece James and then see what happens this summer. So I don't think अभी हम बात करेंगे उसका ज्यादा. ऑल्दो चेल्सी तो रखना चाहिए रीस जेम्स को एंड होपिंग दैट ही गेट्स बैक, अ कैप्टन रिमेंबर टेक्निकली अंडर पॉच. लेकिन हाँ, डमफ्रीज इट बी इंटरेस्टिंग. मैन यूनाइटेड बिकॉज द डच कनेक्शन आई बिलीव वो न्यूज आ रही है बिकॉज जेरेमी फ्रिम्पोंग अवेलेबल नहीं है. Chelsea if also look good for good left back would not be bad, I'm telling. Again we have been linked last 48 hours में बास्टोनी के साथ और थोड़ा बहुत थियो हर्नांडस और डिमार्को के साथ. pretty sure वो नहीं होने वाला in my opinion. Sanchez and Jan Sommer swap. भाई इंटर मिलान को पागल कुत्ते ने नहीं काटा है as much as Sanchez is a Chelsea player. Jan Sommer has been doing very well in fact. Signing Dumfries is the absolute steal of deal as of now. ये क्या है? Interesting that interesting. Lord Punish Superstar यहाँ पर बोल रहे हैं I was big Alonso fan when he was in Premier League. उसकी सर्जरी हुई है, but most of Barcelona fans don't know about this. Is sad. Bhai, Marcos Alonso is someone that I miss at Chelsea. I'll be very honest. I'm very unhappy as well. Come on, Timo, show some respect. Again, should we blame him really? Because हो सकता है that was the only club which came calling. Manchester United का खाली पेपर टॉक था शायद, वो भी हो सकता है ना, because Manchester United का लेफ्ट साइडेड फॉरवर्ड थे उनके पास. भाई आइवन टोनी का बोलिए गाइस. आइवन टोनी का आज बाय द वे न्यूकासल हैव गॉट अ बिग विक्ट्री ओवर सनडरलैंड गाइस. रिमेंबर सनडरलैंड न्यूकासल का वन ऑफ द डार्बीज ऑफ बेसिकली हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल है. सिंपल, इट गोज एज ओल्ड एज दैट. लेकिन अवे टू सनडरलैंड, न्यूकासल हैव एक्चुअली बीटन. मैं सनडरलैंड का नाम ले रहा हूँ बिकॉज आई बिलीव सॉरी न्यूकासल नाम ले रहा हूँ क्योंकि न्यूकासल जा रही है आइवन टोनी के लिए पॉसिबली, कंसिडरिंग दैट इतने सारे गोल्स नहीं है उनकी तरफ से. But at the same time, मतलब you can argue that मतलब Arsenal need him more. मतलब again Newcastle beating Sunderland 3-0 bro, I believe. What a victory भाई, historic moment for Newcastle. Remember fourth round के बाद में ज्यादा गई नहीं Newcastle in the recent past, even though being Newcastle being a traditional club. FA Cup में बहुत बुरा रिकॉर्ड है उनका recent past में. So remember, they are already out of the Carabao Cup thanks to Chelsea, and of course the Champions League thanks to AC Milan. कहीं ना कहीं, but the reality being that Newcastle will be trying for the FA Cup this time because कहीं ना कहीं top 6 guarantee नहीं है, और अगर आप जीतते हो FA Cup then you might get to Europe, like a Chelsea, like we're saying. But that is why they might go for Ivan Toney. ज़्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि एक रिलीज क्लॉज सेल ऑन क्लॉज भी था पीटरबरो का, तो वहां पर टोटली आइवन टोनी माइट कॉस्ट 105 मिलियन, इसका अफोर्ड टू जस्ट अराउंड 90 मिलियन. लेकिन आर्सेनल इन माय ओपिनियन नीड हिम मोर.
तो मैं देखता हूँ आर्सेनल और न्यूकासल के बीच में होगा, चेल्सी मैं नहीं देखता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज इट्स टू मच मनी फॉर आइवन टोनी। आइवन टोनी के लिए आप 90 मिलियन दे रहे हो, उससे बेटर मैं समर के लिए वेट करूंगा, अगर इतू से चांस है टू पुट अनदर 30 मिलियन मोर एंड ट्राई फॉर ऑजीमैन, ऑल्दो थोड़ा सा चांस है, सिंपल एज दैट। चुपोमोटिंग टू यूनाइटेड, यू थिंक सो? I'm not sure about that. I'm not too sure about that Choupo-Moting to United story. एक सेकंड, डोकोरे, कौन सा डोकोरे भाई? क्रिस्टल पैलेस वाला, होता इंजर्ड है ना, एवर्टन वाला। जिरोना फैन इन द हाउस, व्हाट्सअप। Ivan Toney to Arsenal, yes, even I agree. They probably will go for him. I think कहीं ना कहीं ना क्लब्स वेट कर रही कि कौन सा क्लब पहले जाएगा आइवन टोनी के लिए। टोनी स्कोर हैट्रिक अगेंस्ट हम, हाँ, लेकिन ब्रेंटफोर्ड के मैनेजर ने तो बोला है दैट भाई वो कहीं नहीं जा रहा। ऑल्दो लोग बोलते हैं एंजो फर्नांडिस के बारे में, लास्ट टाइम भी बोला था बेंफिका ने, हम तो हाथापाई पर आ गए थे। ऑल्दो टॉड बॉली का तो अलग ही सीन है, पता नहीं यार, मतलब चेल्सी कुछ तो होगा प्लान में, लेकिन लुक्स लाइक इट वी आर बीइंग अ लिटिल बिट केयरफुल दिस टाइम, एंड आई अग्री व्हाई वी आर बीइंग केयरफुल, आई गेट दैट टोटली। या ही मेड अ ग्रेट डेब्यू, बट वो मिस चांस अगर नहीं होता तो ही वुड हैव बीन अ लिटिल बिट मोर कॉन्फिडेंट, बट ठीक है, स्टिल अर्ली डेज फॉर श्योर। एसी मिलान का हमने शेयर किया भाई, राइट विंग बैक कमिंग इन फ्रॉम वेरोना आई बिलीव, एंड क्रूनिच गोइंग आउट, आई थिंक टर्की जा रहा है क्रूनिच, क्योंकि बेनेस्टर शुड बी बैक fully, touchwood he comes back fully fit, लेकिन that is the need, again ज़्यादा पैसे नहीं है, so I'm a little bit surprised with the money that we are letting Krunic go, but it's okay, it is what it is. Yeah, Choupo-Moting नहीं जाने वाला, even I agree, the Choupo-Moting will not be going anywhere, remember Choupo-Moting right now anyway जनवरी में available नहीं है। Choupo-Moting has been selected क्या अपने national team के लिए? Let me know guys. Rizwan in the house, what's up? Pokemon signing news. चेल्सी का भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, द रीसेंट न्यूज वही है कि यार वी माइट बी लुकिंग एट अ सेंटर बैक, डियो मांडे इज टू मच मनी, तो जॉन क्लेर टोडिबो इज लिटिल बिट मोर अफोर्डेबल, बास्टोनी इज टू मच मनी और अनरियलिस्टिक। बैकअप है टोरिनो का सेंटर बैक, और अमर डेडिच हु कुड प्ले अक्रॉस द बैक फोर, या एंटोनियो सिल्वा लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, बट मार्क गेही इन द वर्स्ट केस अगर जाना पड़े तो, लेकिन आई डोंट सी दैट हैपनिंग, इसलिए मैंने बोला मैनचेस्टर यूनाइटेड माइट एक्चुअली गो फॉर हिम और जॉन क्लेर टोडिबो, और बाकी वाला चेल्सी पर आएगा क्वाइट पॉसिबली, अगर चालोबा नहीं जाता है, दैट इज ओनली देन। और स्ट्राइकर में आज थोड़ा बहुत न्यूज आ रहा है रोबर्टो फर्मिनो का, ऑल्दो मैं अग्री नहीं करता वो होने वाला है, एंड लिटिल बिट वियर्ड लुकिंग एट हिम एट लिवरपूल कलर्स ऑल दीज इयर्स प्लेइंग फॉर चेल्सी, लेकिन मुझे नहीं लगता होने वाला है कंसिडरिंग चेल्सी का जो ट्रांसफर स्ट्रेटजी रहा है। बट सुनने में ये भी आ रहा है दैट वी माइट बी ओपन फॉर पीपल कमिंग ऑन लोन, तो डोंट रूल दैट आउट टोटली, यू नो, until we get surety about एक समर साइनिंग इन ऑजीमैन, जो थोड़ा बहुत ड्रॉगबा और मिकेल भी ट्राई कर रहे हैं, आई नो इतू सा चांस है बस, नहीं तो बेंजामिन सेस्को अपना बैकअप है फॉर द समर, लेकिन हाँ, आई बिलीव सो ऑन्ड्रे सैंटोस का अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है। आज याद रखिए इयन मार्टसन इज ऑन द बेंच, वहां पर भी थिंग्स आर गोइंग ऑन। अभी राडू ड्रैगसन by the way meanwhile is going to Spurs 100%, while Eric Dyer is going to Bayern Munich, looks like it. Frimpong has a 40 million release clause in the summer, sounds like a Real Madrid target possibly, लेकिन is he Real Madrid level already? Possibly yes, हो सकता है, बट अभी भी टाइम है, मेरे को लगता है थोड़ा बहुत और प्रूव करना पड़ेगा अगेन, बट इट्स अ वर्थ इन्वेस्टमेंट 100% फायरी, आई एग्री विद यू, मतलब दे माइट वेट फॉर द समर, कहीं ना कहीं अगर रीस जेम्स जो थोड़ा सा चांस ही might be available and he might just go to Real Madrid, for all we know, as much as I hate saying it, because कहीं ना कहीं मैं नकार रहा हूँ बहुत दिनों से, लेकिन अगर हमें लग रहा है that you know this current ownership is not backing the Cobham boys as much, then you never know, you might see Jeremy Frimpong in Chelsea and Reece James to Real Madrid or vice versa. I hope vice versa ज़्यादा true हो, लेकिन guys coming back to the lineup, what do you all think? 4-2-3-1, सब लोग बोलिए लेफ्ट बैक कौन खेलेगा आज, क्वेश्चन इन द चैट, कमिंग बैक टू द लाइनअप, 10 मिनट्स लेफ्ट फॉर किक ऑफ गाइस, अगेन जो भी लोग है डू नॉट फॉरगेट, इट्स ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी, डू लेट मी नो व्हाट डू यू ऑल थिंक हु विल प्ले लेफ्ट बैक टुडे, द लाइनअप इज ऑन द स्क्रीन, आप देख ही रहे हो, मेरा कॉल है लेफ्ट बैक, आई वांट for a change I want Colville to play left back because he's been playing left back, तो और श्योरिटी आए as much as he's playing too much football, लेकिन मुझे गंदी वाली फीलिंग आ रही है मालो गुस्तो विल प्ले लेफ्ट बैक और गिलक्रिस्ट माइट प्ले राइट बैक, मुझे लग रहा है, आई माइट बी रॉन्ग एंड आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे वो लग रहा है दैट
लेफ्ट बैक खेलेगा गुस्तो विद गिलक्रिस्ट प्लेइंग राइट बैक एंड कॉलवेल प्लेइंग सेंटर बैक. तो उसमें 2 people will be out of position in Gusto and Gilchrist. You can argue because Gilchrist is primarily a center back who can play right back. Correct me if I'm wrong, guys. But you have Gilchrist and Disasi also who could play center back with Gusto playing right back and Colwell playing left back. Usme khali Colwell will be out of position technically speaking. But again, it's important कि एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल आज दिसासी का. अगेन तियागो सिल्वा है बेंच पर. मैं चाहता था आज तियागो सिल्वा खेले. पीपल हु फॉलो अस ऑन ट्विटर, बाय द वे, यू गाइस कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया गाइस. ऑलवेज लिंक्स आर बिलो. रिमेंबर द बॉटम लाइन ऑफ द डिस्क्रिप्शन हैज हमारे लिंक्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और फर्स्ट टू लाइंस हैव द मेंबरशिप इन्फॉर्मेशन फॉर बोथ द चैनल्स. यस, वी डू हैव अ सेकंड चैनल एज वेल. तो वहां पर हमने बोला था दैट तियागो सिल्वा खेलना चाहिए मेरे ख्याल से, बिकॉज Preston will put balls in the box whenever in position. Long ball खेलेंगे. वहां पर मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट होता हूँ with the Thiago Silva compared to a Disasi, क्योंकि Badiashile is injured. तो I am little bit concerned वहां पर, if I'm being very honest. Jackson कुछ भी. गुस्तो खेलेगा लेफ्ट बैक. I agree, man. As much as I want Colwell to play, but let's see. Colwell the goat खेले तो continuity is something that I want. अंकित भाई लेफ्ट बैक. चलो भाई, चेंज हो जाते चलती गियर पर हम लोग. Colwell is a center back है मेरे भाई. Center back है who's left footed basically. That's what his position is ideally. लेकिन we all know Poch likes थोड़ा सा चुल होता है उसको कि यार to kind of play people out of position, surprise the opposition tactically. आप बोलते हो एक बहाना अच्छा मिल जाता है, लेकिन as much as we say sometimes we have to go with belief and believe that he plays the right Poch ball आज. देखते हैं भाई. footmob.com तो बोल रहे हैं भाई रेगुलर पोजीशन में खेलेंगे आज. लेट्स सी व्हाट इट इज. Preston का ये guys, anyone follows Preston by any chance? Is there a single person who follows championship very closely? मैं थोड़ा बहुत highlights देखा हूँ for a crazy couple of championship games, but I'm not going to claim कि Preston का game देखा हूँ. Again, all I know or I've heard of is Preston are struggling. उनका form last 4-5 में खाली 3 जीते हैं compared to Chelsea, or for a change, good run of form, touchwood. Chelsea have actually done well against championship sides in the FA Cup. FA Cup generally is a tournament. Despite last season हमने third round में exit मारा था, thanks to Man City being there just after the World Cup. We all remember that. एक साल exactly year back I remember. But let's be real. मतलब we should be beating this Preston side, even though they are 14th and all that. No matter what हमने beat करना है, but we cannot take them lightly. And there are championship sides, तो थोड़ा बहुत मतलब physicality or pace will be seen in counter, जो on the break we kind of get beaten, and that is where Caicedo बहुत important है, और आपके long ball के लिए Disasi बहुत important है, और crosses मत allow करना भाई Gusto और Colwell if you are playing the system. That is, again we'll come to that. But again लो ब्लॉक होगा तो वहां पर पामर एंड एंजो आर की टू काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि याद रखिए तियागो सिल्वा नॉट स्टार्टिंग फॉर द हॉलीवुड बॉल्स. बाडियाशिले तियागो सिल्वा शुरू नहीं कर रहे, तो कॉलवेल, एंजो और पामर से आएगी क्रिएटिविटी. अरे भाई अभिषेक ओपी मैन, अभिषेक हैज फॉलोड इट मैन, बिग अप. मैं हाईलाइट देखो थोड़ा बहुत अभिषेक, टू बी वेरी ऑनेस्ट. Why would you want to tire Thiago? मतलब मैं बोल रहा हूँ मिडलस्ब्रा के अगेंस्ट मैं शायद रेस्ट करने की कोशिश करता, क्योंकि वहां पर सेमीफाइनल है, कैराबो कप सेमीफाइनल इज मोर इम्पोर्टेंट ट्यूसडे नाइट को. बट आई नो इट्स एन अवे गेम, बट एट द सेम टाइम वो एक 2 लेग टाई है ना, तो वहां पर यहाँ पर एक 90 मिनट्स है बस. तो कंसिडरिंग वी आर नॉट देयर इन यूरोप, आई नीड FA कप आल्सो डीप रन ब्रो. क्योंकि प्रेस्टन अगेन वन थिंग दे आर गुड एट इज पुटिंग दोस लॉन्ग बॉल्स, द डिलीवरी इन. लेकिन गाइस स्कोर प्रेडिक्शन हो जाए सब लोग, क्या लग रहा है भाई चेल्सी वर्सेस प्रेस्टन, व्हाट्स गोइंग टू हैपन? अगेन जो भी लोग यहाँ पर है, नॉट हिट दैट लाइक बटन, कम ऑन. कितने 150 लाइक्स इज ऑल वी आर आस्किंग, कम ऑन. फर्स्ट हाफ का टारगेट है 150 लाइक्स एज वेल एज ऑन द कम्युनिटी पोस्ट. कम ऑन एवरीवन. नो चांस, बट चेल्सी को हरा दे तो अच्छी बात है. राहुल बोल रहा है, बाप रे. आयुष अच्छा हो मेरे भाई, आप कैसे हो? Who are you backing or table leaders? Bhai, fiery nothing against you, man. Obviously, I'm backing Aston Villa. If you know, you know. But obviously, मुझे लगता है that it will be between Liverpool and Man City, as much as Arsenal or Aston Villa are also technically there. Absolutely. Spurs मैं नहीं बोलूँगा अभी तक है. Although Timo Werner signing tells that at least they're ambitious, even though it's on loan. भाई मेरा फोन तोड़ने पर क्यों तुला हुआ, एक सेकंड.
चलो भाई शुरू हो रहा है यहाँ पर, मैच इज गोइंग टू बिगिन एनी मोमेंट। जो भी लोग यहाँ पर है हु हैव नॉट पुट देयर प्रेडिक्शंस बोलिएगा, मेरा प्रेडिक्शन सुनिएगा। आई बिलीव दैट अगर बेंच देखा जाए तो वी आर हैविंग पीपल आउट देयर लाइक डेविड वॉशिंगटन, कॉर्नर गैलेगर, मैं एक्सपेक्ट टू कम, मडवेके में भी ये 3 जन आएंगे। लेकिन आई थिंक आर फर्स्ट 11 शुड बी इनफ, क्योंकि हम लोग वापस बैक फोर चेंज कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, इवन दो इट्स अ स्टैमफोर्ड ब्रिज एंड इट्स अगेंस्ट एन आउट ऑफ फॉर्म प्रेस्टन, चैंपियनशिप साइड 14th। फिर भी मैं अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा हूँ कि वी माइट कंसीड, बी रोमांटिक ऑफ द एफए कप हूँ, बट मैं देखता हूँ कि आज 2 गोल आएंगे। ब्रोजा is scoring guys tonight for a change. Broja is scoring and in my personal opinion one of Enzo or Mudrik will get their name on the score sheet, be it a goal or an assist. So bhai I am saying a 3-1 to Chelsea भाई स्टैमफोर्ड ब्रिज पर। ऑल्दो होना तो चाहिए आइडियली समथिंग लाइक 4-0 5-0, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 3-1 टू चेल्सी, कंसिडरिंग दैट थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं और देखते हैं व्हाट हैपेंस। सेट पीस पर डिफेंडिंग देखते हैं चेल्सी की, एब्सोल्युटली वहीं पर हम कंसीड करेंगे मेरे ख्याल से। रोहान के साथ मैं अग्री करता हूँ 3-1 टू चेल्सी। कार्तिक बोल रहे हैं 0-0 और रिप्ले जाएगा। अरे भाई क्यों 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 भाई राहुल बोल रहे 2-1 टू प्रेस्टन, बाप रे 14th है मेरे भाई स्नेहिल, दे आर नॉट डूइंग वेल, लेकिन वही है लॉ ऑफ एवरेजेस नहीं हो जाए कहीं ना कहीं चेल्सी का अगेंस्ट। फाइनल टू चेल्सी भाई ब्रिलियंट, पामर टू स्कोर, पामर मेरे ख्याल से विल बी टेकन ऑफ, मुझे लगता है ही माइट गेट एन असिस्ट दो, बट मुझे लगता है ब्रोजा, पता नहीं आज फीलिंग आ रही है ब्रोजा एंड वन ऑफ एंजो और मुड्रिक विल स्कोर, लेट्स सी। उत्कर्ष अच्छा आप कैसे हो मेरे भाई? क्लीन शीट एट लास्ट 2-0 टू चेल्सी। पेट्रोविच बाय द वे कहीं ना कहीं उसके लिए और ब्रोजा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट 2 वीक्स यार, इट्स अ ग्रेट चांस फॉर पेट्रोविच एंड ब्रोजा टू काइंड ऑफ स्टेक देयर क्लेम, स्पेशली जब यहाँ पर सैंचेज अभी तक 100% मैच फिट नहीं है और जैक्सन इज आउट फॉर द एफकॉन। लेकिन गाइस वी आर डूइंग द वॉच अलोंग एज वेल, होपफुली एवरीवन बने रहे और सब लोग जो भी यहाँ पर है बोलेगा आपके भी थॉट्स अबाउट द स्टार्टिंग 11 टैक्टिक्स विल कम टू व्हेन द किक ऑफ बिगिंस अगेन, बट ये भी बोलेगा अबाउट द ट्रांसफर न्यूज दैट वी कवर्ड, इफ यू आर कमिंग लेट व्हाट डू यू ऑल थिंक अबाउट इट एंड योर प्रेडिक्शंस इन द चैट हो जाए सब लोग। कम ऑन, सही टीम सेलेक्ट की है भाई, लेकिन मैं अभी तक थोड़ा बहुत जूरीज आउट, मैं इतना ज्यादा टैक्टिक्स में अभी डीप नहीं गया हूँ क्योंकि मुझे अभी भी देखना है हाउ वी एक्चुअली बिगिन एंड डू वी स्टिक टू दैट कंटिन्यूटी और एक अंडरस्टैंडिंग बिटवीन से गिलक्रिस्ट एंड दिसासी, हाउ विल इट बी, यू नो दैट वो इंटरेस्टिंग है, और इन द एयर आवर दे, क्योंकि मुझे लगता है दिसासी विल बी वेरी क्रूशियल। काइस्टेडो दिसासी, मुझे लगता है काइस्टेडो दिसासी कॉलवेल और गुस्तो को हेल्प करना है व्हेन इट कम्स टू दोस लॉन्ग बॉल्स एंड क्रॉसेस, ठीक है। लेट्स सी हाउ इट गोज। लेकिन भाई एफए कप का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर तो बोल रहा है गिलक्रिस्ट राइट बैक एंड गुस्टो लेफ्ट बैक, जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था देखते हैं अगर वैसा है तब तो गिलक्रिस्ट शुड हेल्प इन द क्रॉसेस एंड गुस्टो एंड कॉलवेल एंड दिसासी आर क्रूशियल इन हेडिंग बॉल्स आउट। बैकस्ट्रॉम, हाँ भाई फीफा में खिला दिया उसको कोई नहीं। हाँ ये एक्चुअली बाकी कंपटीशन में भी होता था, बट कहीं ना कहीं एफए कप इज द ट्रेडिशनल यू नो ट्रॉफी, हाँ दे डोंट वांट टू चेंज मच, सो आई गेट दैट टू सम एक्सटेंट। बहुत ज्यादा है मैचेस आई नो, बट मेरा क्या जाता है यार अगर प्लेयर्स है। किसमें चल रहा है गेम भाई? सोनी लिव पर देख रहा हूं मैं, सोनी लिव गाइस, एनीवन वाचिंग फ्रॉम इंडिया, वी आर डूइंग फ्रॉम सोनी लिव। वेरी शॉक दैट अभी तक 100 लाइक्स नहीं। देखो भाई न्यू ईयर का रेजोल्यूशन है, इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं सेहत के लिए। सब लोग 1 घंटा 10 मिनट से हम लाइव है, वी हैव लिटरली कवर्ड ऑल द ट्रांसफर स्टोरीज पॉसिबल, ठीक है। साथ साथ में हमने ये भी डिस्कस किया लॉट ऑफ इट अबाउट द टैक्टिक लाइनअप एंड चेल्सी का थोड़ा बहुत कीप सेल लोन, और कंटिन्यूसली देयर हैव बीन ऑन एवरेज 75 पीपल वाचिंग, तो कम से कम डबल 150 लाइक्स तो होने चाहिए इस स्ट्रीम पर, 150 लाइक्स होने चाहिए राइट नाउ। एनीवन हु डज नॉट वांट टू लाइक द स्ट्रीम, डायरेक्टली मैं बोलता हूँ फीडबैक दीजिए, डीएम करिए मुझे बिंदास, ठीक है। आप बोलिए व्हाट इज मिसिंग, लेकिन बिग अप टू एवरीवन इज हियर नो मैटर व्हाट। सनडरलैंड वाला मैच देखा यार, थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग था, आई वाज एक्सपेक्टिंग थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा और इन द लास्ट हुआ था क्योंकि न्यूकासल वाज सेलिब्रेटिंग और अदर टेकिंग फोटोज नियर ऑन द पिच एंड ऑल दैट, लेकिन ठीक है वो तो होना ही था। लेकिन 3-0 बोल रहे देवेश, आप लोग भी बोलिएगा भाई मैच शुरू हो रहा है, किक ऑफ हो जाए। चेल्सी 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 चेल्सी, कम ऑन, नया टूर्नामेंट ब्रो, वी हैव टू टेक इट सीरियसली, कम ऑन, वी डोंट हैव यूरोप एंड बेस्ट के सिनेरियो हो गया अगर दोनों कप कॉम्पिटिशन वी आर गोइंग डीप, दैट इज व्हाट वी नीड। थोड़ा सा हुआ था गॉर्डन वाला, हाँ थोड़ा बहुत हुआ था भाई। यहाँ पर शुरू कर दिया मैंने टाइम स्टैम्प,
कैसे शुरू करें? चेल्सी मीनवाइल, yes, Gusto is playing at left back as we had anticipated, guys. Caicedo, Enzo midfield में है with Palmer playing just in front. Yes, I did cover that as well, मेरे भाई Abhishek. I think you joined late. लेकिन nice to see him score as well as get an assist, by the way. Abhishek, he did both, by the way, if I'm not wrong. भाई अगर ऐसा हो तो मजा आ जाए. मतलब इमेजिन एल्फी गिलक्रिस्ट को कॉलवेल, गैलेगर ऑन द बेंच एंड ब्रोजा स्कोरिंग, मैन. फॉर एकेडमी पीपल, मैन. जस्ट थिंक अबाउट, दैट विल बी क्रेजी, नो? अभी तो चेल्सी रख रही है पूरा पोजीशन एज एंटिसिपेटेड अगेंस्ट प्रेस्टन, बट वही है, लो ब्लॉक को हम बीट करना है, इसलिए एंजो इज क्रूशियल आज. आई एम हैप्पी दैट एंजो इज स्टार्टिंग आफ्टर अ व्हाइल. लेकिन एंजो कॉलविल विल बी इंपॉर्टेंट आज टू डिस्ट्रीब्यूट एंड पामर फॉर हिज थ्रू बॉल्स ओवर द टॉप, प्लस हिज प्रेसिंग, क्योंकि गैलेगर प्रेस करता है, तो कैन बी एबल टू प्रेस एंड ब्रेक दोज काउंटर अटैक्स ऑफ प्रेस्टन. गुस्टो यूजिंग लेफ्ट फुट भाई एट लेफ्ट बैक पोजीशन. भाई सब लोग ड्रॉप क्यों हो जाते हैं मैच शुरू होते हैं? हम लोग भी मैच देखते हैं भाई, हम घंटा नहीं जानते भाई, साथ में देखते हैं फ्रेंड्स. इट्स अ वीकेंड मैच, वॉच अलोंग ब्रो. इट्स अ वॉच अलोंग गाइस, एवरीवन, या बिग अप टू ऑल. लेकिन यहाँ पर गुस्टो हैज नॉट बीन एबल टू कीप द बॉल, रादर उसकी गलती नहीं थी. एंड कॉलविल हैज सेव्ड चेल्सीज एस जस्ट अबाउट फ्रॉम सेंटर बैक, और खेल दिया अगेंस्ट प्रेस्टन प्लेयर फॉर अ थ्रो इन. भाई समझदार का इशारा काफी है. इफ आई स्पीक आई विल बी इन ट्रबल, गौरव. क्या फाइनल ड्रॉ होता है तो वो भी रिप्ले होता है? नहीं, फाइनल में नहीं होता यार. फाइनल में एक्स्ट्रा टाइम एंड पेनल्टीज होते हैं. Oh, yes, probably. Oh, Gusto, nice, bro. Nice back heel. Gusto wins it back. Chalo, nice. Gusto, Caicedo playing left central midfielder, guys. Enzo is playing right side of him. थोड़ा बहुत सरप्राइजिंग है. So Enzo usually generally likes to play left central midfielder. ये कौन बोला भाई? Kudus is brilliant, by the way, but come on. Too much. अभिषेक बोल रहा लाइम जूस. कॉलवेल भाई बहुत ही ज्यादा स्लो बिल्डअप नहीं हो रहा चेल्सी का. थोड़ा सा क्विक पासिंग देखना चाहेंगे आप लोग? इट्स अ लिटिल बिट टू स्लो इन माय ओपिनियन, कंसीडरिंग वी आर एट स्टैमफोर्ड ब्रिज एंड हमें पता है भाई एवरी ग्रास. गिलक्रिस्ट गेटिंग द बॉल. भाई गिलक्रिस्ट, नाइस टू सी हिम स्टार्ट, मैन. नाइस टू सी हिम स्टार्ट. Caicedo now going right central midfielder, or rather dropping back, almost a 4-3-3. Enzo playing as left 8 and Palmer playing as right 8. Enzo को foul किया गया और यहाँ पर we have got a free kick. Remember, Enzo has not started games by for a while now, same as Mudryk. So nice to see both of them starting आज. 1-2 खेलने की कोशिश स्टर्लिंग ने और पामर ने डिसअपॉइंट कर दिया वापस से खेलते हुए, जस्ट टू गिलक्रिस्ट. और यहाँ पर पामर टेकिंग राइट विंग, स्टर्लिंग ट्राइंग टू टर्न. गुड प्रेसिंग बाय प्रेस्टन, ऑल्दो केप्ट द बॉल एंजो नाइसली. लकीली थोड़ा बहुत भी गुस्तो को मिलता है यहाँ पर. इन्वर्टेड फुल बैक फ्रॉम लेफ्ट साइड. गुस्तो क्या करेगा? अरे एंजो बैक हील खेला है, मुड्रिक डिड नॉट रीड दैट. इट वाज अ बिट टू स्ट्रॉन्ग ऑफ अ बैक हील. वाओ, दैट्स एन इंटरेस्टिंग मोमेंट फ्रॉम एंजो. लेकिन यहाँ पर काउंटर हो सकता है अपन, क्योंकि गुस्तो इज आउट ऑफ पोजीशन गाइस. Caicedo luckily gets a touch in, falls to Palmer. Bad ball by Preston. Preston missed the chance in my opinion. Caicedo को मिलता है ball from Palmer, back gives it to Enzo, who drops back from forward line to midfield. यहाँ पर Enzo खेलता है Mudryk को, जो inverted forward खेल रहा है अभी right now. From the left hand side, गिलक्रिस्ट को मिलता है बॉल वापस राइट बैक. थोड़ा बहुत इन्वर्टेड वापस खेल रहा है. स्टर्लिंग इज टचिंग द विंग गाइस. स्टर्लिंग आपको विड दे रहा है राइट साइड में, इंटरेस्टिंगली. चलो लेट्स होप फॉर दैट. ऋतिक, आपका मैनचेस्टर यूनाइटेड का मंडे है ना, विगन, अवे टू विगन इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओह, नाइस टू नो. अभिषेक, आर यू कमिंग टू बैंगलोर और एनीवेयर साउथ इंडिया में? बोलिएगा यार, कहाँ पर हो? आई एम स्विमिंग अ गुड ओडिशा. वेयर आर यू गोइंग? Let me know, bro. Let me know your itinerary. Let us know if I message kariye in the EBFC members group. Big up to all the members, by the way, and everyone here who is a subscriber. If you're not subscribed, consider subscribing. Again, a lot of people dropping, assuming that is only a transfer stream. No, it was a watch along as well. लेकिन हम लोग पूरा कमेंट्री देते हैं. राइट साइड में स्टर्लिंग को आता है बॉल. स्टर्लिंग फॉलिंग एंड येलो कार्ड नहीं मिला भाई. फॉर अ चेंज, स्टर्लिंग डजंट गेट अ येलो कार्ड फॉर डाइविंग.
आई थिंक इट वाज, विल बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही वीक चैलेंज था और कहीं ना कहीं स्टर्लिंग फेल डाउन वेरी इजीली. स्टर्लिंग, दैट इज वेयर ही पिसेस मी ऑफ ब्रो. Unnecessary, unnecessary. Miss Elena in the house. OG in the house. Miss Elena, big up to you. Big up to you. Sterling, by the way, that was a dive just before the line. Unnecessary dive by Sterling. टेक्निकली आप बोल सकते हो टच किया, बट कम ऑन ब्रो, चैंपियनशिप साइड के साथ आप ऐसे गिर रहे हो. शेम ऑन यू स्टर्लिंग मैन, एज मच एज यूर अ चेल्सी प्लेयर. लेकिन मिस एलिना, बिग अप, बिग अप. Miss Elena, special shout out. She used to do a lot of content for Chelsea women as well as women's football generally. And I know you've been off and on, Miss Elena, but shout out to you 100%. An OG of the channel, one of the first subscribers of the channel in the first 300 subscribers is what I remember, if I remember right. Again, very great to see you. Always a fan channel for all to see for a reason. Death Killer in the house as well. Nice, nice. चलो यहाँ पर प्रेसिंग हो रही है पामर द्वारा. ब्रोजा अपना सेंटर फॉर्ड आराम से खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है बॉल के लिए. ब्रोजा हैज टू गिव मोर देन 100% टुडे गाइस. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर हिम, वेरी इंपॉर्टेंट मंथ. फ्यूचर ऑफ चेल्सी विल बी डिटरमिन्ड ऑफ ब्रोजा इस मंथ में. क्लियर है, इज क्लियर एज डे. यहाँ पर चेल्सी अगेन बिल्डिंग फ्रॉम द बैक स्लोली फॉर व्हाटएवर रीजन. गुस्तो लेफ्ट बैक खेल रहा है अगेन आउट ऑफ पोजीशन. दैट्स पॉच बॉल फॉर यू. ऑल्दो पॉच बॉल, हम तो अलग सोचे थे कुछ. एंजो को प्रेस किया जा रहा है बाय कपल ऑफ प्रेस्टन प्लेयर्स एंड ही विंस द फ्री किक. Yep, Sterling, there is something wrong, bro. Malab, what was he expecting? A championship side to actually not come in with a challenge in that moment? Come on. I know he was trying to win, लेकिन आप box के अंदर भी नहीं थे यार. That's why I'm saying Sterling, nice run. Sterling cross आया, but cleared by Preston for a throw into Chelsea, guys. कौन करेगा थ्रो इन फ्रॉम राइट साइड? इंटरेस्टिंग रहेगा. कौन, गिलक्रिस्ट करेगा थ्रो राइट साइड से? Who's going to throw from the right hand side? गिलक्रिस्ट कर रहा है. He's playing like a proper right back only then. Got a very good point. See, that is the reason people wanted अपना Chelsea का fan base ना. We wanted some people wanted Casadei back in Chelsea and Andre Santos to be kept at Chelsea. क्योंकि उनके पास थोड़ा सा एबिलिटी है गौरव, लेकिन आई बिलीव अभी के लिए एंजो इज दैट मैन. काइसेडो को भी एक्चुअली ही हैज दैट एबिलिटी. ही इज नॉट दैट नॉन क्रिएटिव इन माय ओपिनियन. लेकिन विल चेल्सी और पॉच यूज हिम लाइक दैट? आई डोंट नो. Paddy Pranjal, come on भाई, let's hope for that. Let's hope for that. आप मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हो ना, जहां तक मुझे याद है. Paddy Pranjal, correct me if I'm wrong. स्टर्लिंग को मिलता है बॉल राइट हैंड साइड. भाई प्रेस्टन आर कीपिंग गुड स्ट्रक्चर राइट नाउ. 3-1 हो रहा है, बट पामर हेल्प करता है, लेकिन हिज बॉल इज शॉर्ट एंड इजीली टेकन बाय प्रेस्टन. और प्रेस्टन विल काउंटर नाउ. कैन वी ब्लॉक दैट काउंटर? यहाँ पर हमारे मिडफील्डर्स आर की गाइस. काइसेडो को हमने बोला था बहुत की रोल आज, कंसिडरिंग गैलेगर नहीं है. गैलेगर इज ऑन द बेंच दो. या लाविया इज इंजर्ड. दैट्स अ बैड न्यूज. यहाँ पर वी माइट विन. नहीं, प्रेस्टन हैज केप्ट द बॉल बैक. मुड्रिक कैन नॉट विन द बॉल बैक. गुस्तो विली, नहीं, प्रेस्टन कीपिंग द बॉल गाइस फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स. इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन आफ्टर रिटर्न तो, लेकिन प्रॉब्लम है काफी लोग इंजर्ड है राइट नाउ. एंड ऑफ कोर्स लाविया, उगोचुकू एंड कार्नी चुकुमेका are three of the midfielders missing. Lavia also, he has decent strength as well as ability to play out. लेकिन problem is always injured. यहाँ पर very well done by Gilchrist. Hope you हो जा भाई, keeping the ball inside play. Wow, nice one, nice one. Nice one from Gilchrist. I like that from the right side. Although he's not a traditional right back though, although very young. Gusto with a run. Gusto bhai easily beaten by Preston player. Come on, Gusto. Should be doing better. Gusto is a proper right back. वो खेल सकता है उस side. Come on, play Collier is left back. नहीं करेगा Poch. लेकिन Poch दो जन को out of position खेलेगा. That is Poch for you. Instead of playing just one person out of position. On the person who won the ball, Gusto के against, he has been injured. Looks like it. Preston का. नहीं यार, कहाँ याया टोरे, कहाँ काइसेडो ब्रो. नो नो नो, दिस इज अ बिट टू मच. एज मच एज आई लव माय चेल्सी प्लेयर्स ब्रो, कहाँ याया टोरे, कहाँ काइसेडो ब्रो. काइसेडो हैज एन एबिलिटी टू प्ले द बॉल एंड डिस्ट्रीब्यूट द बॉल एब्सोल्युटली. याया टोरे वाज अ रोल्स रॉयस यार. मतलब याया टोरे वाज अ रोल्स रॉयस यार. मतलब अगेन he was a, people who do not know, Yaya Toure was a center back who became a CDM and then he became a proper central midfielder. बुलाओ कैसे रहे सैंटोस को, बुलाओ. गौरव बोल रहे हैं.
अभिषेक अभिषेक ने सच्चाई गुलवा दिया चैट पर। मुझे बोलने को मन कर रहा था अभिषेक, लेकिन ठीक है, गौरव अपने भाई है मेरे भाई, मैं भी मजाक कर रहे थे, कोई नहीं। कॉलवे सेंटर बैक, यस ब्रो, लेकिन गुस्ता लेफ्ट बैक। समथिंग कुछ तो गलत है चेल्सी के बैक लाइन ऑलवेज। गिलक्रिस्ट राइट बैक, तो वी हैव टू प्लेयर्स स्टिल प्लेइंग आउट ऑफ पोजीशन कृष्णा। हाँ मतलब मिड ब्लॉक बोल दो, बट बेसिकली स्पीकिंग दे आर नॉट कीपिंग अ वेरी हाई लाइन, या तो चांसेस कम मिलेंगे। गिलक्रिस्ट एकेडमी ग्रेजुएट, इनफैक्ट वो एकेडमी में हर एक लेवल में क्या क्रॉस आया भाई प्रेस्टन का। गुस्तो बाउंस मत होने दिया करो यार, इंग्लिश फुटबॉल का फर्स्ट रूल है, व्हेन द क्रॉस कम्स डू नॉट लेट द बॉल बाउंस। इक्वेडोरियन मैकटोमिने, नहीं उस मैकटोमिने तो बेटर है 100%, लेकिन 115 मिलियन भी नहीं है। वेल वन, अरे वेल, कैसेडो ने देख लिया शिखर का कमेंट, और कैसेडो विंस द बॉल बैक। या टोरे वो सुपर ब्रो। Caicedo is more like a central defensive midfielder who can play as a central midfielder. मतलब Yaya Toure was more, he became eventually a central midfielder who can play as a CDM. That's the difference. And physicality, physique, the way of playing बहुत different है यार. Yeah, मतलब among that best African of all time, तो I would like to debate that, but he's right up there. He's right up there in the top five, I would say. JJ Okocha, Didier Drogba, Kanu, for people who do not know, is right up there in the best African of all time. Salah will eventually get there as well, in my opinion. अरे भाई फुरकान, क्या हाल है? आपके खुशी में शरीक होने के लिए भाई, अभी तक तो खुशी नहीं है, नील है टेक्निकली, जब तक नील है तब तो खुशी नहीं है, लेकिन वी आर ऑलवेज हैप्पी वाचिंग चेल्सी, आरंट वी? मोर और लेस। गुस्ता का ओवर द टॉप बॉल आया है, बट वेल डिफेंडेड बाय प्रेस्टन, ओनली फॉर गुस्टो टू गेट इट बैक। गुस्टो प्लेज इट अगेन, नाउ मुड्रिक के साथ 1-2 किया अच्छे से। गुस्टो का लेफ्ट फुटेड क्रॉस आया, बट नो वन इन द बॉक्स। ब्रोजा के साथ कोई सपोर्ट होना चाहिए था इन द बॉक्स। स्टर्लिंग शुड हैव बीन इन द फार पोस्ट, बट ही वाज मिसिंग। Sterling gets the ball back on the far post from Palmer, tries to beat his man unsuccessfully though. Preston easily beats Sterling. Sterling fouls the Preston player, and yeah, Preston को दे दिया Raheem Sterling ने ball. Midfielder, okay, sorry. African midfielder, हाँ, African midfielder में he's right up there, absolutely. Yeah, you can easily get that. Sorry, my bad. Again, अगर माइकल एसियन का इंजरीज नहीं होते तो आई वुड पुट माइकल एसियन देयर, बट हाँ, याया टोरे हैज टू बी देयर एब्सोल्युटली। आई थिंक आई एग्री दैट सेंट्रल मिडफील्डर्स में, मतलब जो जेजे ओकोचा को आप व्हाट वुड यू पुट? यू आई पुट हिम मोर लाइक एन अटैकिंग मिडफील्डर स्लैश विंगर। यप। कैसेडो हमारे चैट को देख रहा है गाइस, कैसेडो विनिंग द बॉल अगेन। या लाविया, ही इज गॉट मिनट्स दो, पहला स्टार्ट नहीं मिला है। आर्दा गुलर को मिनट्स मिला है क्या अभी तक? मिला है ना, लेकिन स्टार्ट नहीं मिला उसको। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, व्हाई इज गुस्तो प्लेइंग लेफ्ट बैक व्हेन कॉलविल कुड प्ले एंड गुस्तो कुड प्ले राइट बैक एंड गिलक्रिस्ट कुड प्ले सेंटर बैक, बट ठीक है, लॉन्ग बॉल्स ऑफ प्रेस्टन ओल्ड स्कूल है थोड़ा, तो गिलक्रिस्ट को सेंटर बैक में डालना, बहुत प्रेशर डालना होगा। यहाँ पर मिला है एंजो को बॉल मिडफील्ड में, गिविंग बैक काइसेडो, हु गिव्स इट टू कॉलवेल। कॉलवेल साइडवेज पासिंग शुरू वापस से। अच्छा, डेब्यू भी नहीं हुआ क्या? मुझे ऐसा क्या, वाज इट अ फ्रेंडली गेम? आई हैव सीन आर्दा गुलर प्ले डॉन द रियल मैड्रिड जर्सी एंड प्ले यार। फ्रेंडली गेम था, प्री सीजन था क्या? प्रीटी श्योर मैंने देखा यार आर्दा गुलर को। वेयर वाज इट? आई एम प्रीटी श्योर ही हैज प्लेड, बट मे बी फ्रेंडली होगा, पता नहीं। स्टार्ट नहीं मिला वो तो पक्की बात है, लेकिन या आकाश, जेजे ओकाचा वुड बी अ कैम और अ विंगर, एग्जैक्टली। ट्रेनिंग सेशन क्लिप्स। कुछ भी। बोल रहे आपने ट्रेनिंग सेशन में देखा होगा आर्दा गुलर को खाली। यहाँ पर काउंटर आ रहा है भाई प्रेस्टन का। देखते हैं गिलक्रिस्ट हाउ डज ही डू इन दिस मोमेंट अगेंस्ट गिलक्रिस्ट है, लेकिन प्रेस्टन पुटिंग इट बैक, कीपिंग द बॉल दो। प्लेयर प्रेजेंटेशन।
भाई फ्रेंडली गेम तो 100% देखा था मैंने, प्रिटी श्योर नहीं, पता नहीं, मे बी बेंच पर देखा होगा। नॉट भाई, कॉलविल हैज बीन ड्रैग्ड लेफ्ट बैक पोजीशन, अभी एक सेंटर बैक के साथ खेल रही चेल्सी। पेट्रोविच ट्राइज टू डिस्ट्रीब्यूट द बॉल बट अनसक्सेसफुली, एंड द प्रेशर बीइंग पुट बाय प्रेस्टन, यहाँ पर इन मिडफील्ड है उनके पास बॉल, लेकिन और लॉट ऑफ चेल्सी प्लेयर्स बिहाइंड द बॉल, होपफुली हम बीट नहीं हो। यहाँ पर राइट साइड आई चैनल में डाला है बॉल, यहाँ पर क्रॉस आएगा 100%, वो भाई नो, एक सिंपल क्रॉस था, चेल्सी आर नॉट एबल टू डिफेंड इट, इवेंचुअली फॉल्स टू अस। Caicedo being pressed by Preston, pressed by Preston. Caicedo, bhai, where are you going, mere bhai? At least he's won a throw in. Acha, he warmed up against Braga. Maybe that game itself. Poch needs a creative work from central midfielders. Bhai, again, very crucial आज, very crucial है. Caicedo and Enzo का role बहुत important है with the full backs. Those four who kind of join the midfield eventually. Furkan, it's a क्या बोलते हैं, इनएविटेबल दैट वी गेट अ गुड कप रन यार। इमेजिन अगर आज बोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर बाई चांस चेल्सी आज हार जाती है एट होम टू प्रेस्टन, मैन भाई, ऑल हेल विल ब्रेक लूज यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमारे पास कप रन है ही नहीं यार, अपार्ट फ्रॉम द कैराबाओ कप, दैट इज आवर ओनली होप। Oh, nice pressing from Chelsea. Gilchrist OP man, nicely won by Gilchrist. यहाँ पर स्टर्लिंग ने दिया गिलक्रिस्ट को, गिलक्रिस्ट क्रॉस, गोल होगा। कम ऑन मैन, स्टर्लिंग शुड डू बेटर मैन, कम ऑन गाइस, नाइस 1-2, लेकिन गिलक्रिस्ट हो जाए इन द चैट यार। गिलक्रिस्ट वन द बॉल, एक अच्छा काउंटर है चेल्सी द्वारा, ऑल्दो एट होम अगेंस्ट प्रेस्टन, लेकिन स्टर्लिंग शुड डू बेटर फ्रॉम हिज लेफ्ट फुट, कहीं ना कहीं सेकंड टच आया बस, ही शुड हैव टेकन अ गुड शॉट। Just that I thought Pep Klopp Tuchel is the next big thing in Premier League. ये क्या? Gilchrist OP यार, Gilchrist has had a good start. I must say, Gilchrist has had a good start. बिल्कुल अच्छा किया है, काफी अच्छा किया है। रिमेंबर ही इज एक्चुअली अ सेंटर बैक, काफी यंग है एट दैट एज, इट्स नॉट फेयर टू से विच पोजीशन अ प्लेयर प्लेज, लेकिन he more plays a center back he's a center back who plays right back। और ये शॉट आया, पेट्रोविच सेव गाइस, व्हाट इज दिस भाई, अक्रॉस द मिडफील्ड आती है एक बॉल और मिस कर देते हैं, और डिफेंस इज मिसिंग, व्हाट इज दिस रबिश, इन द एयर, गुस्तो बीइंग बीटन, come on man, Colwell nowhere close to the forward of Preston, come on, we should do better। अच्छा शॉट नहीं था, लेकिन इट कुड हैव बीन अ बेटर शॉट, नो, इट वुड हैव ट्रबल्ड। यहाँ पर मुड्रिक और गुस्तो का 1-2 होने वाला है अभी, गुस्तो कीपिंग द बॉल, गिव्स इट बैक टू मिडफील्ड। भाई लेफ्ट साइड में मुड्रिक इज गिविंग वेट, राइट साइड में स्टर्लिंग इज गिविंग वेट, बोथ द फुल बैक्स आर ऑलमोस्ट लाइक इन्वर्टेड फुल बैक्स, ऑल्दो एक दो बार हुआ है जब गिलक्रिस्ट ने अच्छा रन मारा है ऑन द राइट हैंड साइड भी। गुस्तो थोड़ा बहुत अंडरवेल्म किया, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ही हैज प्लेड 1-2s विद मुड्रिक, लेकिन कहीं ना कहीं इतना इफेक्टिव नहीं लगा है, ऑल्दो अच्छा किया था लास्ट टाइम ही प्लेड देयर, बट आई वुड कंसीडर, अगर निल रहता हाफ टाइम तक, आई वुड कंसीडर प्लेइंग गुस्तो एट राइट बैक, although Gilchrist has played well till now, and Colwell played at left back because he's being beaten in the air। Colwell का अच्छा रन आया from center back यहाँ पर, trying to play in Broja जो hardly touch किया बॉल को, यहाँ पर Mudryk trying to play a 1-2 with Sterling who has to be forced coming back, Palmer giving the ball, यहाँ पर Broja tries to win the ball back but he loses the ball very well, भाई पैर डाला एंजो ने बहुत अच्छा, और यहाँ पर शॉट आया, और यहाँ पर एक फाइनली एक सेव हमने एक लिया भाई उनके गोलकीपर से, स्टर्लिंग विद अ शॉट, and this time a good shot though, high tha on the left hand corner of the goal, but very well done by Enzo Fernandez, dangerous tackle but worth it bro, very well done by Enzo Fernandez in my opinion। wow, गोल किक का नहीं, अच्छा कॉर्नर है मेरे भाई, कॉर्नर है, कौन लेगा कॉर्नर, पामर ले रहा है कॉर्नर, इंटरेस्टिंगली रिमेंबर गैलेगर नहीं है, तो आई वुड हैव एंटिसिपेटेड जनरली मुड्रिक लेता है कॉर्नर अगर गैलेगर नहीं रहता है, या एंजो लेता है, इंटरेस्टिंगली कोल पामर लिया कॉर्नर, और बैड कॉर्नर नियर पोस्ट इजीली डिफेंडेड, लेकिन मिडफील्ड में मुड्रिक हैज ड्रॉप बैक, नाउ मुड्रिक हैज द बॉल, गिव्स इट टू गिलक्रिस्ट अपने राइट बैक, Caicedo comes to his position normal, so does Colwell,
भाई थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ना थोड़ा स्क्वाड रोटेशन में, लेकिन कहीं ना कहीं मिड ब्लॉक और लो ब्लॉक हम स्ट्रगल करते हैं. ब्रोजा विद द रन गाइस, नाइस चैनल रन बाय ब्रोजा. यहाँ पर ब्रोजा ट्राइंग टू कीप द बॉल, लेकिन हाँ ही विंस अ थ्रो इन. ब्रोजा की हेडिंग एबिलिटी कैसी है? इट्स बेटर देन जैक्सन, बट आई वुड नॉट से इट्स ग्रेट. इट्स गुड, बट इट्स फार मोर इम्प्रूवमेंट नीडेड वाला केस. हमारे क्लब में कोई सेंटर फॉरवर्ड है ही नहीं भाई जो अच्छा हेडर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अच्छा हेडर सच में. एंकुंगू बेंच पर भी नहीं, दैट्स द सैडेस्ट बिट. We need someone who can kind of get in behind, make those, that classy 1 second touch or run in the forward line. Oh, nice ball यहाँ पर, brilliant goal आना है. Come on, come on, what a miss यार. Brilliant ball by Enzo to Cole Palmer over the top, लेकिन Cole Palmer misses. Difficult था. First अच्छा किया to kind of keep the ball, but great run as well. And what a vision by Enzo Fernandez. Enzo Fernandez और कर भाई और, लेकिन that should have been a goal. That should have been a goal. Come on. आई नो निकोलस जैक्सन, आप बोलोगे भाई डबल स्टैंडर्ड है, निकोलस जैक्सन करता तो आप गाली देते. कोल पामर के लिए नहीं कर रहे हो, बट आई थिंक द गोलकीपर काइंड ऑफ डिड डिसेंटली वहां पर. सिट्टर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन दैट शुड हैव बीन अ गोल. दैट्स आल्सो देयर. एब्सोल्युटली, आइडियली दैट शुड हैव बीन अ गोल, but that's a chance miss 100%. Enzo started the game well, in my opinion. Again, ball won by him only for Poch, Preston to get it back. Cole Palmer chance, guys. Technically a miss, but in my opinion, the goalkeeper also did well. Kahin na kahin he kept his stance. Petrovic keeps the ball, gives it to Colwell. My observation till now for Poch is good in chance creation, above average finishing, sometime unstable defense and keeping. Okay. Cole Palmer ही खेल रहा है. Cole Palmer is playing the roaming role, Krishna. Sterling is giving a width on the right hand side. Mudryk is giving a width on the left hand side, with Broja playing center forward. Gandhi finishing, yeah, but I think if you actually carefully notice, it was not as easy as a chance for Nicholas Jackson 2 weeks back. लेकिन हाँ, at this level you expect that to go 100%. लेना होगा 100%. Against Preston at home, जब वो हम actually we are struggling to create those chances. Although Sterling ने has hit the, has got a shot on target 2 बार already. लेकिन ये वाला was a proper first chance. यहाँ पर we have lost the ball for a throw in to Preston, guys. भाई 23 मिनट्स हो गए, क्या कर रही है भाई चेल्सी. द लॉन्गर द गेम गोज एंड द मोर चांसेस ऑफ इट गोइंग टू रीप्ले. भाई प्रेस्टन में अवे गेम में इट्स नॉट इजी विद दैट एटमॉस्फेयर इन चैंपियनशिप क्लब, मैन. knowing Chelsea though, we'll probably concede as well. It was a sitter बोल रहे हार्दिक. पामर हमारा स्टार बॉय था. दैट आई वाज सैड व्हेन वी सोल्ड हिम. वो एक सेकंड शॉट आ सकता भाई प्रेस्टन का. Caicedo, nice pressing by Caicedo and won the ball back. Gusto and Caicedo partnership doing well. क्यों भाई आएगा ना. एफए कप का गेम आप मंडे नाइट है. लॉन्ग बॉल प्लेड बाय एंजो दिस टाइम, टू लॉन्ग. कोई नहीं, एंजो को खेलना चाहिए. ही शुड ट्राई ऑल दोस बॉल्स ओवर द टॉप मोर. आई थिंक एंजो इज की मेरे भाई पुदन. एंजो इज की. और कहीं ना कहीं कॉलविल ना शुड ऑल्सो ट्राई एंड प्ले डायगोनल बॉल्स. एंड ब्रोजा नीड्स टू बी मोर फिजिकल. ब्रोजा इज नॉट मूविंग इनफ इन माय ओपिनियन. अरे सॉरी क्या यार, आपका व्यू पॉइंट है. डेफिनेटली गंदी फिनिशिंग है. चेल्सी का बार इतना लो हो गया ना इस सीजन में, इस लास्ट कैलेंडर ईयर में. भाई कहीं ना कहीं मैं बोल नहीं रहा हूँ, जनरली मैं गाली देता 100%. Disasi giving a needless free kick away, man, to Preston. देखते हैं यार, रिप्ले होगा एग्जैक्टली. अबे पहले ही हार जाएंगे भाई. एग्जैक्टली चेल्सी डोंट स्कोर अंटिल द 70 मिनट, आइदर चेल्सी गो आउट और रिप्ले. बाप रे भाई, सिटी का बहुत सारे प्लेयर्स के साथ है. पीपल हु डू नॉट नो, एलेक्स गार्सिया जो खेल रहा है अभी जिरोना के लिए, ही हिम. ब्राहिम डियाज ब्रो, पीपल नो, ओजीज ऑफ द चैनल नो भाई. एसी मिलान सॉफ्ट कॉर्नर भाई. ब्राहिम डियाज, मैं हमेशा बोलता हूँ रियल मैड्रिड में वो इज गेटिंग वेस्टेड, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू रियल मैड्रिड.
Brahim Diaz भाई, he's a City product man, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो, he was signed very young at City if I'm not wrong. तो काफी लोग हैं सिटी के. I think the Poch needs to ask Colville to be a little bit more ambitious for his long balls, diagonal balls. Nathan in the house, guys. Shout out to Sports and Nathan. Nathan, what's up? How's the new year been? Enzo again, Hollywood ball over the top. Mudrik, will he be able to keep it? No, it's long. But कोई नहीं, Enzo, keep trying it, guys. I like that. Enzo का एक जो चांस क्रिएट हुआ था पामर के लिए, which should have been ideally a goal. भाई वहां पर एंजो का ही बॉल था. रिमेंबर एंजो हैज दैट एबिलिटी. एंजो फर्नांडिस and I believe even Levi Colville from center back has that ability to play those long ball. I think वो हमें continue करना चाहिए with Palmer also being able to do that थोड़ा बहुत through balls in the final third. Again, that is where you need to be able to get in behind. That's Mudrik's job, and you need to see those runs, Enzo and Colville. Remember, I've told you Brahim Diaz and Cole Palmer is the guy you should sign. बिल्कुल बिल्कुल Pujan, I remember exactly भाई. समर में हमने बात की थी बहुत. Pep Guardiola's brother is the owner of Girona. Yes, Pierre Guardiola ना क्या? अरे भाई एक second. Oh no, Preston is getting in behind. भाई Preston has got in behind, got a shot, and Petrovic ने बचा लिया है. अगर कोई भी और भाई ये जो स्ट्राइकर है ना उनका जो भी है, not I'm not going to claim कि उसको जानता हूँ भाई, प्रेस्टन का प्लेयर looks like मित्रोविच. थोड़ा और बढ़िया स्ट्राइक होता ना, you never know. But Enzo lost the ball in the air. Colville couldn't read and run in behind. Bad moment by Chelsea, bro. Enzo and Colville should be doing better. Where was the left back? Where was the Gusto? Wow. A young Poch, yes. No, right now I'm not too very sure. Like, Tom Cruise could very young nahi hai, although he's very fit. Jason Denayer. Yeah. Belgian. Yes, absolutely. Lavia bhi hai, absolutely. Guaranteed nahi hai, Shikhar. I think it's depends on which clubs win. यहाँ पर over the top bola है. Sterling का cross. Goal आएगा. No. Enzo header easily caught by the Preston goalkeeper. भाई technically shot on target है. But किसका बॉल था भाई? पामर का बॉल था ओवर द टॉप. रिमेंबर 3 जन जो ओवर द टॉप बॉल खेल सकते हैं ऐसे अपने हैं. एंजो फर्नांडिस, कोल पामर और लेवाई कॉलविल. पामर का बॉल ओवर द टॉप. नाइस वन. आई लाइक दैट. लेट्स हैव मोर ऑफ इट गाइस. वी नीड मोर ऑफ इट. ईथन इन द हाउस. व्हाट्सअप हाउस योर न्यू ईयर बिन मेरे भाई. यहाँ पर एंजो बीइंग चैलेंज्ड बाय 2 प्रेस्टन प्लेयर्स एंड फाइनली विनिंग अ फ्री किक. हार्दिक मैंने आधी घंटा कम से कम बात की इस बारे में, इसलिए वी स्टार्टेड द स्ट्रीम 1 hour बिफोर किक ऑफ. मेरे भाई चेक कर सकते हो. विल कम बैक टू इट थोड़ा बहुत इन हाफ टाइम. ये क्या है? चलो, Chelsea having the ball now. Broja has not been that physical. I'm a little bit disappointed if I'm very honest. थोड़ा expectations high है Broja against the championship side at least. थोड़ा बहुत दिखाना चाहिए यार आपका physicality, movement. Enzo has had a good game though, बोलना चाहूंगा. I like Enzo Gilchrist का गेम अभी तक. स्टर्लिंग का थोड़ा सा मिक्स्ड रहा है. He should have taken his chance better, but I would say mixed game. One unnecessary dive just outside the box. Sterling has not had a very bad game though, but he could be better. लेकिन Caicedo, Enzo, अब Broja takes the ball from Enzo. Broja shot. भाई घंटे का शॉट था भाई. हट टर्न करके टाइम था भाई तेरे पास. कोई तेरे पास पीछे नहीं था. You could have taken a time for that shot or pass, whatever you wanted. Come on, man. Enzo got a Broja in a nice pace, यार. There were 2 people वहां पर वेट कर सकता था Broja for a second, यार. क्या जल्दी थी यार. जल्दबाजी में शॉट मार दिया यार on the turn. भाई Enzo, I know it's early days, but Enzo has that ability. Again, he needs to improve on a lot of things. Pudin, लेकिन he reminds me of Cesc Fabregas more. Mujahid in the house. Bye, Mujahid. What's up? पेप वॉन्ट्स किमिक इन सिटी. भाई पेप का बस चले तो भाई सबको ले ले भाई सिटी में. सॉरी सिटी फैंस, बट सीरियसली ब्रो, आप कोवाचिच को पहले यूज करो ढंग से.
यहाँ पर Gusto giving it to Enzo. Mudrik has not really been inside the game and अभी तक, if I'm honest. Mudrik gets a ball from Gusto. Well done by Gusto in that moment. Mudrik trying to keep the ball but loses the ball. Mudrik should be doing better. Come on. यहाँ पर easily turning Colville, the Preston player, और यहाँ पर Colville falling down like he doesn't exist. Disasi giving the ball away. Furkan भाई शॉर्ट आउट है आपको. यहाँ पर हमने बॉल लूज कर दिया एंड फ्री किक दे दिया. गाइस आई होप येलो कार्ड नहीं मिले चेल्सी के प्लेयर को. किसको मिलेगा? कॉलवेल भाई बैड मैन. कॉलवेल हैज बीन बैड. कॉलवेल क्या भूल गया क्या सेंटर हाफ कैसे होते हैं? बैड मोमेंट बाय कॉलवेल ब्रो. अननेसेसरी गिर गया यार. कम ऑन, वेरी वीक चैलेंज से गिर गया यार. कम ऑन, शुड बी डूइंग बेटर. काइसेरो ने फ्री किक दिया शायद. कॉलिल ओवररेटेड तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने देखा है कॉलिल का गेम यार लास्ट सीजन में. ही डिड ब्रिलियंटली. कम ऑन, देयर वर टाइम्स व्हेन ही वाज ऑसम. क्या होता है ना, मैं बोलता हूँ, अगर आप वीक इन वीक आउट ना आप अपने पोजीशन में नहीं खेलते हो ना तो काइंड ऑफ सबकॉन्शियसली और इन टू माइंड वो आदत गंदी पड़ जाती है. वो है. तो कॉलविल श्योर नहीं है इफ ही हैज टू काइंड ऑफ स्टे बैक एंड एज अ सेंटर बैक और ही हैज टू काइंड ऑफ कवर दैट फुल बैक जहां पर गुस्तो इज आउट ऑफ पोजीशन प्लेइंग एनीवे. तो वो हो जाता है. अगेन मुजाहिद भाई बिग अप टू यू, 9 मंथ्स के मेंबर अपने भाई, वेलकम बैक. पुदिन तो बोल रहे विश सोल्ड. दैट्स अ डिफिकल्ट वन. आई थिंक कॉलवेल, मैं सच में बोलता हूँ, लॉट ऑफ क्लब्स इंटरेस्टेड ब्रो. आई थिंक सोल्ड वाला तो मैं अग्री नहीं करता बिकॉज सेंटर बैक हैव वी गिवन हिम इनफ चांसेस ए सेंटर बैक कंटिन्यूअसली. नो, उसके बाद में बुरा करे तो देन आई कैन अग्री दैट वी सेल हिम. लेकिन जैसे चालोबा का सीन था वैसे मैं बोलता हूँ एंड ही वाज बेटर देन चालोबा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल इन माय ओपिनियन. यहाँ पर गुस्तो लॉस्ट द बॉल. गुस्तो शुड बी डूइंग बेटर. भाई व्हाट रबिश मैन चेल्सी यार. 33 मिनट्स मैन, व्हाट इज दिस? वी आर स्टिल नॉट इन अ लीड एंड इनफैक्ट यहाँ पर काउंटर आ रहा है भाई. गिलक्रिस्ट अगेंस्ट द फॉरवर्ड ऑफ प्रेस्टन और शॉट है यहाँ पर. एंजो इन द मिडल हैज सेव्ड आवर एस. व्हाट रबिश मैन. वेक अप गाइस, वेक अप. गिलक्रिस्ट क्लियर्स द बॉल. स्टर्लिंग हेड्स द बॉल, ग्लांसेस टू ब्रोजा जो पता नहीं क्या कर रहा है यार. अरमांडो ब्रोजा इतना लंबा चौड़ा है भाई, क्या कर रहा है तू? कीप द बॉल इडियट. गुस्तो इज नॉट वर्किंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. अग्री. Ethan, good point. Yeah, Gilchrist has actually done well. Actually, Enzo Fernandez, Gilchrist, to some extent, Caicedo also hasn't had a bad game. सच में बोलूं तो even Sterling, but apart from that, the rest I have to question. Mudrik not been played into the game much. Gusto auto position नहीं लग रहा आज in the gameplay. Colville has been pretty bad, in fact, in a couple of moments. Guys, seriously, man, we are struggling, man. What is this? मतलब आई गेट इट दैट थोड़ा बहुत चेंजेस हुए, बट सीरियसली मैन, इफ गिलक्रिस्ट इज योर बेस्ट प्लेयर यू हैव टू क्वेश्चन द अदर्स. मतलब अगेन पामर इज प्लेइंग, पता नहीं थोड़ा सा हेजिटेंट लग रहा है आज पामर. ब्रोजा शुड बी डूइंग बेटर. ब्रोजा इज एब्सोल्युटली नॉट कन्विंस मी वन बिट यार, वन बिट ब्रोजा कन्विंस नहीं है. टाइगर बेस बिग अप. या डोमिनेटिंग तो नहीं बोलूंगा, इट्स बिट, लेकिन इट्स नॉट लाइक वी आर डोमिनेटिंग इधर. आई अग्री. गौरव का कमेंट्स में अग्री करता हूँ. ब्रोजा हैज बीन डिसअपॉइंटिंग. पामर गिव्स अवे द बॉल ऑलमोस्ट, लेकिन लकीली काइसेडो को मिलता है बॉल. राइट साइड में स्टर्लिंग के पास है. स्टर्लिंग क्या करेगा, 1-2 करने की कोशिश की लेकिन पामर गिव्स इट बैक टू गिलक्रिस्ट. यू नो व्हाट, ओवर द टॉप बॉल वी नीड टू जस्ट हैव मोर ऑफ इट. पामर नाइसली राइट साइड में किया है बॉल, थ्रू बॉल टू स्टर्लिंग. यहाँ पर ब्रोजा इज नोवेयर क्लोज टू द बॉल जब क्रॉस आया है. यहाँ पर कैन वी विन इट? यस, पामर इज वन द बॉल. गिलक्रिस्ट ट्राइज टू कीप इट बॉल लेकिन थ्रो इन मिलता है अपने को फ्रॉम प्रेस्टन. भाई टू बी ऑनेस्ट, पामर शुड हैव स्कोर्ड एज मच एज ब्रोजा हैज बीन रियली नॉट कन्विंसिंग. मैंने बोला है ये वाला, मतलब जो फोर्टनाइट है ना, द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ब्रोजास करियर, सिंपली पुट.
हाँ, Palmer is more comfortable moving internal from the right hand side. By the way, Mudryk also has not done well. I'll be very honest with you. Mudryk should be doing better. Huh? Mudryk should be doing better. A couple of moments में वो lose कर दिया ball unnecessarily. Again, Sterling मैं question नहीं करूँगा. In fact, Sterling has not had a terrible game. I would rather question Palmer, Mudryk, Broja in the final third. Disasi winning the ball gives it back to Petrovic. रॉबर्ट सैंचेज तो ऑलरेडी साइंड है परमानेंटली. रॉबर्ट सैंचेज लोन में नहीं है, 20 ऑड मिलियन में हमने साइन कर लिया. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग गाइस. भाई ब्रोजा अभी टिकट कटा यार, कोई ब्रोजा का टिकट कटाओ यार. भाई कितना लंबा चौड़ा आदमी यार, ही इज नॉट एबल टू कीप द बॉल यार. आई अंडरस्टैंड इज नर्वस, स्टार्ट फॉर चेल्सी इतना रेयर है उसके लिए, आई गेट दैट, बट कम ऑन यार, ही इज प्लेइंग अगेंस्ट द चैंपियनशिप साइड एंड स्टैमफोर्ड ब्रिज वेयर ही प्लेड अ लॉट ऑफ फुटबॉल. क्रॉसिंग ऑफ स्टर्लिंग, ओके यू आर रेफरिंग ओनली टू क्रॉसिंग. गिलक्रिस्ट यहां पर पुटिंग द बॉल आउट, यहां पर फॉर थ्रो इन फॉर प्रेस्टन. प्रेस्टन का क्रॉस आएगा क्या? ब्रोजा रियली मैन, आई एम वरीड गाइस, वी नीड अ स्ट्राइकर गाइस. अगर एंकुंकू ऐसे ही रहेगा ना उसका फिटनेस, वी आर कंसर्निंग फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ. एज मच एज जैक्सन खुद कन्विंसिंग नहीं है, बट जैक्सन भी नहीं है नेक्स्ट मंथ 1 मंथ के लिए. गिलक्रिस्ट गिव्स अवे अ कॉर्नर. I think he should have done better. He should have just headed it back, but कोई नहीं, एटलीस्ट कॉर्नर ही दिया है. भाई कॉर्नर है प्रेस्टन का. निखिल पूरे बर्बाद हो गए. नहीं बाकी मैचेस भी आएंगे भाई, पूरा एफए कप और कैराबाओ कप सब आएंगे यार इस हफ्ते के लिए, टेंशन नहीं है. ट्यूसडे अपना सेमीफाइनल से याद रखिए. ओपेंडा नहीं यार, अभी तो ओपेंडा वहीं गया था ना अपना, लाइप्जिग की. गोल आएगा, और भाई बच गए. क्रॉस इन द बॉक्स आया कॉर्नर से, लेकिन स्टिल दे आर कीपिंग द बॉल. प्रेस्टन का क्रॉस फ्रॉम द राइट हैंड साइड और फार पोस्ट में नो पर्सन इज फ्री. क्लियरली फाउल किया गया है यहाँ पर. बैड क्लियरेंस बाय मुड्रिक, और अदर एंजो था क्या? एंजो का बैड क्लियरेंस. प्रेस्टन गेट बॉल बैक. हाँ तो अभी वर्नर चले गया ना लाइप्जिग से, तो ओपेंडा को मिलेंगे और गेम टाइम. ओपेंडा और सेस्को को मिलेगा गेम टाइम. वो नहीं होने वाला, लुक्स लाइक इट. एरिक डायर जा रहा है, बट दे आर गोइंग फॉर अ सेकंड सेंटर बैक एज वेल. देखते हैं किसके साथ जाएंगे, हु कुड प्ले राइट बैक. यहाँ पर प्रेस्टन कीपिंग द बॉल गाइस. प्रेस्टन ऑलमोस्ट डोमिनेटिंग द लास्ट 5 मिनट्स. व्हाट रबिश इज दिस मैन. भाई ये तो यहाँ पर पामर ने बॉल जीत लिया है. पामर हैज वन द बॉल, गिव्स इट टू काइसेडो. Broja is really not convinced. In fact, he's been pretty embarrassing. Ball given away by Colville. Mudryk नहीं पहुंच पाया, और यहाँ पर थ्रो इन. कुछ नहीं भाई, हम बहुत खेल रहे जैसे कि प्रेस्टन विल कम एज दो ये चैरिटी मैच है और हम लोग को मिलेंगे गोल्स आराम से. तो वी आर पहले तो 10 मिनट तो हम स्लो पासिंग कर रहे थे. आई डोंट नो व्हाई. इट शुड बी प्रॉपर एफए कप, एक एटमॉस्फेयर और एक जज्बा लग नहीं रहा था चेल्सी प्लेयर्स में. तो पहले 10 मिनट हमने पोजीशन रखा, बट वी डिडंट डू एनीथिंग विद दैट. एंड देन वी गॉट एक्चुअली अ गुड चांस, वेरी गुड बॉल बाय एंजो फर्नांडिस ओवर द टॉप फॉर कोल पामर, शुड हैव फिनिश्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट क्या कर सकते हो. सुभाष इन द हाउस भाई, सुभाष को बिग अप यार. भाई SJFC इनका भी चैनल है भाई, इनको भी चेकआउट करिए फॉर श्योर. मैंने पहले भी शॉट आउट दिया है. अगेन बिग अप टू सुभाष, यू ऑलवेज सपोर्टिंग नो मैटर व्हाट. आई होप यू विन बिग टुडे एंड गेट अ टॉप स्ट्राइकर दिस Jan window. I feel we should go for Tony because no matter what the rumors or Osimhen won't sign for us. What's your take? मैंने यही बोला है that I would rather wait for Osimhen in the summer than sign Tony for 85 million. हाँ, अगर वो something like 70 million आता है then I might be tempted, लेकिन मुझे लगता नहीं आएगा. There are more takers. Palmer with the ball loses it in the box. Well done यहाँ पर by Disasi. Yeah, Disasi well done. लेकिन big up to Subhash again. तो मैं बोला आई विल बी पेशेंट. आई नो अभी लग रहा होगा कि ब्रोजा कन्विंसिंग नहीं है, एंकुंकू इंजरी प्रोन है, जैक्सन एफकॉन गया है, बट रादर देन स्पेंडिंग 85 मिलियन ऑन टोनी, आई पाउंड की बात हो रही तो यहाँ पर 100 मिलियन यूरोज हो गया.
So rather than spending 100 million euros on Ivan Toney, I would still wait for the summer, although there's only 2% chance to get Osimhen in the summer, for 130 million. I would rather do that. That's just me. रिस्क है लेकिन वर्थ द रिस्क इन माय ओपिनियन. लेकिन अभी के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर टीमो वनर जा रहा है टॉटनहम, तो आई वुड हैव टेम्प्टेड टू गेट हिम ऑन हाईजैक द लोन, लेकिन हो नहीं रहा है वो. हॉरिबल परफॉर्मेंस फ्रॉम चेल्सी गोइंग ऑन. सैंटियागो, देखो भाई, पीपल लाइक सैंटियागो हिमेनेज, पीपल लाइक गिरासी, पीपल लाइक विक्टर ग्योकरेश ना, आर्टेम डोबिक, जो बाकी लिंक्स हो रहे चेल्सी के साथ, कहीं ना कहीं दे आर वही ब्रैकेट है ना, कहीं ना कहीं, मतलब वो 22, 23, 24, 25, 26 ईयर ओल्ड बेंजामिन सेस्को. तो आप उसके लिए ऑलरेडी आप साइन कर चुके हो निकोलस जैक्सन को, इफ यू आर होपिंग दैट ही डज वेल इन फ्यूचर. अभी के लिए यू नीड समवन हु इज अ लिटिल बिट मोर एक्सपीरियंस्ड. I would not mind Roberto Firmino on loan if he's available. Sterling on the run right side में guys. Nicely done by Sterling. Cross किया है, घंटा cross man. घंटा cross. इसलिए chat OPR you guys were saying horrible cross for the ball. दोनों तो नहीं आने वाले, मतलब सैंटियागो हिमेनेज एंड ओजीमन दोनों तो नहीं आने वाले. आई डोंट थिंक सो. Impossible is not, there's nothing impossible, Subhash. Because there's a connect with African strikers in Chelsea, bro. That's the reason. Solomon Kalou, Didier Drogba, if you know, you know. Technically, Mo Salah as well in the past. You should not, pre 2004, for most of your history, Chelsea were a lower table team. And don't tell you won one European trophy 90s. CR7, the GOAT, big up to you, man. First of all, thanks for coming on. Secondly, do not assume that the other person doesn't know shit. I was there when we were shit, mere bhai. And whenever we were shit, we were still a cup team and we still fought our asses like anything. And we ain't got no history and we do we care? We don't care. But this is a fan channel for all to see. I respect every club and every fan out there. Absolutely. But to say that we were absolutely not there, for people who do not know, Cup Winners' Cup used to be a thing, guys. And Cup Winners' Cup was वही है लेट 90s 2000. मान लो आप तब मानोगे तो मानो, डेफिनेटली इट इज काउंटेड 100%. आप सुपर कप नहीं जोड़ेंगे, पता नहीं क्यों नहीं जोड़ रहे हो आप. सुपर कप हम किसके साथ जीते थे आप देख सकते हो, किसके साथ जीत सकते हैं. उससे पहले भी एफए कप, लीग कप, वी वर देयर ब्रो. अगेन वी वर देयर और देयर अबाउट. ऐसा नहीं कि वी वर टोटली आउट ऑफ इट, बट कहीं ना कहीं whenever we were shit, we were at least playing with more passion and more resilience, and that is what is missing in this Chelsea squad, especially in the last 1 year. And that is why I am so, in your language, vexed. But it's so totally fine. Big up to you for coming on. It's always a fan channel for all to see. But do not assume that other person doesn't know shit. Again, if you know your stuff, big up to you as well, 100%. हम तो घंटा जानते हैं, लाइक ऐसे. अ प्लेयर लाइक शिक एज वेल. हाँ, शिक वुड एक्चुअली, अभिषेक ने भी 2-3 बार बोला, यहाँ पर क्रॉस आ रहा है भाई. गिलक्रिस्ट डज वेल. व्हाट अ पैथेटिक हाफ ऑफ फुटबॉल गाइस. पैथेटिक फ्रॉम चेल्सी भाई. भाई वी नीड सम एनर्जी इन द फील्ड. हाफ टाइम में देयर इज अ नो ब्रेनर 100%. यहाँ पर मैं गैलेगर को लाऊंगा. हाँ, हम सोच रहे थे भाई हम कहां पर 2-0 हो जाएंगे फर्स्ट हाफ में, हम ला सकते डेविड वॉशिंगटन द सेकंड हाफ. भाई गैलेगर हैज टू कम इन द सेकंड हाफ. इनफैक्ट इयन मार्टिसन का भी टेम्प्ट हो रहा है मुझे, considering that he is actually going to be going on loan to Dortmund. They are far better, but they are not finished articles. Within, they're not finished articles. Vlahovic would have been a great. By the way, Vlahovic to Arsenal, again there are talks going on, but I don't think it's happening. अगेन बिग अप टू ऑल द रिलेटिव्स इन यूके. CR7 द गोट. लेकिन ऐसा भी नहीं हम नहीं घंटा जानते मैन. अनफॉर्चुनेटली देयर आर पीपल, सम कुछ लोग के पास कीड़ा था ना, जब लोग फुटबॉल का एफ भी नहीं जानते थे अपने इंडिया में ना. एंड दैट्स अ रियल फैक्ट गाइस, यूरोपियन फुटबॉल का. तब भी हम देखते थे भाई. मैं तो फ्रॉम मेरे बचपन से याद है, हम तो देखते थे मेरे भाई. अगेन lucky enough to follow football, the World Cups, the Euros from 94, 96, 98, and the Champions League from 99, and Premier League from 2000. For people who do not know, check out Know Your Creator. If you know, you know. But यहाँ पर फ्री किक दिया हमने, और फ्री किक ले रहा है प्रेस्टन ने. गंदा फ्री किक उनके द्वारा, लेकिन स्टर्लिंग शुड बी डूइंग बेटर भाई. चांस था फॉर अस टू काउंटर, बट नो. Batshuayi comes back, he'll perform better, I agree.
नहीं, स्टर्लिंग आई थिंक कहीं ना कहीं क्रॉस गंदा किया है, बट आई वुड स्टिल से द स्टर्लिंग हैज दैट एबिलिटी टू फिनिश अगेंस्ट फ्लैट ट्रैक बोली है और कहीं ना कहीं बेटर फिनिशर देन अदर्स. आई वुड पुट स्टर्लिंग, आई वुड कीप हिम स्टर्लिंग. I would be tempted, you know what, to play Palmer as a false nine. That's how bad Broja has been. That's how bad Broja has been. I'll be very honest. Gilchrist has been arguably the best player in this half. Academy में तो काफी अच्छा करता है as a center back. Not going to claim I watch every minute, लेकिन जितना मैंने देखा है, he's impressed. लेकिन is he ready for a Chelsea first team in the 11? No, but as a squad member, absolutely yes. Palmer keeping the ball यहाँ पर, giving it to Enzo, trying for a 1-2, लेकिन Enzo ने वापस दिया कैसेडो को, who plays in और inverted full back left से गुस्तो को. मैं चेंज करूंगा guys. I would bring Gusto as a right back in the second half. यहाँ पर Mudryk trying to play in Broja who is non-existent. Caicedo gets the ball back somehow और मिलता है उसको वापस से Enzo द्वारा. राइट साइड वो द टॉप बॉल है पामर द्वारा और कैचिंग प्रैक्टिस हुआ है प्रेस्टन के लिए. बिलेटेड क्रिसमस बोल के गिफ्ट दे दिया हमने. Sports talk with Mahim, big up yaar. Another OG of the channel is back, guys. Nice to see some OGs always back, bro. भाई हाफ टाइम हो गया भाई. चेल्सी का हगना कब रुकेगा भाई? चेल्सी डू नॉट सरप्राइज अस. एक भी मैच होता है जहां पर वी गेट अ कन्विंसिंग विक्ट्री एंड अ कन्विंसिंग परफॉर्मेंस फॉर 90 मिनट्स एंड स्टॉपेज टाइम. नो, व्हाट रबिश, एब्सोल्युटली नॉट कन्विंसिंग. अब मैं बोलता हूं, मैंने ओवर रिएक्ट नहीं किया, बट मैं सोचा कि मे बी और चांसेस आएंगे. इट वाज फर्स्ट ऑफ मेनी चांसेस, बट ऑल ऑफ वन प्रॉपर चांस मिला चेल्सी को. ऑल ऑफ वन प्रॉपर चांस which I have to say Palmer should have scored. Palmer को एक बॉल मिला था over the top from Enzo Fernandez who tried to play in 3-4 बार over the top, but एक बार was a very good chance. Palmer was one-on-one against the goalkeeper and goalkeeper did well Preston का, but still he missed the target and he should have scored. But I thought there'll be more chances. उसके बाद क्या किया चेल्सी भाई? चेल्सी मतलब सोच के आती है भाई. आसान जिंदगी बोरिंग नहीं करानी जिंदगी चेल्सी फैंस के लिए, इंटरेस्टिंग करा देते हैं. सेकंड हाफ तक हम लोग विल प्ले देयर, बट अगेन नाउ द क्वेश्चन विल अराइज, व्हाई प्ले टू पीपल आउट ऑफ पोजीशन व्हेन यू कुड हैव जस्ट प्लेड वन पर्सन आउट ऑफ पोजीशन? ये बोलिए. हाँ, रुका दिया भाई टाइम स्टैम्प फुरकान, थैंक्स. लेकिन ब्रोजा भाई, सीरियसली ब्रोजा को मोजा सूंगा. थैंक्स फॉर मेकिंग मी लाफ मेरे भाई. गंदा मूड को अच्छा कर दिया एक सेकंड के लिए, बट कोई नहीं कोई नहीं. इफ आई मिसअंडरस्टूड आई एम सॉरी. CR7 द गोट. इट सीम लाइक दैट. इफ इट सीम्स लाइक दैट मैं ऐसे बोलता हूँ. अगेन मैं भी इंसान हूँ. इफ इट्स अ मिस्टेक, फेयर इनफ, बिग अप टू यू. इसलिए मैंने रेस्पेक्टफुली 3-4 बार बोला है बिग अप, एंड दैट इज रेस्पेक्ट मेरे भाई. इफ यू डोंट नो, दिस परफॉर्मेंस इज सैकेबल. गौरव बोल रहे. समवन सेड समडे, आई गेस इट वाज बाबा एज यू एंड यू, Chelsea becomes like the team they play. We are chameleons of football. I remember that. Manav in the house. Manav, bhai, keep the blue flag flying. Hey, do these Chelsea players understand what is the FA Cup ka history and what is Chelsea's importance in the FA Cup in this year, especially season में, considering हमारा European football नहीं है. Performance was absolutely भाई shit का, टट्टी का, गंदा क्वालिटी वाला, टट्टी वाला परफॉर्मेंस था. सच में बोलूं, एकदम गंदे वर्ड्स में, बिकॉज इतना गंदा था परफॉर्मेंस. वेरी वेरी हॉरिबल परफॉर्मेंस. यस, आई नो मिड ब्लॉक और लो ब्लॉक के अगेंस्ट हम थोड़ा स्ट्रगल करते हैं. दैट इज अ ब्लूप्रिंट अगर आप ऑपोजिशन टीम हो. और सेकंड हाफ में जनरली वी डू बेटर, रादर वर्स हम करते हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट सेकंड हाफ में गोल आना फॉर प्रेस्टन. लेकिन आई डोंट नो व्हाट टू से ब्रो. आई रियली डोंट नो व्हाट टू से. यहाँ पर इट्स बिन सो बैड. Remember, Gusto is playing left back and Gilchrist is playing right back. Gilchrist has been the player of the half along with a couple of good, very good passes from Enzo Fernandez. मैं बोलूंगा. I think Caicedo has not been that bad. Sterling has been okayish compared to the other forwards. Expecting more from Mudryk and Palmer. Or Broja has been absolutely worse than the worst quality of shit. ब्रोजा भाई इतना लंबा चढ़ा आदमी है, चेल्सी का कॉबम बॉय है. वांट यू टू सक्सीड बट यू आर नॉट हेल्पिंग योरसेल्फ. यू आर नॉट हेल्पिंग योरसेल्फ. आज आया स्टेटमेंट ब्रोजा कि आपको लड़ना अपने प्लेस के लिए. भाई लड़ो ना. दिस इज व्हाट लड़ना बोलते हो क्या अरमांडो ब्रोजा? यू शुड बी डूइंग बेटर ब्रो. यू आर प्लेइंग अगेंस्ट द चैंपियनशिप साइड. एटलीस्ट शो योर फिजिकलिटी इफ नॉट द क्वालिटी. और लेवाई कॉलवेल द सेम.
लेवाई कोवलिन आज तू सेंटर बैक खेल रहा है. Why aren't you sure of your position? I'm happy that he's playing centre back, but is he playing good? No. Levi Colville and Brojar are absolutely shit game they've had. लेकिन he's key, that is Levi Colville, to put those balls over the top, क्योंकि he has that ability. वो नहीं कर रहा, उसको करना है ज्यादा. एंजो फर्नांडिस और पामर थोड़ा बहुत कर रहे, लेकिन उनको भी ज्यादा करना है. I think that is how we'll open up Preston North End. नहीं तो भाई, you have to go North End and वहां पर रिप्ले में हमें पता है क्या होना है. और सेकेंड हाफ में भी हो, with all we know, who knows. मिलान से भी गंदा कोई टीम खेल सकती है. फर्स्ट हाफ में देख लिया. Shamble of performance. Please sack this man. I can't see my team 0-0 against 14 team in championship. This is as shameless as it can be. Again, playing at home at Stamford Bridge. Yes, I understand. 11 people are out, including Nicholas Jackson and the 10 injuries. But still, we are having 13 people who are good enough to play for Chelsea first team. तो available है ना. तो भाई, playing left back, Gusto is criminal. I agree. हाँ, मैं सोचा चलो टाइम देते हैं, लेकिन वहीं पर रहता है डिफरेंस. व्हेन यू हैव अ क्वालिटी हाई एंड गट्सी मैनेजर लाइक अ जोसे मोरिन्यो प्लेइंग ऑन द साइडलाइन, अगर वो रहता है तो भाई जोसे मोरिन्यो हैज अ गट्स टू काइंड ऑफ चेंज इट. अगर पेप भी रहता है तो हैज अ गट्स टू चेंज इट टैक्टिकली. टुकल हैज डन दैट इन द पास्ट. डज पॉच चेंज टिल अप टिल? आपको पता है 65 मिनट तक तो कुछ चेंज आना ही नहीं है. आपको पता है, इट्स रिटन इन द स्टार्स. पॉच बोल रहा है नहीं भाई, चेल्सी में मेरी सक्सेस लिखी हुई है, मैं एस्ट्रोसर को दिखाऊं, पहले 60-65 मिनट में मैं चेंज नहीं करूंगा. आपको अगर दिख रहा है दैट गुस्तो इज नॉट हैविंग अ ग्रेट गेम एट लेफ्ट बैक, व्हाई आर यू कंटिन्यूइंग दैट आफ्टर फर्स्ट 15 मिनट्स? आप बोलिए. मतलब आप, चलो आप 1/6 ऑफ द गेम 15 मिनट का टाइम देते, फिर आप चेंज कर देते ना. गिलक्रिस्ट का अच्छा जा रहा है राइट बैक में, बट इज नॉट अ राइट बैक. यू प्ले गुस्तो एट राइट बैक, प्ले कॉलविल एट लेफ्ट बैक. कॉलविल भी सेंटर बैक में नहीं अच्छा खेल रहा. Preston are attacking us long balls. Exactly why? For one reason, Colville is playing centre back with Disasi, क्योंकि गिलक्रिस्ट इतना लंबा चौड़ा नहीं है. चेल्सी को देख, no one will join them in transfer market. Very bad performance, absolutely. Madueke for Sterling in the second half. भाई चेंजेस बोलिए. अगेन मडवेके आ सकता है, गैलेगर आ सकता है. वी हैव ऑप्शंस ऑन द बेंच, ऐसा नहीं कि नहीं है. वी हैव डेविड वॉशिंगटन, अ स्ट्राइकर टेक्निकली जो साइन किया गया था, एंड उसको हम रख रहे हैं अपेरेंटली, एंड वी आर लोनिंग अगेन. दाविद दात्रो फोफाना लुक्स लाइक इट. इयन मार्टसन कुड कम एज वेल. रिमेंबर, इज अ लेफ्ट बैक गाइस. हम मालो गुस्तो को खेल रहे हैं लेफ्ट बैक, इवन दो हमारे पास है Levi Colville, left-footed guy, as well as Ian Martson वहां पर on the bench. लेकिन Thiago Silva is needed, or Conor Gallagher is needed maybe, क्योंकि are these guys understanding what it is to play for Chelsea Football Club in the third round of the FA Cup? Come on, we should be doing better. Again guys, झगड़िए मत. यहाँ पर एक बंदा अगर बोल दिया है कुछ, मैंने उसके साथ बात कर लिया है. यहाँ पर क्विक शाउट आउट दे रहा हूँ. CR7 द गोड, अभिषेक स्वाइन एंड फोर्सा बारसा, बिग अप टू ऑल द थ्री ऑफ यू. बट देयर इज नो नीड फॉर एनी कॉन्वर्सेशन इन द टॉपिक. लेट्स डिस्कस द गेम. ठीक है, इट्स द फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम आस्किंग अगेन डेथ किलर एज वेल. प्लीज लेट्स कंटिन्यू दैट. अभिषेक इन द हाउस, क्या हाल है भाई? हाउ वाज द फर्स्ट हाफ? भाई इट वाज watching basically, क्या बोलते हैं, Chelsea academy games are much more interesting than Chelsea first team game, and that's the reality guys. That is the reality. That's how bad it is. एक सेकंड. Again Pudin, छोड़ दीजिए. Just ignore guys, just ignore. Again, if someone is going below the belt, then you know the drill is, आप 2 बार warning दो. आप लोग उनको प्रॉब्लम बोलो. अगर नहीं सुन रहे, then you give a time out for the third occasion, but we need not involved in some conversations non-stop which doesn't help the stream and the chat. फुरकान बोल रहा है लव रोजा, उसका वो एस्टन विला इंजरी में लाइव देखा था. बिल्कुल, आई थिंक इट वाज ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप. आई रिमेंबर दैट लास्ट ईयर, एग्जैक्टली 1 year बिफोर. प्रेस्टन आर मोर थ्रेटनिंग, एब्सोल्युटली. उसमें भी गिलक्रिस्ट ज्यादा अच्छा खेल रहा है, सोचो यंगस्टर होकर. बिल्कुल. टुकल तो पुलिसिक को लेफ्ट बैक खिला दिया था. पॉच पॉच ना है हिम्मत भाई. अंश मेरे भाई, बिग अप टू यू. Miss Melina in the house. Mel, big up to you. Mel, how have you been? Shout out to Miss Melina, people who do not know. And a Premier League Ultra here. A lot of Arsenal content. If you want to check out Premier League content, you can check out on Miss Melina's channel. Mel, long time no see. I know it's been pending long time. I was hoping to kind of be in the same time zone, but unfortunately not. But hopefully we collab.
I think it's been pending for long. Let me know if you're open for it for sure. Welcome to the channel always. Again, an OG of the channel. गुस्तों को सब करो, कोई लेफ्ट बैक नहीं है क्या चेल्सी में भाई. टू बी ऑनेस्ट, दैट इज द थिंग ना. चिलवेल और अपना कुकुरेया दोनों ही इंजर्ड है. चिलवेल अभी भी मैच शार्प नहीं है, ऑल्दो वो ट्रेनिंग शुरू किया है, एंड कुकुरेया को अभी भी 1 महीना लगेगा. तो आई गेट दैट, बट मार्टसन है बेंच पर. मार्टसन है बेंच पर. अब प्रॉब्लम है कि यहाँ पर मैंने ट्वीट किया है लास्ट 2-3 दिनों में, आप लोग ने देखा होगा, कुछ लोग जो फॉलो करते हैं अपने को ट्विटर को, कि हमने जो एक बहुत ही नाइस चीज किया ना कि यार व्हाई डू वी स्टार्ट आवर कॉन्वर्सेशन. इतनी क्या हड़बड़ी है कि मार्टसन को अभी अभी बेचना है डॉर्टमुंड को. मतलब अभी थोड़ा रुकिए यार. यूज इज रिसोर्स. वी नीड अ लेफ्ट बैक इन दिस मैच, इन द मैच अगेंस्ट मिडलसब्रो. हमें चाहिए एक लेफ्ट बैक, क्योंकि वी आर नॉट श्योर ऑफ आवर लेफ्ट बैक राइट नाउ. तो वी कुड हैव यूज्ड हिज एबिलिटी, बट नो, वी आर नॉट यूजिंग हिज एबिलिटी. क्या ही तो बोले हम. लेकिन वी कुड हैव वर्स्ट केस एटलीस्ट प्लेयर अ लेफ्ट फुटेड प्लेयर इन लेवाई कॉलविल देयर, स्पेशली अगर आपको पता है पहले 15 मिनट में इट्स नॉट वर्किंग. फर्स्ट हाफ समरी, चलो सो जाते हैं. अरे भाई सॉरी बट ब्रोजा हैज टू. भाई आई एग्री. You know what, if मैं बहुत हार्ड कॉल है, डेथ किलर, आई वुड एक्चुअली डू दैट. I would actually just take off Broja, play, have the balls to play Palmer as a false nine, and I would actually, just get in Gallagher. I need some energy in that midfield. By Sports Talk with Mahim, again, OG of the channel, welcome back to Almighty Family. Bhai, I remember he was one of the first members as well. So big up to him, 100%. लेकिन यहाँ पर हाईलाइट देख रहा हूँ भाई, इट्स एम्बैरसिंग मैन. अगेन दैट मिस दैट पामर मेड, इट्स लुकिंग वर्स इन हाईलाइट्स. what does Poch have against Martson? I think it's a club against Martson, really speaking, क्योंकि Poch ने खेला था Martson को बहुत प्री सीजन में. इसलिए I don't think it's Poch. It's about coming from the club. That word is coming from the club कि Martson had not committed his future. और कहीं ना कहीं यहाँ ऑफर आ रहा है जो बहुत इजीली नहीं आता, a club like Dortmund coming. So maybe we are saying कि यार maybe we would have got a chance to, maybe would have got a chance to basically play Martson, or rather Martson to get some game time. तो वो हम Martson को रेस्पेक्ट करते हुए दे रहे. But I agree that Martson को थोड़ा बहुत we should have waited and then kind of approved that Dortmund वाला. मतलब don't let Martson know. Obviously the club is going to come to the club first, right? तो यहाँ पर we should have just waited. We should have used Martson. That कोई नहीं. That is what Chelsea is, man. क्या कर सकते हैं भाई. एक सेकंड दीजिएगा मुझे. I'm just trying to restart. Pochettino doesn't have the balls, and we are absolutely agreed. CFC needs to finish these chances, man, and Poch can't do anything here. The players are to be blamed. I think the players and the board and Poch, are to be blamed. Yeah? Board because Martin का situation जो हमने discuss किया अभी, ठीक है. Poch because right now, obviously, you need to be able to play Gusto at right back and just have जो रमित ने बोला, just have the balls to play a Gilchrist as center back, because that is his first position anyway. But you don't do that, no? For whatever reason, you don't do that. We are playing too slow though. Where's our पहला 10-15 मिनट हमने waste किया. Literally, we play so too slow. If we get relegated, hypothetically, can we win the Champions League with Poch? अरे बाप रे. Championship. बाप रे, come on man. Tiger Beast, come on. Too much. पुदिन को shout out यार. Again, thanks for that super chat, 100%. But we back the team no matter what. बिल्कुल. पुदिन, Tiger Beast OP 100%. एक सेकंड मैं देख रहा हूँ यहाँ पर. I'm just trying to see, guys. ये क्या हो रहा है? We have to go for striker option. भाई स्ट्राइकर हमने डिस्कस किया है. आप बोलो अर्पण, आप बोलो. Which striker will you go for right now? Do you have a striker in mind for Chelsea? A striker who's ready, जो अवेलेबल है, जो आप स्पेंड करना चाहोगे. मतलब will you be having the guts to go big on Ozyman? Ivan Toney. Ivan Toney का प्रॉब्लम है कि यार एक बिडिंग वॉर होगी in my opinion. First of all, Brentford might not let him go. Secondly, अगर होती भी है, then it starts from 80 million, it might go up to 100 million. Or plus he brings a little bit of baggage. अगर आर्सेनल और न्यूकासल नहीं इंटरेस्टेड होती आइवन टोनी पर, देन डेफिनेटली मैं बोलता आइवन टोनी वाज अ नो ब्रेनर. लेकिन देयर आर क्लब्स इंटरेस्टेड. तो आर वी गोइंग टू स्पेंड अनदर 100 million ऑन अ स्ट्राइकर? जब याद रखिए सर्टेन लकाका अपने बुक्स पर है. आई डोंट थिंक सो विल डू दैट.
If we do that, we'll only do that for someone like an Aussie man who's that level. Jonathan David बोल रहा है आयुष, has he had that wow wala year? No, he had a wow wala year 2 years ago, yes, before the World Cup. लेकिन after World Cup he's not had a wow of year. But जैसे Dragon Lion बोल रहे भाई, carefree wherever we may be, we are the famous CFC. लेकिन भाई Chelsea players, come on man, you have to show more. Better option than Osimhen तो नहीं है यार, come on. Is Ivan Toney a better option than Osimhen? He's great for the Premier League, but याद रखिए he's not had any football for 7 months. It's not easy man. हम इंकुंकू पर बैक कर रहे हैं. आई नो ही इज नॉट हैड मच फुटबॉल फॉर 7 मंथ्स ईदर, लेकिन बेसिकली 7 मंथ्स इज अ लॉन्ग टाइम यार. और we are hoping to be in some kind of Europe next season. Does Ivan Toney have European experience versus Osimhen? No. Is Ivan Toney worth 100 million? No. I think he's probably worth like 60-70 million at max. कंसिडरिंग चेल्सी का स्ट्राइकर के लिए जनरली हमने बहुत स्पेंड किया है, मतलब बीट मोराटा, बीट लुकाकू, बीट टॉरेस बिफोर दैट. I don't think we're going to spend huge money unless it's like Victor Osimhen. Again, available ho tab na. Ajinkya in the house, bhai, another OG of the channel. Again, people to check out membership schemes here for joining. Dominic Solanke, again, if he's available for cheap, yes. Lekin sunne mein aa raha hai, Spurs, although they're getting Timo Werner on loan, are also interested in Dominic Solanke. Although looks like it, Bournemouth may not let him go because they'll get relegated. Otherwise, only Mbappe can save us. वो भी नहीं save करेगा. बिल्कुल भाई. देवेश ओपी मैन, देवेश, वेरी नाइस टू सी सच अ कमेंट मैन, वेरी नाइस टू सी सच अ कमेंट. एवरीवन, देवेश का यहाँ रखिए. बिग अप टू एवरीवन सपोर्ट द चैनल नो मैटर व्हाट. लेकिन यहाँ पर सेकंड हाफ शुरू हो रहा है भाई, नो चेंजेस. चेल्सी टाइप ऑफ स्ट्राइकर्स नहीं है द वे पॉच प्लेज. दैट्स द थिंग दैट आई एम लुकिंग एट इट, क्योंकि वैसा स्ट्राइकर हमारे पास इंकुंकू ऑलरेडी है. वी नीड समवन लाइक अ ब्रोजा हु इज बेटर देन अ ब्रोजा, इफ यू नो व्हाट आई मीन, which is probably Osimhen. Again, second half predictions, guys. No changes for Chelsea, looks like it. Mehdi Taremi, yeah, I would be tempted to take him, to be very honest. भाई प्रिडिक्शंस हो जाए. मैंने बोला था 3-1, अभी वो रेड्यूस होता है सेकंड हाफ में. आई थिंक थोड़ा बहुत और फास्ट फुटबॉल मिलेगा और मुझे लगता है कंसीड करेंगे अपन, बट विल कम बैक इन मिनट 2-1 ब्रो. मैं अभी भी जा रहा हूँ 2-1, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है. लुकिंग एट दैट फर्स्ट हाफ, आप बोलोगे भाई पागल कुत्ते ने काटा है किसको, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 2-1 गाइस. 46-23 पर हमने टाइम स्टैम्प वापस से शुरू करना है. लेकिन अगेन यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेयर्स, आई एम सीइंग गुस्तो अगेन स्टार्टिंग लेफ्ट बैक. ओ नो मैन, 1-0 Chelsea. I will take that right now, although it's not proud. लेकिन क्या कर सकते हैं, I will take him. 46-23 पर करना है ना अपने को. एक सेकंड दीजिएगा मुझे. राहुल, बिग अप यार, आपको भी राहुल को शाउट आउट है यार फॉर द सुपर चैट. ब्रोजा यार, कम ऑन, कब सीखेगा यार बंदा. आई नो हम एक्सपेक्ट कर रहे डिएगो कोस्टा लेवल, लेकिन भाई उसका आधा तो कर यार तू. कम ऑन यार भाई, इट्स अ कंसर्न यार. विदाउट एंकुंकू इज अ रियल कंसर्न यार. जैक्सन को कितना भी गाली दो यार, जैक्सन चांसेस ज्यादा क्रिएट करता है, लिंकअप बेटर होता है. चलो भाई, मैंने शुरू कर दिया टाइम स्टैम्प. मेरा टाइम स्टैम्प ये है, आई एम वाचिंग ऑन सोनी लिव गाइस. I have recharged the timestamp. There are no changes at halftime, guys. Gusto is continuing at left back. Gilchrist continuing at right back. Colville and Disasi at centre half. With Enzo Caicedo in the middle to midfield mein, or Palmer just in front roaming. With Sterling right wing or Mudryk left wing with Broja up top. Although he has to be more present and win more balls. Ayush bowled 2-0. Ethan bowled 2-0. यहाँ पर Broja again not able to win a header, or rather it was Palmer this time. 2-0 मैं तो बोल रहा हूँ अभी भी. प्रेस्टन है, बेंच से प्लेयर्स आएंगे, बेंच से लेकिन ज्यादा नहीं है. मिडवे के है, गैलेगर है बस. मार्टसन शायद नहीं आएगा, याद रखिए. ही इज गोइंग आउट टू लोन डॉर्टमंड इस वीक में शायद. विक्रम बोल रहे 2-0 चेल्सी. डेथ किलर बोल रहे 4-0. डेविड वॉशिंगटन भी टेक्निकली है, बट ही स्टिल अ वेरी यंग गाय यार. 4-0 चेल्सी भाई, इतना अच्छा सेकंड हाफ. आई विश आपके मुंह में घी शक्कर ब्रो. जैक्सन बेटर देन ब्रोजा 100%. 100% डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्राइकर, बट 100%. अरे मिकाइल इन द हाउस यार, व्हाट्सअप मिकाइल, आप फ्री हो तो आ जाओ यार. आज मैं सोच रहा था मिकाइल को मैसेज करूंगा, बट आई थॉट नॉट श्योर न्यू ईयर वीक में आई यू फ्री और यू मस्ट बी ट्रैवलिंग. आई डोंट नो, आर यू बैक मिकाइल? आई होप योर न्यू ईयर वाज गुड. लेकिन लेट मैसेज मी ब्रो ऑन व्हाट्सएप इफ यू आर अवेलेबल.
मिकाइल ओपी मैन चैट. यहाँ पर क्रॉस आया है प्रेस्टन का. That's true though. Mikhail ka comment, man. I miss those days like anything. Gusto, well done on this moment defensively. Enzo, Enzo losing the ball, man. Come on. Bro, तू जा. 2-1 होगा शायद बोल रहे माहिम. ओके. क्वारेस्मा टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन लोन आया था अंडर. एक सेकंड. गिलक्रिस्ट not badly done. Disasi should be doing better. Come on, man. Disasi gives the ball away. छक्का मार दिया प्रेस्टन ने. लेकिन हाँ, क्वारेस्मा वाज समवन जो बेसिकली वी हैड हाई होप्स फॉर, बट आया था फिलिपे स्कोलारी के अंडर आया था, इफ आई रिमेंबर राइट. अभिषेक बोल रहे ब्रोजा ऑडिशनिंग फॉर प्रेस्टन. यू नो व्हाई, वेरी ऑनेस्टली, if I get a good deal for Broja, I'll be tempted bro, to take it. A good offer. When the ball goes in the box, Broja is not central or comes short. Bhai, I did not see that message. If that is the case, then I apologize on their behalf. Akshay, if any mod, agar, I don't know if it's true, first of all, if any mod or existing people in the chat are saying that United fans are generally mentally sick, that's exactly what I am against. I do not generalize any club fans or anyone in general. I cannot generalize. Okay? Agar if you're pointing to a certain person and saying in the chat, then if it's fair, then fair. इतना मैं बोलूंगा. So, like I said, do not involve yourself in that. Let's come back to the game. That's more important for me. Big up to everyone here. And मैं respect दिया हूँ. आप उनका मत देखिए, आप मेरा देखिए यहाँ पर. ठीक है? Simple सी बात है. लेकिन mods especially try and stay as neutral as possible. You know what I mean. No, yeah, I don't think so. He has lots of improvement to be done, but I don't think it's pretty average. Come on, that's a very harsh statement in my opinion. Is he playing in the right system? Is he playing with the right confidence? No. He needs to do more. Yes. Defensively, he needs to be better. Yes. लेकिन कहीं ना कहीं he needs more support from his forwards making those runs. Again, Warner going to Tottenham, bro. Broja needs Gilchrist level intensity to be effective, but he doesn't have it. Unfortunately, true. लेकिन ब्रोजा का हुआ करता था. That's the saddest part. I remember watching him so much in the Vitesse days, in the academy days, as well as in the Southampton days. He always seemed like a sasta or youngish, very youngish Diego Costa types. लेकिन क्या बोल सकते यार. Yeah, but बहुत expensive था ना. Sterling with the ball, guys, on the right hand side. पैसा ज्यादा दिया आपने, that's for sure, both for Enzo and Caicedo, but both are not bad players as such. They need to do more. 100% they need to improve and they do more. Lekin can I just blame them? No. Chalo, he was specific for that guy. Abhishek has clarified, guys. No problem, no problem. Abdul Chelsea, always. Mikhail, you know it. Always welcome. Chelsea sideways passing going on, guys. Rahul, interesting comment that. If you know, you know. Disasi came here to Gilchrist. Gilchrist right side से क्रॉस करेगा क्या? क्रॉस किया यार, अच्छा. लेकिन where is the center forward, guys? Pissing off, man. Armando Broja pissing off. Cross आया है. Broja is not even fighting for it or going for it. Enzo putting Gusto on the left wing. Enzo ball there under the ball. Nah, yaar. Come on, man. Enzo should be doing better in that moment. Fair enough. लेकिन he needs to know that this is the month there. It is important. Make or break month है उसके लिए. Akshay, thanks for letting me know. I will have a word with them. ठीक है? Thanks for letting me know. Again, I respect every opinion and every comment and every feedback. Again, आप DM करो मेरे भाई. अक्षय, आप अगर Instagram और Twitter में हो, आप we can easily discuss. And again, big up. I'm pretty sure यहाँ पर कुछ misunderstanding हुई होगी. But at least मेरे तरफ से definitely ये है. It's always a fan channel for all to see. हम भी fun banter करते हैं. Being an Arsenal fan, you know that banter is part of football. लेकिन there is a line that we need to not cross, and don't generalize. Sterling, well done, bro. Sterling wins a corner. Well done by Sterling. Yeah? Nice turn. Lekin he was looking for a run from Broja. He was like, by Broja. I was looking for a striker, but where was Broja? I couldn't see him. Palmer or Broja should have got the ball.
गो चांस मैन, दिसासी का शॉट था क्या? दिसासी का शॉट भाई कॉर्नर द्वारा, लेकिन छक्का मार दिया बंदे ने नियर पोस्ट. शॉर्ट कॉर्नर टेकन बाय पामर. We don't practice shots, do we? We don't practice shots. Disaster. भाई गैलेगर को लाओ यार. भाई क्या है पॉच का यार कि 65 मिनट से वेट करेगा. गैलेगर भी हंस रहा है बैठकर कि क्या शॉट था भाई ये. Can't believe it. Bettinelli is laughing. Bettinelli क्या उसके बारे में कौन बैठा है, कौन खड़ा है, कौन बैठा है? Does Poch need to get more out of these players, and also thoughts on Timo to Tottenham तो हमने बात की आधी घंटा यार, beginning of the stream में आप चेक कर सकते हो वापस. लेकिन Poch definitely needs to do more. If for an FA Cup game at home, when there are players who need to prove themselves and they're playing for the Chelsea career and not doing enough, then you have to question Poch as well, not just the players, both in fact. भाई लेकिन ब्रोजा इज अकेडमी गई ना, दैट्स द सैडेस्ट पार्ट. एज मच एज गिलक्रिस्ट हैज बीन, यहाँ पर एक चैलेंज आया. चेल्सी आर अपीलिंग. आई एम नॉट श्योर इफ इट्स अ पेनल्टी. लेट्स सी द रिप्ले. वाज इट मुड्रिक? Again, we'll be discussing on that in full time. Pudin, leave it, bro. Leave it, bro. That's it. Pudin, let's learn to ignore, man. Let's give a warning if they're below the belt. कहीं गाली गलोच देते हैं, below the belt देते हैं. You know the rules of the channel, मेरे भाई. Then you get a couple of warnings and then you give them a timeout. If not, you let me know after 3. But if you are yourself very not very lenient, then it's not acceptable. That's all. Colville rubbish, man. At least ball जाने नहीं दिया, लेकिन he gives away a free kick. A player like Broja needs a lead striker जिसके अंडर वो खेल के सीख सके. नहीं यार, वो एज चला गया ब्रोजा का. ब्रोजा इज नॉट 20 साल का नहीं है भाई. ब्रोजा कितने साल का है गाइस? 22 साल का यार. ही इज अ स्टार्टिंग स्ट्राइकर फॉर अल्बानिया मेरे भाई. अभिमन्यु वेलकम. क्या क्या आप शायद नए हो चैनल पे, इसलिए मे बी आस्किंग. फॉलोइंग फुटबॉल एज सच फ्रॉम मिड 90s टू लेट 90s ब्रो. लेकिन इंटरनेशनल फुटबॉल से शुरू किया था, फिर चैंपियंस लीग फुटबॉल, फिर प्रीमियर लीग, सेरिया, ला लीगा एंड अदर्स. Chelsea का kind of my first game. You can check out by the way home page में a lot of playlists are there. Check out Know Your Creator, उसमें स्टोरी है. डिटेल में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बेसिकली चेल्सी का was around 98 99. Every game of Chelsea past 2000. लेकिन international football and Champions League just before that. Welcome again. Colville has been poor, very bad Nathan, very bad. भाई to be honest मेरा तो क्लियर है. If Poch doesn't win a cup this season, he's gone. मैंने बोला था that basically speaking, now that he's luckily मिडल्सब्रा है सेमीफाइनल जो हम खेलने वाले ट्यूसडे को, होपफुली हम वो बीट कर पाए. ऑल्दो कॉन्फिडेंस नहीं आ रही आफ्टर टुडे, एंड कंसीडरिंग जैक्सन इज आउट. पामर वेल डन बाय द वे. नो ही गेव द बॉल एक्चुअली. तो मैं बोलूंगा इफ ही विंस अस अ कप देन आई वुड लाइक टू कीप पॉच. यस, इट डजंट हेल्प इन द लॉन्ग रन मे बी, क्योंकि वो एक रहा है चेल्सी का एक्लीज हील. लेकिन for me, winning cups is still the tradition of Chelsea, which needs to continue. Thank you. Again, Misha has not been played enough in the game, in my opinion. And when he's got the ball, he's not done enough. यहाँ पर he gives the ball to Caicedo. Very good touch. भाई! Was it a challenge to Caicedo? गिरा तो है बंदा, लेकिन I think it was again. Oh, come on! Oh, yeah! Come on, man! Armando Broja proves me wrong. A ball in hand, a glass shadow. Chelsea. It is Armando Broja goal, guys. Again, the run of play. Armando Broja बोल रहे हैं आज साले मेरे को क्रिटिसाइज किया तूने साले अंकित, लेकिन Armando Broja goal, guys. Chelsea finally create a proper chance and a goal scored. Mudryk plays in Malo Gusto, who crosses from the left hand side on assist for the left back, who is the right back, remember, who plays as the left back only. आज लेकिन
Broja with a nice glanced header, FIFA style, Drogba style almost, और far post में Preston goalkeeper can't help it, and it is a goal. Where an Armando Broja celebration, guys. Come on, man. Carefree, wherever we may be. We are the famous CFC. We are the famous CFC. And happy for Armando Broja as much as he's been shit. Poch का apologies. Yes, Poch बोलेगा भाई साले सब लोग ऑलमाइटी ब्लूज वालों आप लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि मैं गुस्तो को क्यों खिला रहा हूँ लेफ्ट बैक. अब देखा क्या किया मैंने. अरे भाई, but that is what he needs to show more. Intensity from Broja has been shit. Lekin definitely that's what a striker needs to do 100%. But for once, a nice cross, absolutely, and a nice header. Kahin na kahin, we need to do more of that, is what the blueprint is, Mikhail, if I'm not wrong. This is what we call a pinpoint cross. Finally, Broja ne. Bilkul. It's Preston, come on. But yeah, it's okay. But I know we should be doing much better, but we rather win than not. Obviously, yaar. यहाँ पर left side में Mudryk has got the ball now. Huge month, in fact. Mudryk का cross है एक और. अरे! Hit the bar, guys! Broja का brace आ जाता 2 मिनट में भाई. What was that? Mudryk का बढ़िया cross आया भाई. Mudryk bhai, well done bhai. Mudryk, Misha OP ho jai in the chat. Come on. Nice turn by my Mudryk and a cross in put by Mudryk. Very well done by Mudryk in this moment. Again, it's clear for me that Poch has told Broja to be in the box more and our wingers or wing backs or full backs to hit more crosses. ये clear है. ये clear लग रहा है मुझे. But it was a very good cross and it glanced the bar of the goal. Misha OP man, 100%. But bhai, it's a good plan B to have Broja. अगर वो Broja ऐसे खेल सके तो consistently. I know it's only Preston, but Gilchrist is going off. 60 मिनट खेला भाई. First start for Chelsea in the senior shirt for Chelsea भाई. Gilchrist OP हो जाए भाई. Gilchrist getting subbed and the one and only Thiago Silva coming on. So obviously now अभी change करेंगे. Gusto will go right back or will it be Disasi going at right back? Don't tell me. Mikhailo Mudryk भी आ रहा है. अब ये क्यों हो रहा है यार? ये अच्छा नहीं है यार. Why is Mikhailo Mudryk being taken off, man? एक गोल ही हुआ यार. The moment Mudryk अच्छा खेलने लगे, Mudryk को sub off करो. What rubbish is this, man? This I don't like, man. Rubbish, man. I know we are winning, but still, man. Why is Mudryk off, man? The moment वो एक spark दिखा, take Mudryk off. नहीं है. ये हमारा ट्रुप का इक्का है. हमें नहीं दिखाना है दुनिया को. Shit, man. Madueke coming off was not too bad anyway. But now Sterling जाएगा left side में. But come on, man. What does need to? I know is that he's coming after injury as well, but come on, यार. Mudryk की जरूरत नहीं थी coming off. But anyway, Mudryk OP and Gilchrist OP for sure. They've had a decent game, especially Gilchrist. चलो let's hope for that. बोलना पड़ेगा. लेकिन अभी right back कौन खेल रहा है? Mudryk also didn't like it. I hope he doesn't like it, bro. Sometimes it's needed for people to voice their opinion. He needs to be a strong character, bro. What is this? Chalo bhai, Levi Colville playing left back, Gusto coming to right back, looks like it. Thiago Silva Disasi center back dikh raha hai mujhe. Correct me if I'm wrong, guys. Let's see. Again, if we win 4-0 and Madueke scoring as well as basically Thiago Silva scoring, then I will say that again, बहुत sorry. लेकिन as things stand, जब Mudryk और Broja का थोड़ा कनेक्शन दिखा, उसी सेकंड में आप सब कर रहे हो. I don't understand that at all. Let's hope for that again, Pudin. पामर को सब करना था, बोल रहे अभिषेक. पता नहीं यार, पॉच का substitutions and his picks, man. Seriously, you have to question, man. 100 million for Broja coming. I hope Gilchrist becomes famous like Adam Gilchrist. अरे भाई, Gilchrist अगर हो ना famous, 100% I will take it, man. मतलब academy guy staying in Chelsea again. I was hoping for Chalobah to be that guy, but ठीक है. So be so it Colville and Gilchrist. I'll take it. ठीक है, मतलब let's focus on the game now. Let's focus on the game, guys. It is what it is. Poch का हम जानते ही है. Poch को he likes to be in the news. Interesting बनाना है, boring नहीं करना है जिंदगी.
Caicedo, oh, Enzo Fernandez OP man. Broja keeping the ball. Broja, nice. Release kara, nice. Enzo keeping the ball. Enzo gives it to Sterling on the left hand side, who will take a shot, pretty sure. Sterling defended by Preston. यहाँ पर ब्रोजा, oh, bad push, definitely free kick conceded by ब्रोजा. गाइस how many likes अभी ऑन द स्क्रीन आप देख रहे हो? टारगेट क्या है? 175 लाइक्स है टारगेट. फर्स्ट हाफ के लिए 150 था. Can any mod or any subscriber help me out here in the chat? How many likes and how far are we from 12k as well? Come on, we can easily get there sooner than later. Also people याद रखिए, कल मैं सोच रहा था ऑलमाइटी स्पोर्ट्स पर भी आऊंगा, लेकिन कल आएंगे अब, ठीक है? सो टुमारो वी विल डेफिनेटली कम ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स. मे बी अगर इंडिया टीम का सिलेक्शन नहीं होता तो वी माइट डू अ न्यूट्रल वॉच अलोंग ऑफ फुटबॉल देयर एज वेल. लिंक्स बिलो ऑलवेज. जैसे ही मैंने लाइक सा बोला, पीपल गोइंग ऑफ. क्या बात है भाई? चलो नहीं बोलता यार, अच्छा नहीं लगता तो आपको. क्या ही बोलूं यार. Sterling has been immense this year. Death killer, but I don't know why people hate him so much. Why he's an easy target, लेकिन the reality is उसका finishing should be better than what it is. As much as he's the most experienced player out there in the forward line, साथ साथ में ये भी है उसने किया है. मतलब there was a month जहाँ पर वो Premier League Player of the Month के लिए nominate किया गया था. If I remember right, Sterling has scored almost the goal of the season as well of the Chelsea. ठीक है, लेकिन he's been very hot and cold. ये भी है. तो वही है ना, विद द एक्सपीरियंस प्लेयर आप जो ना कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट करते हो, वो प्रॉब्लम है स्टर्लिंग का इन क्रॉसेस एंड फिनिशेस. मडवेके गेटिंग द बॉल थैंक्स टू काइसेडो. मडवेके क्या करेगा? मडवेके राइट फुट. अरे यार मडवेके इतना देर से. अभिषेक थोड़े घंटा का इवेंट्स स्टर्लिंग के लिए. इवेंट्स तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, ही इज नॉट बीन एज बैड एज व्हाट ही हैज बीन गॉट द हेट. ये भी मैं एग्री करता हूँ. ही हैज बीन वेरी बैड एट टाइम्स, ही हैज बीन वेरी गुड एट टाइम्स. ये प्रॉब्लम रहा है. Aditya in the house, what's up? हाँ, गिल्क्रिस्ट ज्यादा फेमस है, भेज देंगे. और so many people are surprised that it word immense. भाई मैंने नहीं बोला. Palmer with a corner. Oh, goal! Yes, man! It is a Thiago Silva. Thiago Silva. Thiago Silva. It is Chelsea 2, near post header, a proper Drogba style header, bro. Yet again, Chelsea proved that by we need such headers in the box. And Broja Thiago Silva OP हो जाए, और Palmer OP as well for the corner, bro. Come on, boy. Chelsea. Come on, man. Almost saved by Preston goalkeeper, but what a thumping header. Or on the top of the goal jata hai bhai, to the surface, easily a goal by Thiago Silva, bhai. What a legend, man. Legend. Just Preston, but this is how you should attack the space. Guys, Cornwall, Disasi, learn from Thiago Silva, bro. What a header, man. What a header. Drogba-esque header, bro. Drogba-esque header. Veteran for the reason, but offside possible का चेक हो रहा है. ये क्या हो रहा है भाई? चेल्सी के लिए इतना एक्स्ट्रा चेक्स क्यों होते हैं भाई? If I speak, I'll be in trouble. चलो गोल दे दिया गया, I believe. Nice. Brilliant run, bro. What a run, and attacking the space, man. Brilliant on the near post by Thiago Silva. And again, big up to Cole Palmer as well for the ball. We need to extend Silva. Bhai, सुनने में आ रहा है that he only reason he might थोड़ा बहुत chance to extend is because of his sons playing in the Chelsea academy. यहाँ पर Preston ने दे दिया ball Palmer को. Palmer should play in Mudryk, लेकिन यहाँ पर clearly yellow card मिलेगा Preston को, and we'll get a free kick. But Palmer should have released first to Mudryk नहीं, sorry, Enzo, या Mudryk तो has already been subbed, और Sterling. बिल्कुल मिकाइल यार, बिल्कुल. Thiago Silva का फर्स्ट टच था. वाओ. फ्रॉम अ सिटी फैन, दैट्स फुरकान. स्टर्लिंग बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ तब जब उसका मन करेगा दिन में 3-4 गोल मारेगा, और अगर उसका मन ना करे तो 3-4 महीने तक शो अप नहीं करेगा. सी दैट्स द थिंग ना, उसका एबिलिटी है, दैट्स व्हाई फ्रस्ट्रेशन होती है यार, और कंसिस्टेंसी चाहिए विद हिज एक्सपीरियंस.
यस मैंने देखा एब्सोल्युटली। एक्सपीरियंस प्लेयर्स इज द की, इसलिए मैंने बोला ना, नो पॉइंट गोइंग बिग ऑन समवन हुज इनएक्सपीरियंस राइट नाउ। वी हैव साइन इनफ इनएक्सपीरियंस, फ्यूचर हमने कर लिया है, अभी साइन एक्सपीरियंस इज व्हाट वी वांट। भाई स्टर्लिंग लेगा, फ्री किक लग रहा है, जस्ट आउटसाइड द बॉक्स। भाई फुरकान ओपी मैन, वर्ल्ड क्लास फ्री किक, आई मस्ट से भाई। स्टर्लिंग sorry भाई, sorry again, it's not the first time he scored this goal, remember he has scored this goal by ditto goal pehle in this season, brilliant from Sterling, and it is Chelsea by Raheem the Dream. What a goal, bro. Brilliant free kick by Raheem Sterling, and Chelsea are turning it on in the second half finally. Again, thanks to a Broja first time header in early in the second half, फिर Thiago Silva first touch header of a corner, और Raheem Sterling great free kick, and remember Palmer ने जीता था वो free kick भी, तो Palmer hoping for a second time, but brilliant second half, and कहीं ना कहीं हम सांस ले सकते हैं। Chelsea fans 3-0 हो गया, you know we have been there in the past, Luton Town के against just a week and a half ago, हमें याद है वो हुआ था। अभिषेक बोल रहे हैं स्टर्लिंग ने मेरे, मैं बोल रहा हूँ ना, स्टर्लिंग का ऐसे तो अपना चैट पढ़ते हैं, मेरे को लगता है काफी बार ये होता है उनके साइड से, व्हेनेवर वी क्रिटिसाइज देम दे डू वेल। ब्रोजा भी आज पढ़ रहा है लग रहा है। बिल्कुल मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस बाय स्टर्लिंग, स्टर्लिंग ओपन द चैट हो जाए भाई, वाओ 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 वाओ, मजा आ गया अभिषेक को भी एब्सोल्युटली। रहीम द ड्रीम 100% बोलना पड़ेगा, स्टर्लिंग भाई ने सुन ले मेरी। भाई कहीं ना कहीं हमने बोला था, याद रखिए, पॉच पॉच माफी मेरे भाई, मैंने बोला था, रिमेंबर क्या बोला था, इफ मडुवेके अभी तक स्कोर नहीं किया, मे बी व्हेन ही स्कोर्स, इफ थियागो सिल्वा स्कोर्स, इफ मडुवेके स्कोर्स, and the fact that Sterling has been kept scores and Broja scores, तब Poch OP हो जाए यार, तो almost three of the four have scored, bro. I have to say that. I said that at half time, remember. पहले हाफ में 2-4 लगा ली, पहले हाफ में आई वाज जस्ट वेटिंग, यहाँ पर थ्रू बॉल आया नाइसली, कम ऑन गोल आएगा, ब्रोजा कम ऑन ब्रो, शुड बी फिनिशिंग दैट फर्स्ट टाइम ब्रो, कम ऑन ब्रोजा ब्रो तू जा। लेकिन यहाँ पर मडवे के पुटिंग इन गुस्तो ऑन द राइट हैंड साइड, जो बेटर लग रहा है ऑन द राइट हैंड साइड ऑब्वियसली, एज मच एज उसने नाइस क्रॉस दिया था फॉर द फर्स्ट गोल। पामर प्लेज इन एंजो, स्टर्लिंग शॉट लेगा, डिफ्लेक्शन, ओ साइड नेटिंग भाई, साइड नेटिंग, बिल्कुल भाई, थैंक्स फॉर ऑलवेज बीइंग हियर मैन। भाई आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग गाइस, अभिषेक एंड अदर्स, it'll be technically the 5th win in 6 bro in all competitions for Chelsea, 5th win in 6, that's actually a run, huh? Last week of December and first week of January has not been so bad, huh? After all, Madueke won that corner which Silva scored. Yeah, actually, right? Yeah, very well said, Aman. Madueke won the corner. Again, they are serial winners, but I think we need a couple of more, if I'm honest. यहाँ पर एंजो का कॉर्नर गोल होगा, come on. No, just cleared by Preston. It's a goal kick, I believe, hit Broja in the end. Yeah, you can say missed, लेकिन ये harsh होता if you're saying missed. Preston player was closer to him. भाई again, Sterling का इतना बुरा गेम नहीं किया है, apart from that unnecessary dive in the first half, I think, or some bad crosses in the first half. Sterling का गेम फिर भी अच्छा किया in my opinion. बोलना पड़ेगा, I have to give the credit where it's due. अगेन मुड्रिक का जब अच्छा चल रहा था, देन प्रोपोर्शन सब कर दिया, वो मैं अग्री नहीं करता अभी तक, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सेकंड हाफ हैज बीन प्रीटी मच पॉजिटिव, आई कैन नॉट सी एनी नेगेटिव्स और मेनी नेगेटिव्स इन द सेकंड हाफ, लेट्स बी रियल अबाउट इट। अमन बोल रहे एवरी सेंटर बैक हैज स्कोर्ड दिस सीजन, या आई एम प्रीटी श्योर, या यू आर राइट। गिलक्रिस्ट टेक्निकली मारा नहीं है, बस ही इज अ सेंटर बैक। यहां पर हमने कॉर्नर कंसीड किया थैंक्स टू कॉलविल। Santa Claus jingle bells बजा गया चेल्सी कैम्प में, and now we see the results. चलो फुरकान, thanks. I wish that keeps on for the entire season and a half, bro. हमें चाहिए badly that.
Yeah, let's keep it going. Let's keep it going. Again, clean sheet is important. Petrovic, remember, he's fighting for. What did I say? Pre-match में क्या बोला था? Petrovic और ब्रोजा के लिए सबसे important महीना यार, सबसे important महीना for me. Petrovic and Broja, if they have to make it big at Chelsea. पुदेन सपने में दिखाई मेरे भाई, सपने में दिखाई. ये याद रखिए, हम लोग ने टुक्कर वाले सीजन में हमने एक्सपेक्ट किया था a treble. If you know, you know. We got one, which is great, but we had expected a treble in that season. Next season, we had expected a double as well. दोनों cups में we were out. But यहाँ पर corner है भाई, Preston का. One of them is a must. If we do not finish in the top 7, one of them is an absolute must. लेकिन हाँ, यहाँ पर गोल कंसीड कर रहे हैं हम लोग, लग रहा है गोल कंसीड कर रहे हैं. अरे भाई, what a clearance! Disaster not being a disaster for once. लेकिन यहाँ पर वापस से क्रॉस आया है और अ गोल किक फॉर चेल्सी. चलो, नाइस नाइस. रीस जेम्स, वेट करो. आई थिंक ही हैज अर्नड हिमसेल्फ इनफ फॉर अस टू वेट फॉर him to get back and prove himself and then see what we are doing. It's too early for us to give up on Reece James and even Ben Chilwell, in my opinion. I think I would like to wait for them to play proper football and then decide. I would still be optimistic, to be very honest. Petrovic is next. Peter Cech. Let's hope. Villa versus Boro draw चल रहा है. We face Boro in semi-final. Yeah, and that's good. You know what? अगर draw होता है, then Boro have one more match to think about in the next week. So that's good क्योंकि 2 late semi-final है. But anyway, we should beat Middlesbrough. यार, come on. Without due respect. हम Tuesday को भी करेंगे मैच कवर, लेकिन हाँ, just saying. Madueke winning the ball back, gets a throw in. Nice for Madueke. Not serious. It's a precaution as per yesterday's, word. लेकिन हाँ, David Washington coming in, guys. And that's nice to see David Washington, a young striker, getting some minutes. Again, remember, we could have got other youngsters as well. There are a lot of youngsters on the bench, which is nice to see for an FA Cup game. Although हमारे काफी injuries and that has helped or forced Poch, क्योंकि literally including Nicholas Jackson, who's off to AFCON, 11 players are out and 10 are injured right now, or precaution, either way आप बोल सकते हो. लेकिन David Washington is coming on. He's come on already. Cole Palmer been taken off. तो क्या खेलेंगे अपन? Broja will play as what, left winger? Sterling is a number 10. It'll be interesting to see. और David Washington wide भी खेल सकता है. और David Washington will play as a number 10, I believe. Okay, cool भाई, cool. Galadog भी आया क्या? मैं मिस कर दिया क्या वो? Galadog नहीं आया ना? Galadog नहीं आया. आया. Sorry, my bad. Galadog has come. Yes, he's on the ball now. Gallagher, तो basically Palmer is off, Gilchrist is off. Gilchrist के लिए already Thiago Silva came on, who scored. यहाँ पर we have won a corner thanks to Gallagher dog and अपना कचरा and Mudryk के बजाय बडवे के आया था. Palmer की जगह डेविड वॉशिंगटन आया और ब्रोजा इज ऑफ. अरे भाई, व्हाट इज दिस? ब्रोजा आउट क्यों यार? उसको गोल मारने देते ना एक और. कोई नहीं यार, his first half was bad, so he doesn't deserve it. शॉर्ट कॉर्नर खेल रहा अपन. मडवे के राइट फुटेड. ओ, डेविड वॉशिंगटन हेडर जस्ट ओवर द बार, आई बिलीव, और जस्ट साइडवेज. कोई नहीं. चलो हो जाए भाई. कचरा के लिए अपने कचरा में एब्सोल्युटली शुड चीयर चेल्सी विन. मैं मरते तब तक किसी के सामने नहीं झुकूंगा. आप लोग मेरा साथ दें या ना दें, मगर कचरा खेलेगा. बिल्कुल भाई. तो डेविड वॉशिंगटन डायरेक्टली खेल रहा स्ट्राइकर बेसिकली. But I think David Washington, from what I know, he can play as a second striker as well. But हाँ, इसमें मडवे के कीपिंग एज राइट विंग, स्टर्लिंग लेफ्ट और बीच में डेविड वॉशिंगटन. यहाँ पर क्रॉस है प्रेस्टन का. एक गोल आएगा प्रेस्टन का लग रहा है. और लकीली वी विन अ फाउल एंड एक गोल किक है चेल्सी के लिए. कम ऑन भाई, हो जाएगा एक बार. चेल्सी भाई, और गोल्स मारो भाई. Give us reason to celebrate, man.
Yeah, he was, but again, he's not got much senior level football experience. That's the only thing, no? And physically, अभी भी मतलब if I'm not wrong, 21 का भी नहीं हुआ है ना? कितने साल का है भाई ये डेविड वॉशिंगटन? 18 इयर्स का है, तो फिजिकली अभी भी ग्रो होगा. कॉनर गैलेगर ओपी यार, keeps the ball, avoids the challenge, gives it to गुस्तो. एक तरह से अच्छा है, नो, कॉनर गैलेगर आज खेल रहा है. ही इज एफए कप टाइट देन, इफ यू नो. He's got some minutes. I like that fact. Madueke on the right hand side. Has Gallagher taken the armband though? Gusto क्या करेगा? Guys, talking about armband, who was the captain यार? आज Colwell की Sterling. Madueke shot. Oh, just over the bar यार. Nice shot. Yes, आज हमने कवर किया था प्री मैच में. He did have that, लेकिन I would not say it's a very very wow वाला season, लेकिन it's definitely decent enough on loan. He's had his question marks by Leicester fans, बोलना पड़ेगा. चलो ये एक सेकंड, ये स्टार्टिंग लाइनअप थोड़ा हटा देते हैं स्क्रीन से. Who was the captain, guys, in the first 70 minutes? I'm assuming Gallagher would have taken the armband now that he's on the pitch. Can anyone confirm? किसी ने देखा कैप्टन आर्मबैंड कौन पहना हुआ था फर्स्ट 70 मिनट्स के लिए? Madueke has had a good impact to the last couple of minutes, I must say. अच्छा, Colwell went to him, but अच्छा, तो Colwell, thanks for that, Ramit. Colwell had the armband, but Gallagher said you keep the armband. That's interesting. That might get some controversy though. लेकिन हाँ, आप तो FA Cup tied है. Hopefully he'll just be Chelsea यार. Madueke क्या करेगा? Madueke, come on, दे रहा है गुस्तो को जो क्रॉस कर रहा है, लेकिन easily fended off by Preston. I think it's offside. Sterling नहीं, he's onside. Gives it to Enzo, gets it back from Enzo. 1-2 खेलने की कोशिश करता है यहाँ पर, लेकिन why did he kind of stop? Sterling should have continued, but we win a throw in thanks to Preston का defender. Thank you Pudin as well. सेकेंड हाफ में what has changed? The one aspect जो क्लियर लग रहा है मुझे सेकेंड हाफ में that Chelsea has done well is the ability to kind of cross the ball. वो हमने यूज किया ज्यादा, वो क्लियर लग रहा है मुझे सेकेंड हाफ में. वो हमने किया क्लियरली, और एक स्ट्राइकर इज रेडी फॉर दोस हेडर्स. वो गुस्तो भाई, नाइस शॉट भाई, नाइस स्टेप ओवर फ्रॉम गुस्तो और नाइस शॉट, लेकिन वेल सेव्ड बाय प्रेस्टन कीपर. यहाँ पर एक थ्रो इन जीता है चेल्सी ने 2. Yeah, Gusto to right, you can argue. Oh, Gallagher! Oh, what a turn, man. What a turn. Gallagher shot, easily fended off by Preston. Brilliant turn by Gallagher यार, बोलना पड़ेगा. यहाँ पर लेकिन अच्छा टर्न उन्होंने किया Preston इस बार. Enzo, nicely done. Helped in winning the ball back. So did David Washington. Very well kept by Madueke. Madueke keeps the ball or himself on the feet. Referee बोल रहा है यार, it's okay, just play on. गुस्तो एंड मडुवेके के बीच में गेम प्ले चल रही है. मडुवेके टेकिंग इज भाई फ्लैट ट्रैक bullies will do well, bro. Madueke and Sterling, I genuinely believe they will have good games against these kind of teams. I think they are a no-brainer because they are having the ability to go direct. उनको होना चाहिए ज्यादा डायरेक्ट. Preston are none to concede in second half भैया. They have conceded 3 to 4 in alternate matches. Yes, बहुत खराब रहा है. जैसे प्री मैच में बोला था, उनका सीजन हैज बीन प्रीटी बैडली इन फॉर्म. ब्रोजा का पोजीशनिंग बेटर, एक गोल मोमेंटम लाया, फॉरवर्ड पासेस ज्यादा खेले सेकंड हाफ में, बट वी नीडेड Modric स्पेस एंड क्रॉसेस. I think wingers and fullbacks were asked to cross more, and the centre forward was asked to be more in the box. और ज्यादा फास्ट पासिंग चल रही थी. वापस से वी वन द बॉल गाइस. अपना कॉर्नर है, शॉर्ट कॉर्नर वापस से.
बिल्कुल भाई, लॉर्ड पुनी सुपरस्टार, सच बोल रहा हूँ। मतलब दैट इज द थिंग ना, यू शुड बी डूइंग दैट मोर कंसिस्टेंटली, दैट्स द ओनली क्वेश्चन वी हैव, क्योंकि ही इज दैट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। एंजो फर्नांडिस बाय द वे हैड अ गुड गेम, आज बोलना पड़ेगा, डिफेंसिवली एज वेल अच्छा लगा एंजो फर्नांडिस मुझे। Caicedo wasn't asked to do much, लेकिन when called upon, even he's not been bad. Gusto in the central midfield position almost gives it away, लेकिन gets the ball back luckily and gives it away again. Gusto ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए, लगता है चैट पढ़ लिया और थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गया उसका माइंड। क्या बात है भाई, आज टीम पर जा रही क्या अपनी चैट? Again, the Thiago Silva substitution kind of raises the morale of the team. बोलना पड़ेगा, when Thiago Silva kind of a player is on the pitch ना, थोड़ा सा मोरल तो अप होता है, as much as Gilchrist was great. This we should do more often. Why don't we do crossing more? नहीं, क्योंकि ब्रोजा स्टार्ट नहीं करता ना बहुत मैचेस। निकोलस जैक्सन के लिए आप क्रॉस नहीं करते तो समझ में आता है, बट अभी ब्रोजा के साथ करना चाहिए। मे बी ही शुड बी आस्क्ड टू स्टे इन द बॉक्स। अरे पानी है भाई अभिषेक। हाँ, मजाक नहीं कर रहा था। इट्स जस्ट वाटर ब्रो। और नाइसली डन बाय स्टर्लिंग एंड काइसेडो। गोल आएगा, कम ऑन। ओह कम ऑन, ऑफसाइड है, एंजो इज ऑफसाइड। ऑफसाइड है ब्रो, बट वाज इट ऑफसाइड? आई थॉट इट केम ऑफ द प्रेस्टियन प्लेयर इन द एंड, नहीं? Sterling, again, he has looked good, I must say. Man of the match, yeah, considering Gilchrist was subbed off, you can say that. Oh, that was an offside, bro, इस एंगल से तो। भाई फिटनेस फ्रीक हुआ करता था यार मैं तो, जूस। ऑफलाइन ऑफलाइन बोलेंगे, ऑफलाइन। ऑफ साइड वीआर चेक हो रहा है गाइस। इट्स लुकिंग ऑन साइड फ्रॉम वन एंगल, लेकिन एंगल सही दिखा नहीं रहे लोग, पता नहीं, मुझे लग रहा है। और डिड इट आल्सो कम फ्रॉम अ प्रेस्टन प्लेयर? दैट आल्सो हैज टू बी क्वेश्चनड। मतलब डज दैट काउंट? या इट केम ऑफ द प्रेस्टन प्लेयर, नहीं क्या? कम ऑन एंजो भाई, ही डिजर्व्स अ गोल टुडे, ही डिड वेरी वेल आज इन माय ओपिनियन। he's had a good game. I know it's just Preston at home in the FA Cup, but come on, FA Cup में है। अगेन आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द ग्राउंड, अगर रिप्ले जाता तो प्रेस्टन में शायद नहीं होता, ऐसे कुछ है जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। इस एंगल से लग रहा है ऑफ साइड, नहीं यार ऑन साइड है। इट्स वेरी क्लोज, इट्स वेरी टाइट गाइस, इट्स वेरी टाइट। गोल होगा यार, कम ऑन एंजो को गोल दे दो यार, कम ऑन 4-0 कर दो भाई। चेल्सी चेल्सी चेल्सी, नहीं ऑफ साइड नहीं लग रहा यार, नेकेड आई से तो नहीं लग रहा। अब लाइंस ड्रॉ करेंगे कि नहीं पता नहीं। मडेवे के हंस रहा है, एंजो को लेग पुल कर रहा है, लेकिन इट केम ऑफ द प्रेस्टन प्लेयर एज वेल, तो ईदर वेज इट्स, कम ऑन भाई, इतना देख रहा तो गोल दे देना बस। इतना देर रुकने के बाद तो डिसअलाउ क्या करेगा भाई? बट रिमेंबर इट वाज डिसअलाउड, इट हैज टू बी क्लियर एंड ऑब्वियस। They are seeing whether it came of the Preston player. I don't know, rules change literally every year यार, लेकिन if it came of the Preston player, if the आपको डायरेक्शन क्लियरली डाइवर्ट होते दिखा, तब तो आई डोंट थिंक यू कैन क्वेश्चन ऑफ साइड, अगर है भी तो वो भी श्योर नहीं है बाय द वे। ऑन साइड लग रहा है यार। ओ गोल होना चाहिए यार, कम ऑन, आई थिंक इट्स अ गोल, I think it's a goal. Gaurav, love you, bro, but I don't like the fact that you try and beat me here to things here. People are here to listen to my reaction, मेरे भाई। Gaurav, love you, bro, but please don't try and beat me on the chat. I don't like that fact. मैंने 2-3 बार बोला indirectly, but गोल दे दिया। चलो ऑन साइड। Come on, boy! Enzo Fernandez scores. Big up to everyone. Gaurav, Poda and Sky, Invisible, Lord Puni Superstar, Abhishek, हो जा भाई। गोल हो गया भाई। It is Chelsea, 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 4 गोल मार दिया भाई चेल्सी ने, 4 गोल मार दिया और होपफुली क्लीन शीट भी रखे। लास्ट टाइम हम इतना मारे थे कब था? स्पर्स और सिटी के साथ, याद है मुझे, हम मारे थे, लेकिन 3 से ज्यादा गोल तभी था शायद। इट्स बीन अ मंथ एंड हाफ
if I remember right. Month हो गया at least. तो भाई Enzo Fernandez gets a goal. Yeah, that is it, man. I love the fact that Enzo has got a goal. He deserves it. आज अच्छा किया था. And Sterling gets an assist, if I'm not wrong. Technically, will it be given an assist considering it came off the Preston player? It should, in my opinion. क्योंकि either way onside ही था. लेकिन Enzo Fernandez, remember, he's not started many games or 90 minutes नहीं खेला है, is coming off and a youngster is coming on, guys. Nice to see another debutant here. Michael Golding comes on, guys. Michael Golding comes on, a midfielder, young midfielder, 17-year-old from the Chelsea academy. For Enzo Fernandez, who is our goal scorer, the fourth goal scorer there. Chalo ho jaye. Carefree, wherever we may be, we are the famous CFC. We are the famous CFC. We are the famous CFC. We know what we are. We know what we are. Hopefully, हमें sing करने को मिले at the end of the season with a couple of cup trophies, which is like too good to be true, but hopefully हो जाए. इंटरेस्टिंग दैट पुदिन भाई नहीं आने वाला मार्टिन मुझे लगता है क्योंकि अभी भी डॉर्टमुंड वाला 100% नहीं हुआ है ना तो यू डोंट वांट हिम टू बी एफए कप टाइड अनफॉर्चुनेटली आई थिंक दैट विल बी द थिंग क्योंकि व्हाट इफ एन इंग्लिश क्लब कम्स फॉर हिम लेट इन जनवरी जस्ट सेइंग तो आई हैव अ गंदा वाला फीलिंग कि छोटा मार्टिन तो आया माइकल गोल्डिंग लेकिन बड़ा रियल मार्टिन नहीं आया एंड वी हैव मेड 5 सब्स्टिट्यूशंस तो Noni Madueke, Thiago Silva, David Washington, Conor Gallagher and Michael Golding are the 5 people who come on, guys. हमने चेंज नहीं किया फॉर्मेशन. We are playing the same. Caicedo or Michael Golding in midfield with Gallagher pressing up front behind Sterling, David Washington and Madueke, who's definitely had an impact in my opinion. But second half में by Sterling has been quite good. So has been Madueke, like I said. Thiago Silva के impact clear लगा है. Gusto on the right hand side has looked very good. Enzo Fernandez का अच्छा game गया generally speaking. Everything good यार. Everything rosy. But clean sheet मिल जाए बस 90 minutes हो गया अभी. Clean sheet रखो यार. 5-0 कर दो. Best के सिनारियो होगा. बहुत ज़्यादा greedy हो रहा हूँ. But come on. Today's man of the match, भाई किसको दिया जाए? To be honest, पूरा गेम के हिसाब से देखो तो मैं एंजो फर्नांडिस को देना चाह रहा हूँ. He did play 88 minutes after all. Enzo Fernandez deserves a man of the match considering he got the 4th goal. But कहीं ना कहीं the difference maker Malo Gusto because he put in that cross for Broja. और आप बोल सकते हो Sterling considering that even he's technically got a goal and an assist as well. नहीं? Zero goal was the time I got to know about this rule, bhaiya. Okay. Cole Palmer, 15 goals and assists for Chelsea. Interesting. Yeah, Cole Palmer also got an assist. Remember, kahin na kahin he has also done well. Or Caicedo putting in Madueke or goal aega. Oh, that should have been a goal on rebound by Michael Golding. Missed the chance, yaar. Come on, bhai. Madueke strike. Rebound हुआ goalkeeper से Preston के और Michael Golding from midfield into the box. But couldn't react quickly. Oh, that would have been great debut for him, man. Gusto और Enzo के बीच में होगा man of the match. मतलब Sterling also has a close shot, I must say. Huh? Caicedo, he did very well in the first half, 100%. Second half, I didn't see him much. To be honest, second half Chelsea dominate कर रही थी तो जरूरत नहीं पड़ी Caicedo की. लेकिन I think his gameplay is underrated. But Enzo को मैं बोलूँगा आज. First time he created the chance where Palmer should have scored as well, to be honest. He deserved an assist, not just a goal. Like Sterling free kick, bro, even that was great moment. Yep. Again, Caicedo, Enzo and Gallagher, idea, the more they play with each other, it'll help. Because I can see them starting for Chelsea for quite a few games. मुझे लगता है Palmer from the right hand side is best और Gallagher trying to play in Gusto unsuccessfully goal kick. गोल्डी बोलूंगा आज से स्कूल में हर किसी बुली का नाम गोल्डी होता है. Interesting that. I just hope Cole Palmer exceeds the standard set by Juan Mata in his debut campaign. He had scored around 20 goals plus we haven't had a 20 goals midfielder since Lampard and Mata. Fair point, absolutely. लेकिन
Cole Palmer, one thing that I would say that as much as he's been great physically, defensively, he could do a little bit better. I know harsh hai, but that is Chelsea standard जो होना चाहिए in my opinion. But of course he's that difference maker वो clear है. जैसे Enzo है midfield में, जैसे Poch expects Colwill to be in defense. That is what I think Cole Palmer is. Colwill again थोड़ा बहुत under the radar चल रहा है अभी भी. Colwill should be doing better in my opinion. Generally मैं बोलता हूँ. Sterling यहाँ पर doing well. Clearly he was fouled and he'll win a free kick. Yellow card for Preston. 8 minutes of stoppage time. Preston बोल रहे भाई क्यों भाई क्यों why? क्लियर चेक बैक था प्रेस्टन के प्लेयर का स्टर्लिंग के लिए. Mason Mount, did he have 20 goals and assists? Are you sure? Am I forgetting something? He had double digits for a couple of seasons, but I'm not sure about this. I'll just check it up. I think you're right though. हाँ लैम्पार्ड के बाद शायद वही था, ऐसा कुछ था ना वो, बट वाज इट नॉट कपल ऑफ सीजंस में डबल डिजिट्स. Colwill again, can I blame only him? No, because Poch is also to be blamed. ना, he's playing out of position. चलो गोल किक है. कॉर्नर है भाई, गोल किक नहीं कॉर्नर है. भाई चाहिए तो सही, लेकिन you know what, I'll take it as it comes right now. Cannot भाई, beggars are not choosers मेरे भाई. James Matthew. Yeah, Tammy was very close, I know that. Madueke taking his man on, winning another corner. No, you cannot compare the two. Na? Mason Mount was more a number 8 who could play as a 10 or wide. Cole Palmer, I would say, is more like a wide player who could play number 8 and number 10. That's the difference. And of course, Tammy is the center forward striker. Exactly. Taking shot, इस बार luckily. Keep the ball. लेकिन कैसेडो क्या कर रहा है, वापस गैलेगर को दे रहा है. भाई अटैक करो भाई. आई नो क्लीन शीट इंपॉर्टेंट, लेकिन अटैक करो भाई. कैसेडो गिव द बॉल अवे एंड इट्स अ गोल किक दिस टाइम. चलो या गोल्स प्लस असिस्ट ही हो रहा है बात. Of course, we are happy for Broja, but honestly, first half performance, Broja needs to look into the mirror. I hope Poch has had a word with him at half time कि भाई बंदा इतना लंबा चौड़ा इंसान है तू, academy player है चेल्सी का, you understand what is FA Cup, why are you playing like that, or maybe that is why you and stay in your position. So these are the things told to him. I hope वो continue करे. It's a very important week for him. Sterling, Golding, Sterling, मडवे के गोल कर दे भाई. फर्स्ट टाइम क्यों नहीं लेते यार. अरे यार कम ऑन भाई, कम ऑन भाई. Madueke should have scored first time भाई. Come on. Yep, fair point. Yeah, sad moment, 100%. I'll not be like that. A lot of neutrals and Chelsea fans, especially saying Mount is a flop in United, it's still early days. In my opinion, it's still early days. But I genuinely believe that banda itna bhi bura nahi hai jitna some fans, want us to kind of happen now that he's left Chelsea. But the reality is he's not too good as well. He's not like too great as well. He's somewhere in between. Last minute, dekhte hain what we are able to do in this last minute. Gallagher gives the ball away this time, but somehow keep the ball. Colwill at left back. Gallagher tries to play 1-2. Nicely done, bro. Very well done by Gallagher. I like that. Brilliant, in fact. Sterling. Oh, side netting. Nicely done for once. Colwill well played as well. Bhai, to be honest, Liverpool are the favourites. I won't lie here. Obviously, I want Chelsea to win. Lekin Liverpool are the favourites. Liverpool versus Fulham hai, semis, or Chelsea versus Middlesbrough, if I'm not wrong. Exactly. We need to judge him when once he has the regular game time. Let's see. Again, very surprised though, but it is what it is. Number 7 jersey. Let's see.
भाई रियली मैन, गैलेगर हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट. आई थिंक पुदिन ने भी बोला था लास्ट स्ट्रीम में, एक ऑन द बॉल गैलेगर हैज रियली इम्प्रूव्ड अ लॉट. आई मस्ट से दैट. कहीं ना कहीं सस्ता बरेला भी नहीं बोल सकता, अब तो प्रॉपर अपना कचरा इज एक्चुअली इम्प्रूव्ड. एंड ऑनेस्टली व्हेन ही वाज प्लेइंग एट पैलेस, जब उसको मौका दिया जाता था, ही यूज्ड टू डू इट. यस, फुल टाइम हो गया भाई. कम ऑन, चेल्सी 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 इनटू द फोर्थ राउंड. ड्रॉ ब्रो, 4-0 हो गया. कम ऑन भाई, ब्रिंग इट ऑन. वी नीड मोर विक्ट्रीज लाइक दिस. यस, terrible, embarrassing first half, but second half you have to give it to Poch kahin na kahin, that he was brave enough to keep Broja on the pitch. He was brave enough to start Gusto at left back again. Eventually change, वो भी help किया 100%. लेकिन the fact is पहला गोल आया with Broja and Gusto being effective there. And again Poch को बोलना पड़ेगा, हो सकता है वो लक हो, I don't know, but मुझे लगा looking into the second half beginning that maybe Poch ने clear directive दिया था कि भाई what are we doing यार, keep your width, put your crosses. You have Armando Broja today compared to Nicholas Jackson. You can play your crosses to do that. And Broja to box में रहे, head the ball, use your physicality. And कहीं ना कहीं that is what it was. But man of the match हो जा भाई. Of course उसके बाद brilliant second goal by Thiago Silva. Thiago Silva. Or thanks to Palmer assist as well, by the way, वहां पर. But the third goal by Sterling, माफी भाई, माफी मेरे आका स्टर्लिंग भाई. इतना गाली देते हैं अपन at times to Sterling and Jacksons, but those two guys at times they do well, especially Sterling. What a free kick. Yeah, anyone in the world couldn't have saved that free kick. That's how good that free kick was. And the fourth goal, भाई वो तो सोने पे सुहागा. Enzo Fernandez, in my opinion, gets the man of the match. मैं देना चाहता हूँ man of the match Enzo Fernandez को, who had a great first half. Palmer should have scored in the first half with Enzo's or passes over the top. बट एट द सेम टाइम डिफेंसिवली भी अच्छा था. तो आई थिंक एंजो को दूंगा मैं. एंड ही गॉट दैट फोर्थ गोल थैंक्स टू वी आर बीइंग देयर इन एफए कप थर्ड राउंड इन स्टैमफोर्ड ब्रिज. और वहां पर स्टर्लिंग असिस्ट भी लिया. तो भाई बिकॉज ही गेट्स अ गोल एंड एन असिस्ट स्टर्लिंग, footmob.com तो दे रही है स्टर्लिंग को. बट इन माय ओपिनियन आई थिंक एंजो just about edges it, or Gusto भी is very close, although first 30 minutes he could have been better. Let's be real. कोई नहीं, लॉर्ड पुनी सुपरस्टार. विंगर्स को 1v1 करने से कितना इफेक्ट हुआ, एब्सोल्युटली वो भी है. मुड्रिक, ये एक ओनली क्रिटिसिज्म है सेकंड हाफ का कि भाई व्हाई डिड यू substitute Mudrik and why did you not get on Ian Martin? लेकिन at least he gave debut to a David Washington, to a Michael Golding. Nice to see that for sure. Of course David Washington का half chance था, Michael Golding का एक half chance था, but nice to see some youngsters on the bench. But Ian Martin, it's clear as day कि Ian Martin is leaving Chelsea. We all know that, that's a fact. And as much as मैं चाहता था एक Dutch youngster रहे Chelsea में, and especially him being an academy guy, I wanted him to continue, but नहीं लग रहा मुझे, at least on loan जा रहा है. Enzo and Gusto man of the match. Again, if I have to say the top three players in the match, in my opinion, in particular order जो मैं बोल रहा हूँ, Enzo फर्स्ट में डालूंगा, देन मैं बोलूंगा स्टर्लिंग, देन बोलूंगा गुस्तो. बट Caicedo is a close fourth, ये भी बोल सकता हूँ. Enzo best player today. Madueke is not bad. Madueke का definitely impact to the bench है, I would not lie that. 100% I would agree. गिलक्रिस्ट अच्छा प्लेयर है भाई. फर्स्ट हाफ के लिए गिलक्रिस्ट टोपी हो जाए यार. अगेन ही वाज सब्स्टिट्यूट आफ्टर 60 मिनट्स, इसलिए हम नहीं दे रहे, न तो ही वाज इन द टॉप 5 प्लेयर्स ऑफ द गेम एक्चुअली. एब्सोल्युटली बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, कुछ भी अच्छा था काफी, लेकिन इज नॉट अ राइट बैक, रिमेंबर दैट. स्टिल ही डिड वेरी वेल. Washington with good runs, but again physically he needs to improve, and that is where I think he's still 18. Give him time. लेकिन does that mean we should have kept David Atro Fofana, who's more ready? I don't know. मैं रखता उसको if I'm being real, especially for this month. Second half is good. Caicedo first half, yes. Caicedo, Gilchrist, Enzo, Gusto, Sterling. I think कहीं ना कहीं पांचों को दो हम बोल सकते हैं. They had very good games. I repeat, Sterling, Enzo, Caicedo, Gusto, or Gilchrist. I think these are the 5 people that I would really give a shout out. And good impact to the bench from obviously Thiago Silva, who scored, and Noni Madueke, जो half an hour का एक था. I'm happy we won, but not gonna lie, first half was shameful. लेकिन Tiger Beach, that's the thing ना. I know अगर आप Mourinho को देखते, अगर Tuchel को देखते, those are people who would have changed things in half an hour rather than waited till half time.
एटलीस्ट हाफ टाइम में उसने चेंज किया टैक्टिक्स. हम जैसा फुटबॉल खेल रहे थे फर्स्ट हाफ में, बहुत ही स्लो पासिंग हो रही थी और हम जितना क्रॉसेस नहीं कर रहे थे, ब्रोजा का फिजिकलिटी यूज नहीं कर रहे थे, वो क्लियरली बताया है अपने विंग को यूज करना और ब्रोजा का फिजिकलिटी यूज करना पॉच ने इन द हाफ टाइम. वो क्लियर है, वो तो क्लियर एज डे था. ठीक है, बट एट द सेम टाइम the good part being that yes, he did not play Martin, yes he took off Gilchrist too early, yes he took off Mudryk too early, लेकिन साथ साथ में पॉजिटिव being that who he has realized कि कहीं ना कहीं he had to play Gusto right side में to get more attack out of the team, और वो आया second half में. बट हाँ, कॉलवेल कुड हैव हैड अ बेटर गेम. आई कैन से दैट, ऑल्दो लास्ट में थोड़ा बहुत अच्छे मोमेंट्स थे, बट कॉलवेल कुड हैव हैड अ बेटर गेम. अगर और कुछ क्रिटिसिज्म बोलना है तो ब्रोजा को अब स्टार्ट मिलना चाहिए भाई. ऑप्शन नहीं है ना. मिडलस्ब्रा के साथ ट्यूसडे तो खेलेगा ही है. ट्यूसडे रिमेंबर वी डोंट हैव एंकुंकू प्रॉब्ली स्टार्टिंग अगेन, probably of the bench. मैं बोलता हूँ इंकुंकू इस गेम में भी he was supposed to be in the bench, but remember he took a knock during training. So looks like it Tuesday is too early for Inkunku to start, and maybe Broja after this goal and the second half performance, you can argue Broja agar if he keeps his positionally, maybe start Broja. Yes, I would start him. Gilchrist and Sterling, but Sterling would win in terms of man of the match. Jackson को bench करो. Jackson तो भाई AFCON गया ना, सवा महीने के लिए बाहर है. If Senegal are going to the final, सवा महीने के लिए बाहर है चेल्सी से, बट मिनिमम 1 मंथ मैं बोलता हूँ. आर्दा गुलर स्टार्स टुडे फॉर मैड्रिड. कांग्रेचुलेशन मैड्रिड फैंस, फाइनली. कोई नहीं. नहीं, सेकंड हाफ परफॉर्मेंस तो यू कैन नॉट क्रिटिसाइज मच यार. आई डोंट थिंक वी कैन क्रिटिसाइज मच. सेकंड हाफ में आर्ग्यूबली इवन लास्ट में जो अपने यंगस्टर का जो चांस था, आर्ग्यूबली दैट शुड हैव बीन अ गोल, माइकल गोल्डिंग. तो टेक्निकली मतलब वी कुड हैव बीन फाइन इन सेकंड हाफ. वी कैन नॉट क्रिटिसाइज दैट मच. Left back a solution, Chilwell, he started training. He will be back by the end of this month in terms of match sharpness. हो सकता है he's on the bench for all we know. My Middlesbrough वाला game में maybe a little bit too early for him and Badiashile to come back. लेकिन I think he might be in the bench by next week. Just saying. ठीक है, गिलक्रिस्ट इंजर्ड इंकुंकू क्या? अरे भाई नो वंडर ही वाज टेकन ऑफ इन 60 मिनट्स, बट जस्ट सेइंग. मडवेके ने इस प्रीमियर लीग गेम, मडवेके का इंपैक्ट रहा है, बट स्टर्लिंग भी आज इंपैक्ट किया है. तो आई थिंक यू कैन आर्ग्यू दैट वन ऑफ द अदर काइंड ऑफ इज टेकिंग अ क्लेम. बट थोड़ा बहुत अनहैप्पी मैं बोलता हूँ. कॉलवेल के परफॉर्मेंस से जनरली थोड़ा इंप्रूव किया, ठीक है, बट मुड्रिक नॉट बीइंग गिवन मोर देन 60 मिनट्स. आई डोंट नो व्हाई हम मुड्रिक को 60 मिनट्स से ज्यादा नहीं देते. आई थिंक नीड्स टू बी गिवन मोर मिनट्स, इन माय ओपिनियन. लेट्स सी. But definitely great free kick. But Chelsea share बन गया second half में. Carney would also be back. Carney and Lavia हम लोग ज़्यादा careful रहेंगे. Nkunku, Lavia and Carney हम careful रह रहे because of the injury history they've had in the recent past. That's the only reason. But कोई नहीं भाई. It is Chelsea into the fourth round, and here we go. हो जाए भाई. क्या ड्रॉ कब है? Anyone knows? मैंने चेक नहीं किया. ड्रॉ will be after tomorrow or after Tuesday, after Monday night. Monday night Wigan versus Manchester United है. कल लिवरपूल आर्सेनल है. कल हो जाए भाई. ऑलमाइटी स्पोर्ट्स पे सब लोग क्या बोलते हो? कल ऑलमाइटी स्पोर्ट्स में हो जाए. न्यूट्रल वॉच अलोंग और विल बी बैक again. Whoever is here, remember we have a channel, second channel as well called Almighty Sports. Again, it's a fan channel for all to see. It will help a subscriber there as well. We are very close to 5k वहां पर. यहाँ पर hopefully we get to 11.5k or 12k very soon. Again, whoever is here, big up, shout out to each and everyone here, no matter what, we are there, and people are here no matter what. Special shout out आप लोग के लिए, especially the members and OG subscribers as well as the mods. But striker abhi bhi, are we convinced with this Broja performance? Will you go for a striker? Transfers abhi bhi got a lot of question marks, especially with Timo Werner going to Spurs. I don't know. Tempt to ho raha hai mera looking at that first half performance, but I would wait for just that Middlesbrough game. Or I think Broja needs to show from minute one for us to say that. But कहीं ना कहीं मुझे लगता है हाँ definitely करेंगे भाई. Depends on if it clashes with anything else, but definitely we are in the intention to cover it. Snail. Chalo bhai, up the chance no matter what, but always the fan channel for all to see. Nice to see you all, man. As always, we'll be back tomorrow on Almighty Sports. और जो भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, consider subscribing to both the channels. And big shout out to everyone. Happy that we've got a convincing win, but we need this convincing win run to continue for us to be convinced that Chelsea are back. Still early days, but take it one at a time, Chelsea fans.
We will be back. Apna time aayega, and so on Almighty Blues and Almighty Sports be. Chalo, good night, guys. Chelsea, 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 Chelsea.